Your search for the most comprehensive CLAT preparation program ends now. BYJU'S Exam Prep brings to you over 300 recorded lectures, over 50 mocks across CLAT and non-CLAT exams, and this specifically curated by NLU alums and IM grads. So what's stopping you? Go register for the BYJU'S Exam Prep scholarship test now and get thousands of scholarships. चलिए जी, ऑलराइट, सो वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेलकम, गुड आफ्टरनून, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, स्वागत है जी आप सभी का. क्विकली वंस you've joined us, फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्विकली प्रेस द लाइक बटन, मार्क योर प्रेजेंस एज यू नो इज द ड्रिल. बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. हाय शांभवी, वेलकम. खुशी, जिया, खेवना, अक्षत, वेलकम वेलकम एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. हाय गौरी, हाय प्राची, वेलकम वेलकम. शाम्भवी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का. गाइज, दिस वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट दैट वी कंडक्टेड फॉर ऑल ऑफ यू एज यू आर अवेयर, राइट. तो ये जो एनालिसिस सेशन होगा, वी विल बी कवरिंग ऑल द सेक्शंस. विल स्टार्ट ऑफ विद जीके ऑफ कोर्स, उसके बाद फिर हम क्रिटिकल रीजनिंग, फिर वर्बल एबिलिटी, फिर लीगल और मैथ्स भी हम करने वाले हैं, राइट. सो वी विल कवर ऑल द सेक्शंस. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. गुड आफ्टरनून. आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू आर लाइव ऑलरेडी. फटाफट से यू नो द ड्रिल, जैसे ही आप जुड़े हमारे साथ, फटाफट से बारिश कर दीजिए लाइक्स की. क्विकली मेक श्योर दैट यू प्रेस द लाइक बटन, राइट. फटाफट से वील रीच हाफ सेंचुरी. हमारा टारगेट है भाई हाफ सेंचुरी करनी है हमें शुरू के 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है. चलिए जी, ऑलराइट, वेलकम एवरीवन. नेहा, सभी का स्वागत दोस्तों. ट्रॉय, रत्नप्रिया, लक्ष्मी, सान्या, वेलकम गाइस, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आप सबका. सो टुडे इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग जनरल अवेयरनेस सेक्शन. I'm sure you guys have found it pretty doable, right? Lots of questions were actually discussed in the session itself, right? तो मुझे पता है कि आपने YouTube सेशंस हमारे देखे होंगे, क्लासेस देखी होंगी, वहां से आसानी से you were able to answer most of the questions that were there here, right? So we will actually discuss all the questions also. We will see what were the methods of getting all those answers, राइट. और सब चीजें आज हमें पता चलेगी इस सेशन में. तो चलिए फटाफट से लेट्स क्विकली बिगिन. वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत. क्विकली एज यू नो इज द ड्रिल, फटाफट से लाइक कर लीजिए. जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को. चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से. लेट्स क्विकली बिगिन. ओके, सो गाइस, we'll start off with general awareness. As you know that the duration of this test was 120 minutes. Current affairs, there were 7 passages, 30 questions, rather 30 questions were there and 6 passages were there, right. This was again as per the pattern of the latest CLAT 2024 exam, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से. All right. बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम. क्वार्टर इज ऑलमोस्ट डन. बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, क्वार्टर सेंचुरी. अच्छा, क्या बात है. तो भाई फटाफट से हाफ सेंचुरी भी करनी है. ओके, ये भी गो. तो गाइस, जीके सेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर पेपर, we can see that there were 7 passages in the year 21, 22, 23 as well, and the number of questions, as you can see, were 35, right. 35, but now the number has changed as we are all aware, राइट. 35 से घटकर अब अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन हो जाएंगे 30 के आसपास, राइट, एज पर द लेटेस्ट क्लैट पैटर्न. नाउ when there were 35 questions in the year 2023, the passages were 5, and in 2022 same questions, the passages were 7, right. So on an average, if you see that there are 5 questions in every passage, but there can be a circumstance where there are 6 questions in a passage, or there can be 10 questions in a passage, or there can be 15 passages for 30 questions, 1 passage for every 2 questions. So be prepared mentally also that this can be a scenario as well for the exam, right. So the difficulty level, easy to moderate, was there in the year 21, 22 also the same thing. Moderate to difficult was the level this year, if we talk about general awareness for 2023, and this exam easy to moderate. Well, how did you find the difficulty level? Quickly do share in the chat. आप लोगों को इस मॉक में जीके का डिफिकल्टी लेवल क्या लगा? आपका भी ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो जरूर शेयर कीजिएगा. मैं जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा ये, हाउ इजी और डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू गाइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो, राइट. जीके का सेक्शन, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा, जैसा मैंने आपको बताया, डुएबल थे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे, उनको आपने कैसे किया वो भी जरूर हम जानना चाहेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. मॉडरेट बोला है शांभवी ने.
चलिए बताइए. Sir has become the face of the panel. Every method starts with हाँ दोस्तों like और check out दबा दो. Moderate. See सारे moderate कह रहे हैं. गौरी ने बोला है easy. Sehajleen also has shared that it is easy. Rest have said moderate. All right. So moderate you find. Let's find out. When we do the question wise analysis, we'll find out whether you guys were right or it was a notch lower than moderate. So guys, these you can see were the passages. So there's one passage on national affairs, Article 370 and Jammu and Kashmir. Although this news is you can say 2019, so 4 to 5 years old, still bears great importance as we are aware. So this is the same thing that is happening in CLAT as well. Last year there were 7 questions on science and tech affairs which were not directly related to questions from that year itself. There were questions from past years as well. So 7 questions from national affairs, then economic affairs. Here we can see international affairs. There were 5 questions in passage number 2. There were 4 questions on international affairs, WHO and trachoma, the disease that we talked about, right? जो disease थी, मैंने एक फोटो भी शेयर करी थी क्लासेस में जब आप लोगों ने बोला सर ये क्यों शेयर कर दी. ठीक है, आई होप यू रिमेंबर, राइट. इंटरनेशनल अफेयर्स जैसा कि आपने देखा क्लैट में भी पूछते हैं, साइंस टेक वहां पे भी पूछते हैं, सेम हमने यहाँ पे भी प्रोवाइड किया आपको. भारत नेट प्रोजेक्ट के ऊपर देयर वर 4 क्वेश्चंस ऑन द लूना 25 मिशन एज वेल. एवरीवन एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम चंद्रयान, और यहाँ पे लूना के ऊपर भी हमने क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे. समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में ब्रिक्स ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर वर 5 क्वेश्चंस हियर एज वेल ऑन द सेम, राइट. So again, as we see that it is very close to what is being asked in the exam, right? In CLAT exam जो पूछा जाता है वो हम आपके लिए यहाँ पे provide कर रहे हैं, right? So here 6 passages with 5 questions each. Passage themes, national, international, science, tech, these vary. Passage length also varies from 160 to 270. Now passage reading is mandatory or not, this totally depends on you, राइट. आपके ऊपर है. मेरी एडवाइस यही है कि भाई मत पढ़िएगा. ओनली रीड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड. व्हाट यू कैन डू इज अ क्विक ग्लांस, राइट. यू कैन टेक एटलीस्ट a maximum, I must say, 12 seconds, 10 to 12 seconds to quickly glance through the passage, quickly to look at important keywords, mark them, underline them, and then move on to the questions quickly, right. So just 10 to 12 seconds so that just you understand where everything is written, how what is the passage talking about, and then you can move on directly to the questions from that passage. Only 10 to 12 seconds. So this habit will definitely help you a lot. So direct questions related to passages, there were lots of them as we have seen in CLAT exam. Sources include you can see here, so Outlook, Hindustan Times, various government websites, and some other websites like Money Control and other things, right. So चलिए शुरू करते हैं. CLAT mock 11 analysis. So there were current affairs, 16 questions of current affairs. Static questions there were 14 in a total, of course 30 questions there were, right. चलिए देखते हैं अब इसमें से आप लोगों ने क्या कैसे फेयर किया. तो मुझे बताइएगा, how much have you guys scored? Do you feel that your GK is strong, average or weak, whatever is the case? Try to see whether this fits your bill or not. If your score is between 24 to 30, right, 24 to 30, it is your strong section. If it is less than that, it is average, so 14 and above. And if it is lower than 14, 50% से भी कम है आपका, 45% से भी कम score आ रहा है, so then definitely it is a weak section for sure, right. So what was your score? Whether this is your strong, average or weak section depends on this. So Gauri is 25, definitely it's a strong section for you. Shambhi says 21, very good. That means it's close to being strong. Average hai filhal. Krishna says 29, great. I'm not talking about your attempted questions, I'm talking about your score, right. So overall score here, right. Time taken, guys, this is something which I will definitely not like to see, right, that you're taking more than 5 minutes. Chaliye 7 minutes, right. 5 to 7 minutes is the max that you need to take. Yes guys, right. So देखिए वरना क्या होता है, if I'm reading the entire passages, then obviously this is justified, right. But here in GK, we're not expected to read. So it's either we know it or we don't. A quick 5 to 10 second glance of the passage and then directly to the questions.
So it hardly requires us time, but in other sections also you can take the note of this. If your strong section, if you're scoring well in a particular section, devote more time to it. It is completely okay, but that time cannot be more than 1 minute per question. So this is the you can say definitely a rule which should not be breaked. ठीक है जी, समझ में आ गया हमें ये सब. चलिए, अब जनरल अवेयरनेस में चाहिए क्या हमें, आप सभी को पता है, राइट? जीके में व्हाट डू वी वांट गाइस? वी वांट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज, हाँ मार्क्स तो है ही है उसके अलावा क्या है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जनरल अवेयरनेस में, हाउ मच आर वी एबल टू रिटेन, राइट? रिटेन कितना कर पाए, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ जीके. सी जीके के लिए कितना भी पढ़ो, इट्स नॉट इनफ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न हाउ टू रिटेन वॉट एवर वी हैव स्टडीड. हाउ डू वी रिटेन इट? फॉर रिटेंशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. The more questions we do, the more our brain tends to remember the same, right? Such is, you can say, such is the way our brain works, right? When we study in the form of questions, the option, the MCQs especially, we tend to remember the same. Let's say कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया, आप कई बार आपने देखा होगा, इस मॉक में भी हुआ होगा आपके साथ, आपने ऑप्शन देखा कि ऑप्शन सी है एंड यू वर लाइक यस, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, यस फॉर दिस वन डी इज द राइट आंसर, राइट? ये होता है, हम सबके साथ होता है. तो यही चीज जो है आपको, ये आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी आपकी हेल्प कर रही है, और उसके करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस जितने ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें उतना बेहतर. ठीक है जी, चलिए. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर नाउ क्विकली. चलिए जी, आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट दिस ईयर, you have an opportunity to avail free 3-day trial at BYJU'S exam prep. So if you are looking to prepare for CLAT, quickly check out the link in the description. free 3-day trial है, फायदा उठाइए उसका, जितना ज्यादा उठा सकते हैं उतना. और चलिए जल्दी से बताइए, ये है जी पहला पैसेज. वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 370 एंड 35A, राइट? तो ये आपको पता है, अभी कुछ साल पहले की न्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी कुछ साल पहले, बट स्टिल जम्मू एंड कश्मीर इज ऑलवेज इन न्यूज एंड इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो देखिए आप, ये सारी चीजें यहाँ पे सजेस्टेड है. ठीक है, पूरा ये हमने पढ़ लिया. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हियर? सी अ क्विक, आई सेड 10 to 12 second glance, right? So what I'll read is quickly, okay, this talks about abrogation of Articles 370 and 35A. ये समझ में आ गया. 2 union territories it is talking about. This also I understood. Okay. Now what else is important here? So as I can see, it talks about literacy rate. Okay. Moving on to the next one quickly. Demo cannot be okay. CAT bench. Through the new domicile law was, you can see here, though the domicile law was historical and instrumental in ending the regular struggle. Okay. It talks about refugees, original PRC Act, right? Citizenship का ये एक्ट है, तो अभी मैं बताएंगे इसके बारे में क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा. PRC Act of 1927 enacted by the then Maharaja of Jammu and Kashmir, Maharaja Hari Singh. Okay, and this is sourced from Outlook. चलिए, ऑलराइट. सो क्विक 10 to 12 सेकंड्स. अभी तो मैं फटाफट आपके साथ कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा टाइम लगा. खुद से करूंगा तो ऑब्वियसली आधे से भी कम टाइम लगेगा ना. तो चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. एज वाज एक्सपेक्टेड, पीआरसी लिखा हुआ था वहां पे, so this question will be asked for sure. So here, now let's say we don't know answer of this. Let's start reading the options. First is preferential residence certificate. Preferential residence preference किसको दे रहे हैं यार? तो ए तो डेफिनेटली कैन नॉट बी द आंसर. परमानेंट रेसिडेंट क्रेडेंशियल, चलिए ठीक है. परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, प्रेफरेंशियल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजनशिप. भाई फटाफट से ए और डी तो आप तुरंत ही निकाल सकते हो, राइट? क्या, कैसे देख सकते हो? प्रेफरेंशियल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजनशिप, प्रेफरेंशियल रेसिडेंस पर प्रेफिडेंशियल, रादर प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंस किसको देनी है? परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट. पीआरसी stands for permanent resident certificate, है ना? यहां पे क्रेडेंशियल और सर्टिफिकेट में क्या बेटर ऑप्ट होगा? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस इफ यू आर एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, राइट? अगर आप एलिमिनेट करेंगे बहुत आसानी से आपको जो है सही आंसर मिल जाएगा.
तो कई क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया वाज साइंड बाय होम, ये तो लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज में था, राइट। तो इसीलिए क्विक ग्लांस जो है पैसेज में, ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प दे देता है। यहां पे आपने देखा, राइट, महाराजा हरि सिंह यहां पे नाम लिखा हुआ है। चलिए, तो क्या है जी आंसर सेकंड क्वेश्चन का? द राइट आंसर इज महाराजा हरि सिंह इंडीड, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन, सी इज द आंसर। अगेन पैसेज में ये दिया हुआ था। ओके, विच, अब ये तो पैसेज में था ही नहीं ना। विच महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टफनेस कितना हो गया? टफ है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली टफ है। राइट आंसर हियर इज बोध चंद्र सिंह, बाय द वे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहां पे महाराजा ऑफ मणिपुर, अब ये अगर हमें नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप जो है इसको छोड़ सकते हो, पर अभी तक दो क्वेश्चंस के तो आंसर पता होने चाहिए थे हमें। तो मैं यहां पे स्कोर आपका हर क्वेश्चन के बाद लेकर चलूंगा कि कितना मिनिमम स्कोर कितना आना चाहिए। तो अभी तक तो दो तो आने चाहिए ना, आउट ऑफ 3 दो तो आने ही चाहिए। चलिए, तो 3 में से 2, द राइट आंसर हियर इज सी, राइट, बिकॉज यस, वेरी गुड शांभवी, क्योंकि मणिपुर में अभी वायलेंस चल रहा है, हेंस दिस क्वेश्चन कमिंग हियर मेक्स फुल सेंस, राइट। इसलिए ये क्वेश्चन अब याद रख लेना, हो सकता है दिस यू कैन सी नाउ इन द एग्जाम। अगर आपको ये पता था, वेल डन, कांग्रेट्स। चलिए नेक्स्ट वन। ओके, very simple here. Which of the following article allowed the state government to discriminate between Indian citizens living in other part of the country from the permanent resident certificate holders of Jammu and Kashmir? Also guys, देखिए क्वेश्चन अगर आपको फर्स्ट का आंसर नहीं भी पता था, आप वहां पे क्वेश्चन पेपर में आपके लिए फोर्थ में पीआरसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ होता, राइट। सो कई बार ऐसे भी होता है, तो हिंट्स आर देयर। अच्छा, यहां पे तो बहुत ही आसान है। दिस वाज आल्सो देयर मेंशन्ड इन द पैसेज, हमें पता ही है आर्टिकल 35A है इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। इतना आसान। देखिए, तो 4 में से 3 तो मैं अभी यहां पे लेकर चल रहा हूं, 3 नंबर अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ हियर देयर आर स्टेटमेंट्स, और क्या देखना है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि हमें देखना है ट्रू कौन सा इनमें से, विच ऑफ देम इज ट्रू, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। Now the first statement here reads, Jammu and Kashmir no longer has a separate constitution but can have its own flag and anthem. Really? हो सकता है ये पॉसिबल है क्या? आप मुझे बताइए। Of course not, right? ये तो हो नहीं सकता, फ्लैग अपना, एंथम खुद का। अच्छा, कंट्री थोड़ी बन गई अलग। आर्टिकल 360 which can be used to declare financial emergency is applicable with respect to Jammu and Kashmir. Absolutely yes. तो 2 तो है ही है, तो 1 नहीं है, मतलब कि A और B हट गया ऑप्शन से। थर्ड स्टेटमेंट, all laws passed by the parliament are applicable in Jammu and Kashmir, सही बात है, including RTI and RTE, absolutely yes, तो थर्ड भी सही है। अब यहां देखते हैं, अच्छा दोनों है। चलिए, फोर्थ से पता चलेगा, द इंडियन पीनल कोड इज रिप्लेस्ड बाय रणबीर पीनल कोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कमाल करते हो यार, आरपीसी तो पहले था, राइट। अब देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि आईपीसी को रिप्लेस कर दिया आरपीसी ने, ऑफ कोर्स नॉट। रणबीर पीनल कोड वाज देयर अर्लियर, नाउ इट इज आईपीसी, राइट। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी हो गया incorrect. The right answer here has to be option C again. Fifth question, C is the right answer. C is the right answer. ठीक है, तो 4 नंबर आउट ऑफ 5, 4 नंबर तो गिफ्ट थे इस पैसेज में। इजी था आपके लिए ये अचीव करना। हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 4 on 5? ये मुझे जरा बताइएगा, आप में से कौन कौन है जिन्होंने ये 4 सिक्योर किया है आउट ऑफ 5? आई वुड डेफिनेटली want to know कौन कौन है आप में से जिसने इतना तो स्कोर किया ही है। ऑलराइट, वेरी गुड, लॉट्स ऑफ यू 4 तो किया ही है, वेरी गुड। गौरी, शांभवी, वेल डन। चलिए, अच्छी बात है, लॉट्स ऑफ यू हैव स्कोर्ड 4, 5 भी किया है किसी किसी ने, दैट्स नाइस। चलिए, सो ये हो गया हमारा। अगर एक क्वेश्चन यहां पे दोस्तों हो जाता है हमारा गलत, तो हमारा स्कोर क्या हो जाता है? 3 पॉइंट कितना हो जाता है? एक क्वेश्चन अगर छोड़ दिया है तब तो है हमारा स्कोर, आप देख सकते हैं हमारा स्कोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा स्कोर हो जाएगा 4 अगर छोड़ दिया तो, और अगर गलत हो गया तो हमारा हो जाएगा 3.75, राइट। सो नेगेटिव मार्किंग भी है, 3.75 हो जाएगा गलत हो गया तो इसलिए अगर नहीं आता, नहीं पता, तो फिर अलग स्ट्रैटेजी अपनानी है, रैंडमली मत मार्क कीजिएगा। All right, let's go. The second passage, here we go.
let's see quickly 10 to 12 second glance. We are talking about quickly, when I started reading it, Atlantic Declaration I could read. So between US and UK, this is also something which I know. We are talking about Joe Biden and Prime Minister Rishi Sunak meeting, discussing Russia's invasion of Ukraine as well as artificial intelligence rapid growing. Right, ये हमने पढ़ लिया. अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से. कुछ यहाँ पे है क्या? They were talking about this warning, that warning. Okay, moving on quickly. Sunak's ambition with the US, European Union already engaged in dialogue with AI. Okay, all right. So I have understood what the entire passage is all about. Right, talking about US and European Union and British. Right, they're forming an alliance to make sure that they are discussing artificial intelligence and its challenges. Also, जो भी इनके competitors हैं, उनके ऊपर भी ये चर्चा करी यहाँ पे. Right? Say for example, they discussed about Russia's invasion and such other things as well. तो चलिए, ये हमें Atlantic Declaration के बारे में है. Let's start with the questions quickly. So here we go. The declaration will stimulate flow of investment, technology, and personnel from UK to USA and vice versa. This is first. चलिए ठीक है. सेकेंड पढ़ते हैं फटाफट से. The declaration aims to strengthen the special relationship between the countries and enhance cooperation in various areas to address global challenges posed by Russia and China. Very likely कि यही होना चाहिए. The Atlantic Declaration is a free trade agreement between USA and 10 other countries. आगे बढ़ो. The Atlantic Declaration promotes competition in the region while providing proper benefits to the countries involved. The right answer here क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है? It is option B. The most appropriate answer here is the option B. तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन में अगर आपने B मार्क किया है, बहुत बढ़िया. नहीं किया है तो यार थोड़ा सा डेफिनेटली मैं नाराज तो होना बनता है मेरा, क्योंकि यहाँ पे भी काफी आसान था. दिस वाज क्वाइट एन इजी वन. चलिए, सो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाने, 5 नंबर तो यहाँ पे अभी तक चलना चाहिए हमारा. और एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री to join the comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific, ये देखिए आप, पार्टनरशिप ट्रेड ब्लॉक CPTPP ज्वाइन करने वाली कौन सी बन गई जी कंट्री? The right answer here is, it is option A. Yes, it is option A indeed. Well done, it is UK. Right, the UK बन गई दोस्तों पहली कंट्री, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री to join the CPTPP ट्रेड ब्लॉक. चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, which of the following is the first Arab-Israeli peace deal between Israel, UAE, Bahrain and is mediated by US? बताइए जरा क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? कौन सी अभी पहली अरब इजरायली पीस डील? We're talking about none other than option D, that is the Abraham Accords. Abraham Accords. चलिए, तो ये D, ये भी मैं मान लेता हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए था. क्लैट इग्नाइट मैगजीन अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, यू शुड हैव नोन दिस वन, राइट? तो यूएसए ने कराया और अब्राहम रिकॉर्ड्स. थोड़ा सा टफ जरूर था, बट आई एम श्योर यू गाइज आर एबल टू आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द डील फॉर अक्वायरिंग द प्रीडेटर MQ-9 रीपर ड्रोन्स. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द सेशंस, क्लासेस, यूट्यूब, सब जगह. फ्रॉम विच कंट्री? बताइए जरा, कहां से लिया हमने? वेरी गुड, 𝗟𝗵𝗃 गौरी, खुशी, सबको याद है. डी, यूएसए इज द राइट आंसर. रीपर ड्रोन्स लिए हमने यूएसए से. हमने डिस्कस किया था कितने महंगे ड्रोन्स थे ये, राइट? व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ द ड्रोन? वी हैव आल्सो डिस्कस दैट एज वेल. चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द 𝗟𝗲𝗴𝗃 न्यूक्लियर प्लांट, जो कि न्यूज में था रिसेंटली, इज लोकेटेड? 𝗟𝗲𝗴 इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? द राइट आंसर, 10th क्वेश्चन. Yes, it is Pakistan. A, Pakistan is the right answer. 𝗟𝗲𝗴 nuclear plant. So guys, यहाँ पे जो 5 questions थे इस पैसेज में, 4 out of 5 in the first passage. सेकेंड में अगर आपका स्कोर आया है 3, you have done a very good job. सेकेंड पैसेज में अगर आपका स्कोर 3 है, you have done a good job, right? 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ी सी आपकी क्लैट इग्नाइट मैगजीन की रिवीजन कम हुई है, यूट्यूब सेशंस भी कम देख रहे हो और क्लासेस भी बीच बीच में स्किप कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन.
Iraq has now joined the league of 17 countries that have eliminated trachoma. Okay, so we're talking about trachoma here. Okay, we're talking about WHO. All right, 100 country target set for 2030. Okay, to eradicate all the diseases. 50th country recognized by WHO. Okay, all right, okay. Director of WHO Tedros Adhanom. All right, फटाफट से आगे बढ़ते हैं. ट्रेकोमा इज द वर्ल्ड्स इन्फेक्शियस, ये हमने पढ़ चुके हैं. ट्रेकोमा के बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. So let's quickly move on to the questions. All right, recently WHO has recorded world's first human death from bird flu H3N8. We have discussed this multiple times. People preparing for the year 2025, they also are aware about the answer to this one. It's that easy. It is China indeed. बर्ड फ्लू का पहला केस कहां मिला? चाइना में. ये तो +1 श्योरली आना ही आना चाहिए था इसमें. ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम लड्डू. यस, ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे. 12th क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने. ट्रेकोमा इज एन इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू विजन इंपेयरमेंट and blindness as well as pain, and WHO recommends the safe strategy to control it. Now weekly quiz that we conduct on Monday का जो हमारा weekly quiz होता है at 4 PM on our YouTube channel, that's where we have discussed this numerous times. वहां पे हमने इसको कई बार डिस्कस किया हुआ है. I'm sure you guys will be able to answer this one. क्या है जी आंसर इसका? They are talking about option B, that is surgery, antibiotics, facial cleanliness and environmental changes. This is what SAFE stands for. So 12th question, the right answer is again B. तो ये भी डिस्कस किया गया है हमारे, हमने कई बार किया हुआ है. Very good, so many correct answers everyone. Well done, fantastic. Oh, I can see that we are already 50+ likes हो चुके हैं. Guys, अभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है, फटाफट से जो भी ये वीडियो देख रहा है, अब नेक्स्ट टारगेट हमारा है, क्विकली लालची है हम बिल्कुल, 100 लाइक्स पे पहुंचना है, सेंचुरी करनी है बिफोर द सेकंड सेशन बिगिंस, राइट? जिससे पहले कि हम दूसरे सेक्शन की तरफ जाएं, फटाफट से क्विकली एवरीवन वाचिंग प्रेस द लाइक बटन. ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये बताइए, हेल्थ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड ड्यू टू द गिलेन-बार सिंड्रोम. वी हैव डिस्कस्ड दिस. बताइए जरा, गिलेन-बार सिंड्रोम, वी हैव डिस्कस्ड दिस. कम ऑन गाइस, गिव मी द करेक्ट आंसर हियर. इम्यून सिस्टम आपका खराब हो जाता है, डिस्कस किया था. इट इज ऑप्शन बी, पेरू. वेरी गुड, पेरू इज द राइट आंसर. H3, वेल डन. हाय अरफान, वेलकम बेटा, वेलकम एवरीवन. Very good. So option B, that is Peru, is the right answer. Shabash. चलिए, recently in the news, WHO will set up an mRNA vaccine hub in which of the following states? Now this question was discussed in the CLAT Ignite sessions that we conducted. So again, this is doable. अगर आप लोगों ने सेशंस लगा रहे हैं YouTube पे, ये आंसर गलत नहीं देंगे. The right answer is Telangana indeed. Very good, Gauri. Absolutely right. So here the right answer is option C. दोस्तों इसमें मैं देख रहा हूं 14th was doable, 13th was doable, 12th was doable and 11th तो सुपर डुपर इजी. तो 4 में से 4 आने चाहिए थे अभी तक. तो अब बढ़ते हैं आगे. Who has been re-elected as the new Director General of FAO? We have discussed this hundreds of times. Again, this has been covered in the classes, YouTube sessions as well as CLAT Ignite magazine. Come on, the right answer here is, it is option D. It is 𝗟𝗂 I have repeated this name also numerous times. I'm sure you guys remember this. So here first passage के बाद, after the first passage, the score 4 on 5 was good, 3 on 5 for the second passage. The third passage required a perfect score, 5 on 5. So how many got a perfect score? Do let me know quickly. बताइएगा किस किस का perfect score आया थर्ड पैसेज में. अब बढ़ते हैं अगले पैसेज की तरफ, देखते हैं उसमें what kind of questions there are. All right, so we are talking about the BharatNet project here. Quickly पढ़ते हुए पता चल रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है. They have given us some facts about the money involved and the number of villages that there are. ठीक है जी, पढ़ लिया हमने. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का जिक्र हुआ है और स्पीड इंटरनेट देना चाहते हैं. ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फटाफट से. Okay, so the pilot project is for 4 districts and 60,000 villages. ठीक है, चलिए. All right, let's move on to the questions now. फटाफट से देखा 10-12 seconds हमने फटाफट से गॉज कर लिया. अब बढ़ रहे हैं हम सीधा
क्वेश्चंस की तरफ क्विकली. सो हियर वी गो. थर्ड पैसेज में आप लोगों ने नंबर गंवाए हैं बेटा, कुछ ही लोग हैं जो 5 में से 5 लाए. चलिए कोई नहीं. ओके, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट ऑन जून 7 अप्रूव्ड अ रिवाइवल पैकेज ऑफ 89,000 crores फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रन एंटिटीज. गाइस सबसे पहले हिंट मैं देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस लाइक दिस वेयर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट ब्रॉडबैंड. तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इट विल बी रिलेटेड टू टेलीफोनिक, यार कोई टेलीफोन की कंपनी की बात हो रही होगी फॉर श्योर. है कि नहीं? बता मुझे, कॉमन सेंस है. तो सेल हटा देते हैं फटाफट से और भेल हटा देते हैं. इसका मतलब है 50-50 लाइफ प्लान के साथ आया था ये क्वेश्चन. राइट, दिस क्वेश्चन केम विद द लाइफ प्लान ऑफ 50-50. सो टू ऑप्शन सीधा सीधा एलिमिनेट होते हैं. MTNL एंड BSNL. हु नीड्स रिवाइवल मोर हियर? इट इज द BSNL ऑफ कोर्स. राइट, सो इट वाज वेरी इजी. द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. काफी आसान क्वेश्चन था. लुक एट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी हियर. वेरी इजी. यस गाइस, बहुत आसान था. The Department of Telecommunications has launched which of the following to drive innovation and collaboration in the next generation wireless technology? This is a recent news and has been covered in the recent classes that we conducted. Come on, what is the right answer here? It is, yes, it is the Bharat 6G Alliance. Well done. 𝗟𝗲𝗴𝗹 𝗥𝗲𝗴𝗀, everyone giving correct answers. 𝗂𝚗𝑚, 𝗏𝑚, 𝗏𝗏, 𝗏𝗏𝗀, मयंक, फ्लैश, कुमकुम, खुशी. गुड जॉब गाइस. चलिए, आसान था. Which of the following fund has been created to provide affordable access to a reliable and ubiquitous telecommunications network to all rural Indians? रूरल इंडियंस के लिए बताइए जरा क्या है जी आंसर यहां पे. व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर हियर इज, कौन सा फंड बनाया गया दोस्तों रूरल इंडियंस के लिए? द राइट आंसर 18th क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये सी, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड. वेरी गुड कृष्णा, गुड जॉब गौरी, मयंक, वेल डन, खुशी, मद्रा, वेलकम गाइस, वेल डन गाइस, प्राची, शांभवी, एवरीवन. ऑलराइट, सो 3 में से 2 क्वेश्चंस मैं कहूंगा डुएबल काफी थे. ये क्वेश्चन थोड़ा सा नॉच हायर, तो ठीक है, ये हटा देते हैं. BBNL इज द सब्सिडरी ऑफ, गाइस इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड. BSNL का क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड. अब ये देखिए आप, BBNL है, ये इज द सब्सिडरी ऑफ, तो किसका होगा? नाम भारत है. MTNL का याद रखिएगा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है. तो यहां पे भारत बात हो रही है, तो डेफिनेटली BSNL के बारे में बात होनी चाहिए. तो यहां पे द राइट आंसर हियर ब्रॉडबैंड. BSNL क्या है जी? फोन का नेटवर्क है, और ब्रॉडबैंड BSNL का प्रोडक्ट है ये BBNL. सो ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. काफी आसान क्वेश्चन था ये. अगेन अ लड्डू क्वेश्चन, लॉलीपॉप था एकदम आपके लिए. ठीक है, हमारे क्रिकेट में ना जब फुल टॉस बॉल आती है ना, तो उसको हम बोलते हैं यार लॉलीपॉप था, एकदम लड्डू आया था. तो वो फुल टॉस बॉल आती है, वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन था. एकदम लूपी बॉल आपके लिए आई है. जस्ट हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क. Very easy this was. Okay, BharatNet project is related to which of the following? Now this has been discussed as well. Free Wi-Fi to students, high-speed internet to farmers, broadband connectivity to Gram Panchayats, or connecting rural areas with urban areas. What is the right answer? BharatNet project. The right answer here is, it is option C. It is broadband connectivity to Gram Panchayats. Right? This is what is the BharatNet project. राइट, हर जगह जगह पे स्पीड पहुंचा सके, इंटरनेट जो कि स्पीड से काम करे वो हम पहुंचा सके. सो गाइस 4 पैसेजेस डन. फर्स्ट पैसेज का कट ऑफ था 4 on 5. सेकंड में अच्छा स्कोर कितना था? 3 on 5. थर्ड में 5 on 5 वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस, एंड फोर्थ में 4 on 5 अगेन वाज डुएबल. ये आसानी से डुएबल था. तो अभी तक हमारा 4 पैसेजेस के बाद स्कोर क्या हो चुका है? 7 and 5 that is 12 and 4 16. तो आउट ऑफ 20 16 तो हमें आसानी से आ जाने चाहिए थे. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज क्विकली. ऑलराइट, सो द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट लूनर landing spacecraft. Okay, we are talking about the Luna 25 mission. We already are aware about the Chandrayaan 3 lunar mission. Okay, moving on to the next paragraph of the passage. तो यहां पे कुछ नहीं बस ठीक है,
यही बात कर रहे हैं, बस उसके बाद कितना वेट है, कितना वो इक्विपमेंट लेके गए, उसके बारे में बात की गई। वी नो दैट लूना 25 was not a successful launch, right? और इसके साथ ही द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया बोला गया, हिंट दे दिया गया है कि कौन सी कंट्री की बात हो रही है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री? वी ऑल नो इट इज रशिया। अगर वहां से समझ में नहीं आ रहा हमें तो एक और हिंट दिया हुआ है, रोसकॉस्मोस। आपको पता है, ये देख लीजिए आप, रोसकॉस्मोस क्या है? रशिया की स्पेस एजेंसी। चलिए उसके बारे में भी, फिर वहां से भी हमें हिंट नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ते रहिए। आप यहां पे देखेंगे सिवियर टाइज विद द प्रोजेक्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने टाई छोड़ दिए फॉलोइंग द इन्वेजन इन यूक्रेन। तो इन्वेजन इन यूक्रेन किसने किया? अगेन अ हिंट वाज देयर, काफी आसान, रशिया इज द राइट आंसर। अब देखिए आप यहां पे बताइए फटाफट से, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्लानिंग टू लॉन्च अ लूनर मिशन for the first time in nearly 5 decades in competition with India's Chandrayaan 3 program? क्या है जी आंसर? यहां पे इंडिया का चंद्रयान 3 गया, साथ में गया जी रशिया का। हिंट्स दिए हुए थे पैसेज में बहुत सारे, खैर इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, लूना 25 हमें पता ही है, बट फिर भी चलिए ये काफी आसान क्वेश्चन, +1 अगेन अ फुल टॉस, लड्डू, आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन। चलिए, हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन टू द मून? वेरी इजी क्वेश्चन दिस इज। आप सबको पता है यूएस तो सबसे पहले गया ही है, फिर रशिया भी चला गया, फिर चाइना भी गया है, अब इंडिया भी चला गया। तो अब कितना आंसर हो गया इसका? द राइट आंसर इज, इट इज 4 इंडीड। मक्कन क्वेश्चन अगेन, +1 हियर एज वेल। 2 में से 2 इस पैसेज में भी आ गए। बढ़ते हैं आगे। विच स्पेसक्राफ्ट engineering company has launched the European Space Telescope used, ये देख सकते हो आप, to explore the dark universe। डार्क यूनिवर्स अब कौन करेगा दोस्तों? ये जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिसके पास ऑलरेडी जो बेयर मिनिमम काम है वो तो कर ही रहा है, उसके अलावा पैसा काफी ज्यादा है। तो यहां पे द बेस्ट बेट फॉर अस ऑब्वियसली हैज टू बी ऑप्शन ए, नॉट जस्ट बिकॉज this is the best bet but because we have discussed this several times as well, right? ये हमने एक्चुअली डार्क यूनिवर्स का क्वेश्चन हमने अगेन ये जो मंडे को हम जो वीकली क्विज करते हैं आपके लिए, वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है। आप में से जो भी बच्चा है जिसने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियोस वी कीप ऑन पब्लिशिंग फॉर आवर स्टूडेंट्स, राइट? बहुत हेल्प मिलेगी आपको, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब है और लाइक करना भूल गए, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो दोस्तों, कोई कंजूसी नहीं करनी है। All right, name the first Arab women astronaut to travel to International Space Station as part of the private X2 mission। बताइए जरा क्या नाम है इनका? पहली अरब महिला, फर्स्ट अरब वुमन। तो आदित्य ये तो आपको भी करना चाहिए ना, अपने पास क्वेश्चन तो याद ही है हमें। क्वेश्चन क्या था, मॉक तो दिया ही है आप सबने, है ना? और आपको ऑर्डर भी याद है उसका। द राइट आंसर बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड मयंक, आदित्य, कृष्णा, नम्रा, खुशी, कुमकुम, वेल डन, हेतश्री, यश। राइट आंसर इज बी, इट इज रायना बर्नवी। बिल्कुल सही कहा आपने, बी 24th क्वेश्चन ये रहा जी हमारा सही जवाब। तो अगेन हैज बीन डिस्कस्ड। तो 4 में से 4, which of the following 2 space agencies are co-developing a dual frequency synthetic aperture radar on Earth observation satellite NISAR? क्या है जी आंसर यहां पे? What is the answer here? 4 options in front of us. कौन सी 2 स्पेस एजेंसीज हैं दोस्तों? The right answer NISAR। देखिए भाई, the right answer नासा एंड इसरो। नासा एंड इसरो, जब हमने निसार पढ़ा था, मैंने आपको टास्क दिया था, होमवर्क दिया था, इसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, राइट? वी टॉक्ड अबाउट इट लिटिल एंड देन दिस वाज गिवन एज होमवर्क इन द क्लासेस एज वेल, दैट रिसर्च ऑन द सेम। सो पीपल हु आरंट एसोसिएटेड विद अस विद रिस्पेक्ट टू आवर पेड क्लासेस, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अवेल द फ्री 3-day ट्रायल दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। गाइस उसका फायदा उठाइए, फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाइए, देखिए और रिसर्च जरूर कर लीजिएगा निसार के ऊपर, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ये था हमारा 5th पैसेज। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। फर्स्ट पैसेज में 4 on 5 था, सेकंड में कितना था? 3 on 5, थर्ड में था 5 on 5, फोर्थ में था 4 on 5 और 5th में भी मैं कहूंगा कितना भाई 5 on 5 तो आना चाहिए था। वर्स्ट केस सिनेरियो, चलिए 4 आ जाते कि 24th क्वेश्चन नहीं पता, बट 5 on 5 आने चाहिए क्योंकि क्लास में डिस्कस हो चुका है, फिर क्यों नहीं पता, है ना?
चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिक्स समिट. चलिए ब्रिक्स समिट, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड यूट्यूब सेशन हो चुका है ऑलरेडी. आई एम श्योर आप सबने वो जरूर देखा भी होगा. ओके, अगर नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. इट इज देयर ऑन आवर चैनल. जस्ट आप वहां जाइए, प्रीवियस लाइव सेशंस आप देखिएगा, वहां आपको वो मिल जाएगा सेशन. ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे. तो ब्रिक्स समिट के ऊपर यहां पे बात की गई है. व्लादिमीर पुतिन फॉर द फुटस्टेप्स ऑफ रशियन प्रेसिडेंट. ओके ओके ओके, चलिए बस यहीं पे यही बात की गई है. 25 कंट्रीज अप्रोक्सीमेटली हैव अप्लाइड टू जॉइन ब्रिक्स एंड डिसीजन वेदर टू एक्सपैंड विल बी टेकन एट जोहान्सबर्ग. तो मतलब जो अभी कुछ नेशंस बढ़ गए हैं, जो हमने डिस्कस किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स, वो उसको लेकर ये पैसेज था. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस यहां पे फटाफट से. लेट्स गो. चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने. सबको याद आ रहे हैं आंसर्स. हाँ, गुड जॉब. ऑलराइट, हियर वी गो. द फर्स्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से, किसने होस्ट किया? दोस्तों जोहान्सबर्ग, वहां हिंट दिया हुआ था पैसेज में अगेन. तो 10 to 15 जो 10 to 12 सेकेंड्स का जो क्विक ग्लांस है, इस बार हमें काफी उसने फायदा पहुंचा दिया है. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. ठीक है जी, द राइट आंसर जोहान्सबर्ग कहां है? इट्स इन साउथ अफ्रीका. सो साउथ अफ्रीका वाज द होस्ट. आप सभी को पता है वही 2023 का. चलिए बढ़ते हैं आगे. वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रीवियसली एज वेल कि जब हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका जॉइन इन द ईयर 2010. ब्राजील ने पहला होस्ट किया, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका. उसके बाद 6th वापस ब्राजील, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. दिस इज द सीक्वेंस. तो मुझे बताइए, अगर ये सीक्वेंस है तो 22nd समिट कहां होगी? दिस इज माय क्वेश्चन. 22nd ब्रिक्स समिट कहां होगी? अगर यही सीक्वेंस रहता है तो 22nd समिट कहां होगी? चलिए लेट्स सी इफ यू कैन टेल मी द आंसर, एंड द पर्सन हु आंसर्स द क्विकेस्ट, ये भी पता चल जाएगा कौन है. ठीक है, चलिए मीनवाइल ये रहा क्वेश्चन आप सभी के सामने. यहां पे एक नाम दिया गया है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अर्जी लगाई है. Who are we talking about? This question has been discussed in the CLAT Ignite session on YouTube, as well as in the classes, as well as in the weekly GK quiz that we conduct. The right answer, yes, it is Algeria. और 22nd रशिया, बिल्कुल सही कहा आप सबने कि भाई 22nd समिट कहां होगी? रशिया में होगी. बिल्कुल सही, लुकिंग एट दैट ऑर्डर. और यहां पे द राइट आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, अब ये देखते हैं, अब्दुल मजीद तेब्बोन, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इन्होंने ब्रिक्स को जो है वहां पे अप्लाई किया है. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्विकली. Who has been elected as the new president of New Development Bank, which is often called as BRICS Bank? BRICS Bank, बताइए जरा. NDB. इसके रीजनल ऑफिसेस इन ब्रिक्स में से 5 में से 4 कंट्री में है. एक कंट्री में न्यू डेवलपमेंट बैंक का रीजनल ऑफिस ही नहीं है. वो कौन सी कंट्री है? विच कंट्री इज दैट? बताइए जरा, कौन सी कंट्री है जिसका ऑफिस, रीजनल ऑफिस नहीं है इंडिया में? इंडिया में बोल दिया यार. हाँ, इंडिया में नहीं है रीजनल ऑफिस. और इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? दिल्मा जी, बिल्कुल सही कहा आपने. दिल्मा रूसेफ is the right answer. Well done. Dilma Rousseff is the right answer. Talking about BRICS, regional office सब जगह है, इंडिया में नहीं है. ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने. 28th क्वेश्चन. अभी तक तो देखो 28th भी आसान था, 27th भी डूएबल था क्योंकि क्लास में डिस्कस्ड है, और 26 तो मक्खन क्वेश्चन था. तो 3 में से 3 अभी तक आ रहे हैं हमारे यहां पे इस पैसेज में. अब बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ. चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ मेंबर नेशन ऑफ बिम्स्टेक एज वेल एज आसियान ग्रुप? अब दोस्तों इंटरनेशनल ये जो है ग्रुपिंग्स हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. पर ये क्वेश्चन के मेंबर्स के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एलिमिनेशन, दिस हैज एक्चुअली बीन आस्क्ड प्रीवियसली. तो जो भी बच्चा आप में से हमारी बात सुनता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करता है, वो डेफिनेटली अच्छे नंबर लेकर आया होगा. यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी उसने झंडे जरूर गाड़े होंगे. अगर आप ऐसे हैं, कोई हैं जिन्होंने अभी तक पहली बार जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक नहीं पढ़ाई करी है इसके बारे में, तब फिर थोड़ा दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में. मेरी एडवाइस इसीलिए यही है कि जितना जल्दी हम समझ लें व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर, बेयर मिनिमम थिंग्स दैट वी नीड टू डू, उतना बेहतर होगा. ठीक है, बिल्कुल आप लाइटली मत लीजिए इसको. चलिए द राइट आंसर
इज, इट इज ऑप्शन डी, इट इज म्यांमार, राइट। तो म्यांमार दोस्तों याद रखना है हमें, इज द राइट आंसर। बिम्स्टेक एज वेल एज आसियान दोनों ग्रुप्स की मेंबर है। Alright, the last question here, 30th question. Apart from BRICS countries, which of the following countries is a member of New Development Bank? Guys, easily through sheer elimination. भाई नॉर्थ कोरिया को कौन मेंबर बनाएगा यार? इंडिया है यहाँ पे, भाई साउथ अफ्रीका है, कैसे बना देंगे नॉर्थ कोरिया को मेंबर? नॉर्थ कोरिया मेंबर बन नहीं सकता, हटाओ इसको। यूएसए के पास दुनिया भर का पैसा पड़ा है, कहां वो न्यू डेवलपमेंट बैंक ज्वाइन करेंगे? कहां जरूरत है उनको? हटाओ इसको। यूके के पास भी कोई पैसे की कमी है क्या? आप बताइए मुझे, कहां कमी है भाई यूके के पास? उनके पास यूएस है, अलायंस भी शानदार शानदार है, ब्रिक्स के पास क्यों जाएगा वो? तो यूके भी हटाओ। द राइट आंसर हियर, ओनली ऑप्शन लेफ्ट हियर इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द राइट आंसर। गाइस ये तो कॉमन सेंस का था, है ना? इसमें क्यों गलत हो गया हमारा? तो राइट आंसर इज डी। 30 क्वेश्चंस किए हमने, तो देखते हैं भाई पहला पैसेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। डू यू अग्री विद मी? यहां पे जब मैं बोल रहा हूं 4 में से 5 आने चाहिए, 5 में से 5, आपने सबने हाँ बोला है कि सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है, यही डिफिकल्टी लेवल थी, है ना यार? 5 में से 5 ही था ना सेकंड में? मैं भी थोड़ा सा भूल सा गया, यहां देखते हैं पता चल जाएगा। 3 था सेकंड में, 3 था, थर्ड में 5 और 5 था, ठीक है, थर्ड और फिफ्थ में 5 और 5 है। चलो यहां पे डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो सेकंड में 3 था, है ना, 3 था। थर्ड पैसेज में 5 on 5 हमारा स्कोर होना चाहिए था, फोर्थ पैसेज में 4 on 5, फिफ्थ में 5 on 5 और सिक्स्थ पैसेज में भी भाई 4 on 5 दे देता हूं। चलिए, पर ये है जी आपके सामने बेयर मिनिमम कितना स्कोर आना चाहिए था। अब देखिए अब कितना हो गया जी, ये 7, 12, 16, 5, 21, 25, राइट। तो 25 मार्क्स आपके तो बेयर मिनिमम आने चाहिए अगर आप हमारे मेयरली, अगर आप हमारे सेशंस देख रहे हैं, यूट्यूब सेशंस, इफ यू आर फॉलोइंग अस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, अगर आप क्लैट इग्नाइट मैगजीन कर रहे हैं तो 25 तो बेयर मिनिमम है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक्सेट्रा जो हमने करने होगा वो सब भी किए हैं, आपके नंबर वहां से 1 नंबर और बढ़ जाता, 26, 27, 28 आराम से ये डुएबल है। तो 30 क्वेश्चन जब हमने किए तो आपको समझ में आए होंगे कि कई सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने यहां पे किए वो हम एग्जाम में भी कर सकते थे। कई सारी सिली मिस्टेक्स भी की होंगी, जैसे आपने इस क्वेश्चन में की होगी, किसी ने नॉर्थ कोरिया मार्क कर दिया होगा, किसी ने यूएसए किया होगा, किसी ने यूके किया होगा। तो दिमाग लगाइए आप कि कौन होगा, कौन हो सकता है वो। एलिमिनेट द ऑप्शंस इवन इफ यू डू नॉट नो, ठीक है, एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है। सेम इज द केस विद ऑल, राइट। इंडिया आपको पता है कि आसियान का मेंबर नहीं है, तो वहां से आप हटा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हिंट्स दिए हुए रहते हैं क्वेश्चंस में, उनको ढूंढिए और एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, की टेक अवेज। अब देखिए सबसे पहले तो आप सबको पता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग काफी हेल्पफुल रहती है आपके लिए, सारे सेक्शंस में न्यूज़पेपर्स के सोर्सेस आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग न्यूज़पेपर इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो सर्व डाउन जितने भी आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहां से आइडेंटिफाई करते हैं या फिर इश्यूज आप आइडेंटिफाई करते हैं, वॉट एवर इश्यूज यू हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम हियर, उनके ऊपर रिसर्च कीजिए आप। रिसर्च फ्रॉम दीज ऑफिशियल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट्स, ऑफिशियल रिलायबल वेबसाइट्स ऑनलाइन, राइट। तो जैसे गूगल पे सर्च किया तो ऐसा नहीं कि विकिपीडिया उठा के पढ़ने लग गए, राइट। स्टडी फ्रॉम, अगर वहीं पे विकिपीडिया की जगह कोई यूनाइटेड नेशंस का कोई कोई वेबसाइट है जहां पे कुछ आर्टिकल पब्लिश्ड है तो वो आप रीड कीजिए, राइट। कोई अगर न्यूज़पेपर है, द हिंदू है, उसकी कोई उसमें कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है वो पढ़िए, राइट। सो रिलायबल सोर्सेस, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। थर्डली, क्रिएट शॉर्ट नोट्स फॉर योरसेल्फ। खुद के नोट्स लिखना जरूरी है, अपनी अलग नोटबुक बनाइए और उसमें लिखते जाइए। अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्लैट क्वेश्चन पेपर्स, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस न्यूमरस टाइम्स। 2008 से लेकर अभी तक के सब खत्म कर डालो। 2 से 3 साल का तो बेयर मिनिमम है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, करना ही करना है। तो अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसके आंसर्स दूसरे क्वेश्चंस में दिए हुए होते हैं। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस में आंसर होते हैं, कई बार ऐसे होते हैं जिनके लिए इजीली ऑप्शंस एलिमिनेशन से हो जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है पर जैसे ही हम ऑप्शंस देखते हैं आसान बन जाता है हमारे लिए। सो डू नॉट गो विद द प्री कंसीव्ड नोशन कि यार ये मेरे लिए टफ होगा, मेरे से तो नहीं हो सकता, राइट। डोंट हैव दिस
थॉट प्रोसेस। और जितने भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट। से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 30 अगर आपके 25 भी गलत हो गए, राइट, आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, 25 गलत हो गए आपके सही होने की जगह, तो भी चिंता मत कीजिए। नाउ योर जॉब इज टू रीअटेम्प्ट द इनकरेक्ट एंड अनआंसर्ड क्वेश्चन, and whenever these questions are asked anytime else, anywhere else, be it in further mock, future mock tests, future quizzes, or CLAT or ALET exam, you are able to answer that. That's what we have to do. जो इनकरेक्ट गलत आंसर हुए हैं, क्वेश्चंस हुए हैं, उनको रीअटेम्प्ट करना है हमें, सिर्फ इतना सा हमारा जॉब है, आसानी से हो जाएगा, राइट। क्लैट के जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यहां पे हम आपके लिए डेली सुपर डुपर इंपॉर्टेंट सेशंस लेकर आते हैं। कल भी क्लैट इग्नाइट के ऊपर एक सेशन है 4 बजे, सो यू हैव टू अटेंड दैट मैंडेटरीली, राइट। एंगेजिंग इन मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो पीपल हु हैव नॉट अवेल्ड our mock test series आप ले सकते हो। It's a very affordable test series and you're getting 55 mock tests across various exams, be it CLAT, ALET, MSCT, SLAT, जामिया, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के आपको मॉक्स मिल जाएंगे, तो फायदा उठाइए इस चीज का। साथ में आपको जब आपके नोट्स बना रहे हैं आप नोटबुक में, एक और टिप है मेरी, उसको अलग अलग हेडलाइंस में नोट्स बनाइए, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू। इसके साथ अपॉइंटमेंट्स भी जोड़ दीजिएगा, इजी हो जाए आप सबके लिए कि इसको जब भी रिकॉल करना है। एनवायरमेंट भी बना दो एक अलग, तो इस तरह से अलग अलग कॉलम्स बना दिए, स्पोर्ट्स का भी बना दिया, तो वहां पे जो जो जैसी जैसी न्यूज आए उसको फेयर आउट वहां पे करते जाइए। 1 रफ नोटबुक एंड 1 फेयर नोटबुक, सो दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू। ठीक है जी, काफी आसान है। चलिए अब दोस्तों वक्त आ गया है भाई बेटिन पास करने का, तो देखते हैं कितने लोगों ने अभी तक लाइक का बटन दबा दिया है। अरे यार अभी तक 100 भी नहीं पहुंचे अपन, भाई जल्दी जल्दी फटाफट से क्विकली, पीपल वॉचिंग अस, जिसने भी लाइक का बटन नहीं दबाया फटाफट से दबा दीजिए। अब वक्त है सावित्री मैम का आने का, तो जल्दी से उनके आने से पहले भाई फटाफट से मेक श्योर कि आप लोग जल्दी से जल्दी पहुंच 100 के पास पहुंच जाए। sir, we have to buy that. If you are already enrolled beta, you will get access to that automatically. अगर आपके पास नहीं है किसी कारणवश, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हमें, इन दैट केस आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, आप अलग से परचेस कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी हमारा पेड स्टूडेंट है तो आपके पास मॉक्स का एक्सेस होगा। चलिए ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, ध्यान रखिए आप सब अपना। नाउ द नेक्स्ट सेशन इज ऑफ CR, तो सावित्री मैम विल टेक यू थ्रू। मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर गाइस, बाय बाय, होप यू ऑल लर्नड अ लॉट फ्रॉम टुडेज एनालिसिस सेशन। बाय बाय। Hello, good afternoon. I hope you can see and hear me clearly. Good evening. Is it already evening? Well, 4 is afternoon still. All right. Hello, all you good people. You had a fantastic session in GK. Are you ready for your session on critical reasoning? Before we start, those of you who watching on app, please refresh the app. The moment a session ends, refresh the app so that you can watch everything properly. Watching me for the first time, yes, well, Krishnendu's not well, that is one of the reasons, but otherwise I used to long back teach CLAT critical reasoning. In fact, I teach both reading comprehension and reasoning for CAT and CLAT as well, mostly for CAT. All right, how did you find the open mock? Easy, moderate, how was it? Quickly. How was the open mock? Easy, moderate, difficult, jaldi, write it down. Quick. All right. If you, we really look at the paper, it was a mix. It was a mix. We tried to keep it on the easy to moderate side. Then in critical reasoning, even if it's easy, you people say it's not that easy. All right. Now, we tried to stick to the CLAT pattern. If you remember last year's CLAT, which had
mix of inference questions, mostly inference and conclusion questions, a few assumption questions, and then direct questions like true or false, structure-based questions. So we tried to keep that balance, right? Main point, conclusion-based 6 questions, which were easy to moderate. Inference-based, which was a little more difficult. Assumptions, if you know it, it's not difficult. So today we will try to do that. All right. We'll try to see how to solve the problems, and we'll try to see the problems, how to approach the problems, and how to answer the questions. All right. Okay. Now, quickly, this is our analysis. If you are a strong student, if you're good at it, I believe all students are strong. All right. You have to work at becoming strong, but generally people who think they're good at critical reasoning, who have done well, you should have attempted about 22 to 24 questions with an accuracy of 90 plus. So you would have scored somewhere around 20 plus. Average student would get around 19 to 21 correct, about 75 to 90% accuracy, 14 to 16 marks. All right. And weak would be around 14 to 18. Now we will bring this 14 to 18 up to 22 to 24 when we really look at how to attempt a question rather than the question itself. All right. That is my plan. Let's see how it works. All right. Now, one thing you must have learned, Krishnendu must have told you, Alpa must have told you, there is no substitute for reading, right? There is no substitute for reading, and reading will help you cover the section in the time you are supposed to cover it. Nahi to hoga nahi. You'll be spending an hour in critical reasoning. Yash, you cannot be weak in critical reasoning. We'll make you strong. Don't worry. All right. At the end of today's session, I hope you will not say you're weak in critical reasoning. All right. Okay. Now, the passages that we had in CLAT 2023, that is the pattern we are following, the last 5 years pattern, but basically 22 and 23 we're giving. There was a passage on business and economy, which was about depreciation. That was a little difficult. There was another on print media, which was also a little difficult. Energy, gender discrimination, and psychology, on the other hand, were easy to moderate. All right. So, though we say moderate, there were more easy questions than moderate questions. Right. So, we call them all easy to moderate. Right. All right. Let us start with okay, if you remember the passage, the first passage was on wildlife conservation, tiger conservation. Do you remember the passage? Do you remember the passage? The one on wildlife conservation, tigers, and what should be done to increase the number of tigers. Acha tha. Passage was good. When you find a passage with lot of facts in it, you can read it quickly, so that's the one good point. But you have to be careful that you don't mark the answers in a hurry, because you will make silly mistakes. All right. So let's quickly look at the passage and then we will answer the questions. All right. The first one, I think you could have got 3 out of 5 questions easily, and even 4 out of 5 is possible. But silly mistakes ka bahut problem hai. You might have made quite a few silly mistakes. Shambhavi will find out why. All right. Okay. Let's start with the first one. What does it say? The Wildlife Institute of India and the National Tiger Conservation Authority responsible for the quadrennial. Quadrennial ka matlab kya hai? Once in 4 years of? We will find out. Or 4 times in a year. That is the doubt students will have. Yeah, recently updated their estimates for annual numbers. Yeah, animal census bhi hota hai, just like for human beings. So they updated their figures. They told us exactly now what is the population of tigers that India has. Very good. Madhya Pradesh, for the second time in 8 years, reported 785 tigers, a fifth of the national count. Bahut sare tigers hai Madhya Pradesh mein. The state reported a 50% rise in tigers since the last census.
a figure bettered only by Bihar, which has less than 10% of MP. Yahan pe, if you didn't read this part of the passage correctly, you make a mistake. So basically, he has said that in the tiger census, they found that Madhya Pradesh has done very well. The increase in the number of tigers in Madhya Pradesh has been up to 50%, and this increase has only been bettered by Bihar. All right. Now, what has Madhya Pradesh done right in the last 2 decades? It has reintroduced species into the right tiger reserves, and prey species have also been supplanted in tiger reserves. So it has moved predators and prey. Okay, they have wildlife sanctuaries through translocation from high density Pench and 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. All right. Then how do they relocate these animals? Through tracking, darting, and capturing animals, keeping them in temporary enclosures until they reach sufficient numbers. But principles of ecology suggest that they should not move the species to areas too different from where they live, otherwise it will be counterproductive. Next part, he says there have been some amendments to the Foreign Conservation Act which have increased problems because of certain ways in which the conservation is done. But this amendments to the Forest Conservation Act has created problems. All right. Then the author's own advice. He says most states must implement active prey management policies and prompt move away from the approach of focusing on carnivore numbers to evaluating whether the habitat necessary to sustain these animals is consistently being improved. Question 1. What is the author's primary concern? What is the author's primary concern? What is his main idea? Primary purpose, primary concern is a very, very important question. You get it in every second passage. All right. I'm seeing lots of answers for A. Any other answer? Lots of answers for A. So fantastic, easy question. All of you must have got it right. All right, let me just get the app chat going. Yeah, just give me a second. Okay. I am not able to see my app chat clearly. Oh, no, I'm not able to. Yeah, okay. Okay. Guys, give me a second. I have to tell him to. Okay. While we're doing that, let's look at, so correct answer is A. All of you were right. Let's look at the correct answer for B. For the next question, it's not B. Let's look at the correct answer for the next. I can see your chats on my phone. Let me do it that way. All right. Question 2. What does the author indicate in the following lines? I got a lot of doubts for this question. So I want you to answer question 2 now. What does the author indicate in the following line? Indicate is an inference-based question, right? Yes or no? Indicate is, all right. Relocation is often done in an incorrect manner. Relocation is often counterproductive, should be done in regions familiar to the. So here students asked, is this only tiger species or is this prey?
we are talking of ecology of relocation of both predator and prey, not just prey, and that was intended to confuse you. The question was given deliberate, the answer option deliberately wrote like any species. It can mean tiger, it can mean prey. Here he is talking of relocation methods for prey, but tigers are also being relocated. He has said predator prey balance. So predators are also, you are assuming, being relocated. So any species, it can be tiger, it can be prey. Got it? So the answer, how many of you got B here? How many of you got marked B? How many of you thought that it is not the right answer? I cannot see your chat on my computer, so I'm forced to see it on my phone. No, I'm not able to see it on my phone either. Just give me a second. All right. While we're waiting, next question. Okay, the answer was C. I hope all of you got that right. Next one. All of the following are mentioned as processes in translocation. Easy. This was a sitter. You should have got it right. Let's see how many of you got this right. I'm not able to see the chat on my phone either. Let me just say. Let me just call and see. Okay. All right. How many of you got question 3 right? Lots of you got question 3 right. Excellent. Let's see. What are the answers for 3? Which one hasn't been mentioned? All right. So that's your third question that you got right. Answer is B. So why would you not? Somebody said I got only one question correct. अब तो कोई question difficult नहीं था except that one, predator or prey, but none of the other options worked. So when you eliminate options, you mark the closest, right? All right, next one. Let's see. Ye ho jayega. This will happen, so don't worry about it. Which of the following can be inferred from the passage? Now, whenever they ask you an inference question without asking you a particular sentence in the passage, think of the main points of the author. What are the key points he has mentioned? And based on that, your answer should be there. All right. So which of the options is correct for this question? Please mark the question number. Gauri, Shambhavi, Gopal, all of you, please mark the question number. The amendments to the Forest Conservation Act have increased problems for tiger conservationists. The tiger census is conducted 4 times a year. Madhya Pradesh has shown the greatest increase of percentage of tiger numbers, or India has largely restored predator-prey balance. Okay, let's go with D. How many of you think D is right? It is making efforts. This hasn't been mentioned. So we can't say it has largely. Wait, let me get the pen color changed. Madhya Pradesh has not shown the greatest increase. Which state has shown the greatest increase? Bihar. Madhya Pradesh is second to Bihar. So this is also not right. Correct? I can see the app. I can't see YouTube. I've asked my tech person to add the YouTube. I messed it up somehow. Yeah, you marked it wrong. That was the point the question was asked. खुशी. That was the reason the question was asked. नहीं तो कुछ भी नहीं है इस passage में. Tiger census is conducted 4 times a year. Bhai, they will not be able to do anything for the tigers if they keep counting the tiger numbers 4 times a year. Ridiculous. Once in 4 years. Therefore, it has to be A. Easy now. Now are you saying, Arey yaar, how did I get this question wrong? Right?
So silly mistakes, don't feel bad about it. You shouldn't make those mistakes in the actual exam. That should be the point, right? Okay. Answer is A. Last question of the set. In the lines, it is time more states implemented active prey management policies. The author assumes which of the following. Assumption question hai. We will see how to answer it. All right. I'm able to see messages in app. I have to actually ask. 1 minute. Let me send a message to my tech team person to please put the messages in to set it up. It's got messed up. I don't know why and how. Yeah, I can see messages on app. Don't worry, don't worry. Okay, all of you keep answering. Yes, I can see messages on YouTube. I can see messages on app. So everything is fine. All right, question 5. Okay, what is the meaning of an assumption? What is the meaning of an assumption? The meaning of an assumption is, guys, you can answer on the app. I can see the questions now. I can see your comments now. I can see your answers now. Assumption is something the author is taking for granted. So when the author says more states must implement prey management policy, what is he say? What is he assuming? What is he taking for granted? Once fact it has to be in place for him to say this has to happen, right? So what is the answer? A, states now have, he says more states must implement active prey management policy. So is his assumption that most states have passive state management policies? Is that the assumption? Yeah. Or when he says most states must have active passive management policies are ineffective, ye bhi ho sakta hai. The number that implement active prey management policies is low. He may be meaning that also, right? So what is he meaning? Which one? All of them look like assumptions to me. So what is the correct answer? All right, give me your answers. Before we'll come to the scores. Once you tell me how many you scored right. Quick. See, they should have more active prey management policies doesn't mean now they have passive. Honesty is the best policy does not mean dishonesty is the worst policy. The statement doesn't use the word passive, so A is incorrect. This is the most common wrong answer. Ineffective, he didn't say. He has not talked about passive prey management policies at all. The number is low, he is not saying. Even if the number is high, he wants higher, like we want you. If you tell me I got 18 on 20 correct, we'll ask you why not all 20, right? So since more means, he is assuming not all states have active prey management policies. All right. Okay guys, something is wrong with my app chat. I'm trying and I'm not getting. All right, so now give me your scores. How many of you got 3 out of 5? Very good. 4 out of 5, excellent. Okay, 4 out of 5 is what this is worth. All right, legs. Next question. The government, okay, government's prey management policy, the author has made a claim. Which one weakens the claim? So you have to go back to what did the author say about government's prey management policies. He's obviously critical about it. He says it's not working. The government should change its approach. Last paragraph mein, what does he say? The last paragraph, what does he say? The last paragraph, he says the government should move from here.
More states must implement active prey management policy. They should draw on scientific expertise. They should support people living in they should get support from people living near the forest areas. They should prompt a move away from their present approach, which is focusing on tiger numbers. Rather than focusing on tiger numbers, they should look at habitats, which is the environment, the place where they are living, that should be sustainable. That should allow more tigers to thrive and prosper. So which one will weaken this claim? You have to answer that. Okay. Now the question becomes very easy. Whenever you have a doubt, you're answering the question, please go back to the relevant part of the passage and read it. That extra 20 seconds will ensure that you got the answer right. Okay. All right. What's the answer to question 6? Please give me the question number. Please give me the question number. Question number 6. What was your answer? What's your answer now? And what was your answer in the exam? Did you get it right both times or only once? Which one would weaken? The government has largely been focusing on increasing tiger numbers. This is the fault that the author is highlighting, but this will not weaken or challenge. You say I am weak in critical reasoning. I will weaken your argument by saying you are not weak in critical reasoning. You think you are weak. Nobody is weak in critical reasoning. We are all rational animals. If you use your brains properly, you will do well in critical reasoning. Remember, all your sections are linked to critical reasoning. English also requires reading and reasoning. Legal requires reading and reasoning. GK requires little reasoning. And of course, critical reasoning requires reasoning, right? Okay. Tiger numbers. The author says move away from tiger numbers. So you will say by knowing tiger numbers, you can focus on improving the habitat. That will weaken. B hua ki nahi? Easy? Yes? No? How many of you got B? Yeah? Okay. Now let's move on to, okay, I'm seeing lots of answers now. Suddenly this thing is working. Okay. Next. First passage, 4 out of 6. Excellent score. 3 out of 6. Moderate. All right. Average. All right. Fine. Let's move to the next paragraph. This was little difficult. Let me just send another message saying, please set up my chat. All right. Let's look at the second passage. What was the second passage? It was about contemporizing laws. What does contemporary mean? Contemporary means something that belongs to the present time, something that is relevant. Correct? So he says that laws have to be contemporary, and the union government has is attempting to change 3 important laws. This is prima facie welcome on the face of it, at first glance, perfect. As the name suggests, these laws were made during the British times, so and not much has been changed there. So you need to change the laws. But the problem is that when the author says, when you look at the draft of these laws, you realize that it's not really a very big change. The first question the author asks is, what is the change you want to introduce with this laws? I mean, you want to make a change. What is it you're trying to change? You have not told us that. That's not clear in your changes. The British had a reason for certain laws. During the British time, the Indian Penal Code was largely made, and they had a reason because they were ruling us.
So there were reason for lot of laws. They were the rulers, we were the colonial ruled, we were the subjects. But we are now under a constitution. So a lot of laws made under the British law, British colonial time, doesn't make sense anymore. Next one. He says that therefore one example he gives is the sedition law. He says the sedition law at that time made sense because the British were ruling us. Anybody who worked against the government, they would apply against the British rulers, they would apply the law. But today, what is the point of having a sedition law? The feature of the sedition law now, he says, it looks even stricter than what it was under the British rule. He says, but one welcome feature, ye to hua criticism, but there's one welcome feature. The welcome feature is that they have tried to end the time taken for investigation and decision making. Trial, judgment, all these will not take time. They've tried to fix a time limit. Then the author again has a question. Okay, the author is obviously critical of the entire change. He says, will this fixing a time limit actually help? His answer is that it will not help because the delay is because of a fundamental problem, lack of infrastructure. Okay, I stay in a place called Bangalore. All of you know about it. Fantastic weather, horrible roads. To go from any place to any place takes at least half an hour to 45 minutes. जो भी है distance. We talk of distances only in time. किसी ने हमको पूछेगा कि distance का what is the unit of distance, and we'll tell you minutes and hours because we have stopped thinking in terms of kilometers. Okay. That is what the author is saying. Fundamental problem is the infrastructure problem, and just by fixing a time limit, you cannot change that. The second thing he says is that the English names of laws have been changed to Hindi ones. And the author says, one, English has been accepted in India, which is a country of diversity. And to choose Hindi over other languages is not necessarily right. All right. The next, it goes against the democratic spirit. The next thing he says is these bills, generally bills are rushed through parliament. Fortunately, these bills will go through a standing committee. He is hoping there's enough discussion and other things people discuss. There are inputs from various sources. And that way, the changes made to the law becomes democratic. This is the summary of the passage. All right, we come back to my main thing, which is what is the main argument of the passage? Let me get back to my YouTube where I can again see your chats. What is the main argument, all of you? Every question, every passage, we've tried to give you the main argument so that in the exam, you will not make a mistake here. You cannot come back and say, मैंने main point question गलत किया. You cannot do a mistake in the main point. We've read it, we've summarized it, everyone will get it right. Contemporary laws are critical to governance. Is that the main point? Indian laws are obsolete, outdated, and need to be changed immediately. The government needs to build consensus before changing the criminal code, or the government's decision to change the antiquated also means outdated, criminal code is welcome. A, B, C or D, question number 7 ka answer. You got all correct in this passage. Somebody got all correct in the passage. Fantastic. All right. Question number 7. Give me your answers quickly. What did you mark? Yash says C. This is correct only. No, he says contemporary laws are critical to governance. But that's not the main point. This is not the main point. This has not been mentioned. This he has mentioned right at the end. And this part is welcome, is correct. These two are facts mentioned in the passage, which are commonly the wrong options given, but that is not the main argument, right? So I hope all of you got C. Fantastic. All right, next. So one question done in this passage. All of you, almost all of you got it right. Fantastic. Which of the following can be concluded about the change of English names to Hindi names? Author supports the change wholeheartedly, doesn't approve of it. His views are ambivalent.
एक बार बोल रहा है वेलकम है, एक बार बोल रहा है नहीं, इट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, or he feels it is a vindication, a justification of our freedom from the colonial yoke. Okay, so this passage, though it read more difficult, I see a lot of students who said I got full marks in this passage. Fantastic. All questions correct. All right, question 8. Answer: he doesn't approve of it, thinks it goes against the democratic spirit. Next one. What is the author's assumption? What is he taking for granted in this statement? Now, whenever you're given an assumption question, you don't have to look anywhere in the passage. Just look at the sentence, repeat it in your own words. Just say it, simplify it so that it becomes easy, and then say. The sedition law was draconian with broader definitions and stricter punishments. He did mention the sedition law, but is this what he said about it? A disconnect between the state and people necessitates the sedition law. The sedition law was an essential ingredient of British rule. It was essential for British rule. It was important for British rule. Why was it important? Because the state and the people were divided. That means whenever the state and people are divided, sedition law is required. That's what the author is assuming. He's saying this happened because they were fighting, right? So he is assuming that a fight necessitates a sedition law. Therefore, answer is B. All of you got that? Shri, why did you get it wrong? What did you mark? Which answer did you mark? Which answer did you mark? Other than B, do you remember which answer you marked? Do you remember why you marked that answer? Number 1, the sedition law was not so draconian. According to the author, the present draft is draconian. But इस sentence में draconian नहीं है. So the assumption has to be part of this sentence. This has been said about the sedition law, but this isn't part of the sentence, so it cannot be an assumption in this sentence. The question is asking what is the assumption in these lines only. So the terms of your assumption have to fit in this sentence only. That is the easiest way you get your assumption question right. Got it? Garima, Hetashri, next time you're not going to make Hetashri, I told you why it is wrong, right? It's the present draft. इस sentence में author ने क्या assume किया? You should not go beyond it. All these are beyond the sentence. It helped British perpetrate their atrocities. यहाँ पे तो atrocities के बारे में नहीं है. Just said essential ingredient, British rule, disconnect between state and people. Your assumption has to fit in those terms only. It cannot go beyond that term. So assumption questions, once you know this rule, you will never make a mistake. Got it? Only thing is they will put it in other words. Okay, negation में डालते हैं. Otherwise, it's so imperative. He didn't say. He in fact says, what's the point of having a sedition law in India? Clear? All right. Next question. The author feels fixing. ये तो बहुत easy है, बहुत direct question है. This was not so much a critical reasoning question. Why is fixing a time limit not effective? If you are in a hurry, you will make a mistake here. Otherwise, this question was a setup. What is the answer for it? Real cause is flawed infrastructure. Second, it will help judges streamline the system. It will not result in a change of attitudes, or investigation takes more time than trial and judgment. What is the answer? If you are in a hurry, see, you can be in a hurry when you read the passage, okay? But don't be in a hurry when you mark the answer. Take that. So it's not a good idea to read the passage in a hurry, because then you're wasting time. Nothing gets into your head. Read the passage once quickly and thoroughly, and then understand why will it not be effective. Third passage, he said, one good point is the time frame yet, and then he is mentioned the negative about it. Fixing a time frame won't help because judges say there's a problem with infrastructure. एक word आपको याद है तो आप mistake नहीं करेंगे. He said there is a mistake. The infrastructure is the problem, so flawed infrastructure is the answer. Clear? This was the sitter.
So here again, out of 5 questions, how many did you get right? 11. So far, how many? Many of you got everything correct, you said, right? But how many, honestly, how many could have been done? At least 3 out of 5. At least 3 easily. Which of the following is the author most likely to agree with? Remember, most likely to agree with has to go with the main point or the key points. Otherwise, they'll give you a sentence. So you know the key points, you know the main points. The laws are being changed, good idea. But when you looked at the draft, there's no point. We don't see what's the point of changing the laws. For example, sedition law, क्यों चाहिए? Change of names, ठीक है, why are you changing it to English? Third, time frame looks correct, उसमें भी sense नहीं है. So overall, that's what the author has said. Now, when you look at it, which one is he most likely to agree with? Old laws passed by the British Raj are relevant for contemporary India. This goes against the first statement of the passage. The British laws were made with an objective which is not relevant now. Exactly in the first passage, he said, laws have to be contemporary. That is why it's a good idea that the government is thinking of changing. British made laws for their system. हमने बहुत उसमें changes नहीं किए. So it's time we brought a change. But the problem is, the author says the change that is happening is not necessarily what the author wants to see. Right? All right. Changing names from British. Now here, this is actually a strengthen question. Correct? Author, you know the author's views on changing names from English to Hindi. Author doesn't believe it is correct. Why? Because he says it is against the democratic spirit. We are a diverse country with diverse languages. Why pick one? Ab tak to English chal raha tha. Why pick one out of so many languages? This is what he says. It goes against our diverse country. It goes against our democratic spirit. Which one will support the view? Either it will speak for this, or it has to give another reason why you don't change from English to Hindi. Okay, the best would be one which says how they go against the democratic spirit. But that would be very easy. So the second one is something which will say changing the name doesn't make sense. Which one is it then? Right? Then another reason supporting English. All right. All other options are actually supporting change of names. Okay. C is irrelevant. All right. Okay. So how many in that? Question 6 to 12. Question 1 to 6 or 7 to 12, right? How many did you get right here? At least 4 out of 6 or 3 out of 6? 7 out of 12, at least 4 out of 6 or 3 out of 6? Clear? Here, many of you got 6 out of 6, which is fantastic because it wasn't a very easy passage to read. But you understood the main points. It's fantastic. AI wala passage kaisa tha? How was the AI passage? How was the AI passage? Good? Artificial intelligence, technology. Here also the language was a little ambiguous, but otherwise was not okay. So basically he says artificial intelligence is just a technology, and it's a technology created by humans. You don't think of artificial intelligence as something which is self-sufficient. Okay, it is finally designed by human beings. Then he gives an example. If you ask ChatGPT, when the author asks ChatGPT which country has the best some particular brand of rice, ChatGPT doesn't give an opinion. It says I can give you information, I won't give you opinion. Therefore, the author says that people who create tools, artificial intelligence tools, must keep this in mind. What is that? That there are certain standards, there are certain boundaries that they have to adhere to when they are creating ChatGPT, artificial intelligence tools. All right.
So one is the designers have a role in making good artificial tools. Next, he says not just the designers, others like industry leaders, government agency, non-profit organizations, everyone has a role to play. All right. So, and just don't apply AI everywhere and anywhere, because you have to look at the needs, you have to look at the preferences of people before you do it. Artificial intelligence is just a mathematical thing performing mathematical operations. So you should remember that there is bias. If you feed wrong formula, it will do the wrong thing. Everybody has a role to play in making artificial intelligence responsible. All right. Question 13. What is the author's main argument? What is the author's main argument? A. Everyone has a role to shape AI as a force of good in society. Technologists and designers should be guided by ethics. AI can do unimaginable harm, or designers are and can become more powerful than dictators. What is the answer? Right? Any answer which looks extreme. Okay? Soul drivers. Okay, this is an extreme word. Unimaginable harm, extreme word. The entire option is phrased in a sweeping manner. All right, all right. How is it? See, Ananya, has he said that it can do unimaginable harm? He has said that if they do the right things, then it will not pose a problem. After all, you are creating it, so you control it. He has not said it will do unimaginable harm. This part, okay. Regulations have to be put on designers. He said some standards, checks should be there on designers. Everyone has a role to play. Everyone, designers, policy leaders, people should be asked. Everybody. All right. Okay, next one. What is the author's assumption? What did he say? Leaders, government, and non-profit agencies have a role to play in shaping AI. So when he says this, they should decide whether they want to use AI or not, whether what is the time, how much, everything. They have to decide. You can't just go on and do it. So based on this, what is the assumption he is making? Question 14, what's the answer? There is an assumption like A, but this exactly is wrong. The assumption is that leaders, government, non-profit agencies know and are aware of AI. That is an assumption, but it is not that they are as knowledgeable as the designers. They have knowledge and awareness about AI is an assumption, but not this. Got it? They are impotent means powerless. Okay, out. Okay, they have the power to choose, because he is saying they should choose the time and manner. So they have the power, they have the ability, they have the knowledge, they have the awareness. That's all he is assuming. Therefore, C is the correct answer. Most of you got it. Excellent. Weaken the author's argument. I hope you got that right. On the benefits of AI, look for an option which shows the negatives of AI and then mark the option. Which one shows the negatives of AI? AI works on existing biased data and the content generated by it has embedded bias. This is one negative. You would be tempted to mark A and move on. Then you would have made mistakes. Okay. Next, researchers are still a long way to find approaches to build. Author keeps talking about responsible AI tools, but you'll say still a long way off. And then you'll say there are a lot of injustice. So all of the above is the right answer. Got it? Strengthens the author's view, one which says that time and manner are important. Which option tells you that if you don't choose the time and manner of using AI appropriately, it is wrong. So one which says that time and manner are important, otherwise AI becomes useless. Which option does that? The use of AI is pervasive, means spreading all over.
and communities that don't use it fall behind the curve doesn't say that they have a decision on when and how, so this cannot work. The consequences of relying solely on AI systems provide access to various services to provide access can cause exclusion and harm. If you use AI indiscriminately, some people will be excluded, some people will be harmed. Therefore, the correct answer is B. ये answer, by the time people read it and understood it, it would take time. So this is a question you can either omit if you didn't understand, or you would have got. This is the only question which just changed the just made it sound very complicated. All right. So 16 was one question which many of you made a mistake, might have made a mistake. All right. Assumption. Again, what is the assumption in the concluding lines? All are very close. Okay, there is a lag, Hiteshri. The lag is because not all of you, right? Only some of you are facing it, then it's a problem with your system. I don't think it's a problem with my system. Is everybody facing a problem of lag? Slight lag will be there. Yeah, but voice, if it is disturbing, if there's a disturbance in what I'm saying, then let me know. All right. If you say we must work to create more equitable AI systems, what are we assuming? Cannot function independently because we are saying we must work together. The key is not talking about working together. The key is about creating this. Therefore, this is not an assumption. AI systems are not equitable nahi hoga because we are saying more equitable. Some are having a lag, some are not. Okay. So the B is again a common mistake. Existing AI systems are equitable. We are not very sure. Then why are we working for more equitable? They are not completely equitable. So we have to make it more equitable. Got it? So the correct answer is D. Now remember, this kind of question you have to be slightly careful. ये A-let में बहुत ऐसा आता है. So you have to be careful. Not C, D. Not C. Because if he says to make them equitable, that means they are not equitable. Got it? He is saying more equitable means they are not completely equitable. There is still ground for improvement. So we are just playing with words in all four options. So you have to read them carefully. This is a logical structure question. The purpose of an example. Iske liye you have to go back to the passage because everything will sound similar. So just go back to the passage. Immediately after the example, the author will say what is the reason. So first one, ChatGPT. If you ask ChatGPT, what is the best jollof rice? It will tell you that, listen, I can only give you information. I don't give you opinions. He says to the designers, we should set boundaries. So this is the way ChatGPT has been designed, that it doesn't answer questions which are controversial, which are opinionated. Similarly, designers and developers should have a high standard and there should be checks and balances on them in the development of AI tools. So what is the ChatGPT example given for? To say more and more designers should be like that, and we should have a system where people are like that. Understood? So what is the answer to the ChatGPT question? What is the answer to question 18? Let me see the answers on my phone. Nahi to I can't see. Wait, two. I can see the question 18. Question 18. Give me the answer number. Right? To show. Now remember, these are highlight. Okay, sorry. Highlight, you know the meaning. Illustrate, demonstrate.
Underscore and underpin both mean the same thing. Underscore means to emphasize. Underpin is again to emphasize. All right, but therefore it is D to tell you that just like ChatGPT, others have to do. Okay. Now the Greek passage was a narrative, and many of you were slightly confused there, at least from what we saw. I've got some doubts on this. I was a little surprised. Okay. Author has gone to Greece. There were wildfires in Greece. There were allegations of arson that happened. Author says nobody went into the deeper questions. Why are these wildfires happening? Most survivors said it is because somebody set fire. Nobody was willing to accept climate breakdown, climate change as the reason for the fires. And she said that each time there have been fires in summers in Greece, and each time it's worse. But whoever she spoke to, science, which talks about the reason it's happening is because of climate change, but public awareness and debate is not willing to accept it. And then she goes into the psychological reason, that the psychiatrist says that people who accept anthropogenic, human-made global warming continue to locate it as a problem of the future. Even if we say, 𝗘𝗴𝗏, human beings are contributing to climate change, we think of it as a problem of the future, not of now. And this happens even to people who have faced the impact of climate change, like the Greeks in their wildfires. Then the author goes into a mode of reflection that we human beings can be loving, we can be destructive, but we do not accept that we are destructive. All right, we don't accept it. We don't accept the fact that we are destructive. So the author says we need to listen more carefully, all of us human beings, just as she says she is listening, she is more aware of her actions regarding the climate. All right, main argument, question 19. What do you think is the main argument? People are overly concerned, too much concerned. No, it is not a problem. It is not, it may be an act of arson, but the author says there are other reasons. Therefore, the correct answer is A. How many of you got that? Excellent. What can you infer from this? बहुत लोगों का ये mistake हुआ है. They even challenged me in doubts that how is this the correct answer? Author says people must be more aware. I am now more aware. I am trying to understand how I have contributed to climate change. So what is the author saying? Is the author saying I am not aware? I am trying to be more conscious of how much I have, or I am trying to understand more deeply. She is talking of herself with regard to people. Answer is B. All right. How many of you got that right? Next one. What is the assumption in this statement? Now, those of you like who got the assumption question wrong last time, tell me. What is the, only read these lines and your assumption answer will be in these lines only. 99% of the cases that happens. Sometimes they may ask based an assumption based on the line before that or after that. All right, tell me. Question 21. Give me the number, please. Give me the question number. Authorities are not interested in investigating the cause of the crime. Investigation by authorities was not thorough. Allegation of arson and mishandling are far-fetched, or there are allegations of arson and mishandling. What is the author taking for granted? Taking for granted when he says we need to look into these allegations. Of course, we have to find out. We have to investigate these. When he says, of course, we have to find out if there is any malpractice, he is assuming there is malpractice. So the correct answer is D. All right, next one. See, people are saying arson is the reason. Author is saying climate change is the reason. Which one will support the fact that climate change is the real reason of Greek fires? Quickly. Exactly. To look into the allegations, they must exist. So that is the assumption. All right. If you have to support, if I say that it's because of climate change and you said no, somebody set fire to it, dono sahi ho sakta hai. So which one will
make the पल्ला मेरे argument के side बाहरी होगा. How? Question 22. The fire in Mati was confirmed by experts as an act of arson. Author's argument is not for act of arson. This is for the people, so this cannot be. The cause of the fire can be ascertained only after a thorough investigation. Author has already said this, so this is not going to support it. The fires are a recurrent event. अच्छा, arson कोई अगर जलाएगा forest तो एक बार जलाएगा. Every year you think on a regular basis they'll be doing it. Crimes, do they just do it on a regular habitual basis? If the fires occur every summer, obviously it is cyclical, it is a climatic event. Therefore the correct answer is C. Clear? Alright, next. Which of the following, ये है parallel logic question but very easy. Okay? We are loving, we are destructive, but we will not accept it. Okay? Which of these options is where we have a habit, we have a problem, but we are refusing to accept it, or the subject has a problem and is refusing to accept it? Yeah, B says that we don't accept our problem of protecting biodiversity and harm we are doing. Here, last question. The more I spoke to people, too much to bear. Concluding second last paragraph mein, the author says when she spoke to people, they refused to accept that climate change was the reason of the Greek wildfire. So the author said, is it because we are too guilty and we are refusing to think about it? Is our guilt too much to bear? Okay. So what is the meaning of that line is what the author is asking. Is the author saying that the Greek people are guilty of climate destructive practices? Public awareness needs to increase. People are getting psychologically affected, or only people who have been affected? Extreme word. Is he saying this or this? Question 24. No, analogous means parallel, similar. Analogy based on similarity. Okay. Basically, people are in denial about climate change, and the author says that people have to start accepting climate change. Okay. Out of 24 questions, okay, give yourself 24 marks. How many of you think this paper, forget how much you got, this paper, if you had done the correct approach, was easily a 19 to 20 mark paper. Easily. Most of you would have done it with a little understanding. All right. Read the passage carefully. Understand the main argument. That is important. Okay. Understand the question. ये main point question है, strengthen weaken question है, parallel है या inference है, assumption है. These are the main one. Miscellaneous. Parallel logic comes under miscellaneous. Main point, inference, assumption, maximum questions hai. And in your mocks, 70% of your questions are that. So you can easily do it with practice. Main point question you cannot get wrong if your reading is correct. Alright. So we learned how to identify key points, how to identify assumptions. Let me just send a message to Nivedita saying she should be ready to take your class. Okay. Alright, how to draw inferences, strengthen, weaken. Strengthen may look at an option which looks like the author's premise. Weaken may find one which goes right against the main argument. Alright, please read editorials. Almost all of the passages were drawn from editorials. Almost all of them. Editorials, sometimes articles in books, non-fiction. These are your two main sources. Among editorials, Hindu, New Indian Express or Indian Express. Hindu, Indian Express, Times of India. Okay. Any of them. New York Times. Okay. Guardian. These are the main ones you should be reading. Alright. Okay.
So I hope all of you did well until we do another mock analysis. For the next one, you should be ready. You should not rush through your answers and make silly mistakes. Read properly, okay, and be disciplined. All right, I will see you again very soon. Until then, bye-bye. All right. Hi everyone, good evening. Okay, so I hope you can hear and see me clearly, everyone. Good evening, everyone. Good evening. I believe you were expecting Nivedita ma'am, but then no, I hijacked her session. I'm going to be taking the analysis before her. So the sequence that we are left with is the analysis for English, then we have legal analysis, and then we have mathematics happening. That's going to be the remaining sequence of the classes. अब थोड़ी सी ना मैंने आप लोगों से कहा था कि आप अगर बैचेस में आ रहे हो तो ये एटलीस्ट मेरा सेक्शन आप आज बहुत ध्यान से देखना because in today's session I am going to be specifically addressing all those people जो अपने आप को वीक मानते हैं इंग्लिश में. मेरा इंग्लिश कमजोर है. आई एम वीक इन इंग्लिश. I don't score really good marks here, and if I categorize all the 5 sections, ये मेरे टॉप 3 में तो certainly नहीं आता. तो आप में से कितने लोग हैं जिनका टॉप 3 में इंग्लिश नहीं आता? I would like to know that. Good evening, Garima, Nitika, Nanya in the app as well. How many of you consider English in the bottom 2 subjects? Good evening. English as okay in the app, all right. Bottom 2 subject में ठीक है, all right. बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है. तो आज ना in the middle, ठीक है. अब आज का जो सेशन है, I'm not going to be discussing even a single question with you. Let me make it very, very clear if you want to attend the remaining session or not. I am not going to discuss even a single question with you. Because every question that has been uploaded in the open mock is backed up with a video solution. सबके solution वहां है. तो अगर किसी आंसर में डाउट था तो वीडियो सोल्यूशन आपको देख लेना चाहिए था मेरे हिसाब से. If you had a doubt with any of those questions, if you got one of those questions incorrect, I'm sure you would have already seen those video solutions. So the idea is not to find correct answers. The idea is how you should have attempted this section to score better. And by the end of this discussion, you have to tell me that do you realize you've lost some silly marks? Properly strategizing this section would have helped you score at least 5-6 marks more. So ये क्या strategy होनी चाहिए थी ये discuss करेंगे आज के section में. ठीक है? ठीक है. All right. चलो. So let's start talking about this section, and that is English. ठीक है. So 24 marks का section आया था. You had 5 passages, and ideally you have to bifurcate yourself into 3 categories before we start talking about how your strategy should have been, how you should have taken this mock. Is if English is your strength, if you're okay in English, not very good, not very bad, or if you're weak in English. If you think English is okay, or if you think you are weak in English, your strategy is going to completely differ from somebody who thinks that English is strong. So आज सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम सब अपने लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी फिगर आउट करने की कोशिश करें that will work for individually you as a person. So I'll be giving out a lot of instructions, okay? You can jot them down and accordingly strategize the next upcoming mock. Take the next mock with the methodology that we discuss in today's class. And if you genuinely practice that, I'm absolutely sure your scores are going to be, at least in English, is going to be increasing, okay? All right. ठीक है. So 24 marks का section था. You had 5 passages here. अब analysis इसकी देखते हैं. ठीक है. Anyone who
took this paper and thinks they are strong in English, you should have scored at least a 22 to 24. मतलब 21 plus तो certainly आपका आना ही चाहिए था if English is in the top 2 or top 3 sections. Top 2 में है, no bargaining here. If this is your strength, you should have got that. आप ओके हो इस सेक्शन में, आपको रफली 19 से 21 स्कोर ले आना चाहिए था, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इस सेक्शन में डाला होगा लेकिन आपका स्कोर इतना नहीं आ रहा होगा. How many of you belong to that category that you thought, okay, I'm average in English and my English is not very strong, not very weak as well, but I couldn't score 19 to 21. Average, yeah. Which is fine. Yes, that's how you're supposed to deal with it. Yes, attempted with a 90% accuracy. ठीक है, तो 19 से 21 and for people who are weak 15 से 18 भी attempt करते तो 12 से 15 आते हैं. बहुत सारे लोग मुझे 2-3 दिन से they've been raising doubts that ma'am we are unable to score even a score of 10, नहीं आ रहा है, English बिल्कुल pathetic है, बिल्कुल score नहीं आ रहा है. I've asked a few to come online and watch this session as well. Okay, closer to strong than average. 19.25 was score. Okay, so that's, yeah, more than a little average. Like a strong marks like an average. ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने अपने आप को कैटेगराइज कर लिया. इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस का बाइफर्केशन था, इस टाइप पे मैं बाद में आऊंगी. बात करते हैं आपका अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए था व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग अ मॉक टेस्ट. Whatever category you belong to, strength है आपका English, average है आपका, weak है आपका, there are different types of questions that you see, okay? And looking at the types of questions, first thing that you always should, while you're practicing, know that ये type के question मेरी strength है. चाहे आपकी English में कितना भी बेकार हो, कुछ तरीके के क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे हमेशा गलत होते हैं, ये मेरे मोस्टली सही होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, कुछ बच्चों के हमेशा सही होते हैं, उनका ग्रामर स्ट्रांग होता है. कुछ बच्चों के डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं क्योंकि वो एक लाइन में लिखा हुआ होता है. कुछ बच्चों के टोन बेस्ड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते. सो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एज अ चाइल्ड, में मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं टोन ऑफ दिया था, मुझे कभी भी गलत नहीं होता था. आई न्यू कि ये क्वेश्चन मेरा फोर्टे है कि मैं हमेशा सही करूंगी. सो ऑलवेज नो आपके क्वेश्चन टाइप में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप हमेशा सही करते हैं, हमेशा गलत करते हैं. दैट्स द फर्स्ट एनालिसिस दैट यू सपोज टू डू व्हेन यू ओपन अप अ मॉक टेस्ट. उसके पहले एनालिसिस आपको कर लेनी है, क्योंकि जैसे ही आपको ये टोन बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, आपको पता है कि ये तो मुझे अटेम्प्ट करना है. इफ यू डोंट नो, इफ यू जस्ट रैंडमली, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल just randomly take mocks. I've been observing that in a lot of classes. One, a lot of you do not take mocks. Two, if you take mocks, you just randomly take mocks. जो भी मॉक नंबर आ गया randomly वो ओपन कर लेते हैं. कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, randomly टेस्ट दे देते हैं. जो फेवरेट सेक्शन होता है लीगल को 40 मिनट दे दो, 50 मिनट दे दो, क्योंकि वही स्कोर आते हैं. That's one of the worst ways of taking a mock. Please, before you sit down for a mock, strategize it. Have a plan in your head कि चलो ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन है, ये मेरे स्ट्रेंथ क्वेश्चन है, चाहे इंग्लिश मेरा कितना भी खराब हो, मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने वाला हूं एग्जामिनेशन में. जीके में इस तरीके, मैथ्स में चलो मैंने एवरेज पढ़ा पिछले 15 दिन में, तो एवरेज के जितने क्वेश्चन आएंगे वो मैं अटेम्प्ट करके आने वाला हूं, बाकी छोड़ दूंगा, मैथ्स मेरा बेकार है. यू हैव टू नो द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर कंफर्टेबल विद. क्रिटिकल रीजनिंग में असम्पशंस गलत हो रहे हैं तो असम्पशंस छोड़ के आऊंगा इस मॉक में, क्योंकि मुझे मेहनत करने की जरूरत है उसमें, लेकिन मॉक में छोड़ के आऊंगा मैं. Does that make sense, everyone? Yeah. Okay. So please figure out, know what's your strength as a question type. आपको पता है सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन टाइप्स एग्जाम में आएंगे. इसके आगे बहुत ही रेयरली कोई गूगली आता है तो छोड़ देना. 99% पेपर आपका दिस क्वेश्चन टाइप्स में ही कवर्ड अप होगा. तो इसमें से बाइफरकेट करो, आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या वीकनेस है, वो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. सो यू नो दैट दीज आर माय
areas of weakness, these are my areas of strength, these kind of questions I get correct, and plan your strategy accordingly. Now I'm going to be talking about planning your strategy a little more in detail. This thing is going to help you with your attempt strategy in most of the other sections as well. So what should your strategy be? Every person has a unique strategy, okay? But what does the strategy depend upon? Weak in figure of speech. अब गौरी एक बात बताओ मेरे को, देख फिगर ऑफ स्पीच कितनी है जो एग्जाम में आ सकती है? कितनी फिगर ऑफ स्पीच हो सकती हैं? 20, 25, and that's all. As far as you ask me, फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आर वेरी लाइकली टू कम इन द एग्जामिनेशन, और मॉक में भी हर मॉक में मिनिमम 2 फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है ये. एक्चुअल एग्जाम में भी you'll find 2-3 figure of speech questions coming up. You barely have to sit for 2 days, Gauri. 2 days, okay? Attempt those 20-25 odd figures of speech, understand them. आपको लिटरेचर नहीं पढ़ना है. The examiner doesn't expect you to be a literary expert. You just have to figure out those basic words, their meanings, and their application in simple sentences. And you will never get these figures of speech wrong. So everyone, since I said this class basically addresses those people who are really weak or average in English, फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं किया अभी तक, मुझे ये बताइए. आपको पता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच आएगा ही आएगा, हर मॉक में आ रहा है, एक्चुअल एग्जाम में आ रहा है. सिंपल ग्रामर टॉपिक है, 25 फिगर ऑफ स्पीच करने और आ जाएंगे वो मुझे. ओके, FYI, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू हैव क्लास नंबर 1 ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच. सो बेबी इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ आवर क्लासेस, मेक श्योर फिगर ऑफ स्पीच अटेंड कर लेना मेरी क्लास, ठीक है. मैम व्हाट शुड बी एन आइडियल गैप ऑफ डे व्हाइल अटेम्प्टिंग मॉक? सी, आप दिन में 1 से ज्यादा मॉक मत लेना स्वप्निल, but if you want, you can give 1 mock every day if you have reserve for so many mocks. I'm absolutely the happiest person in the world if you take 1 mock every day, although this time right now is too soon to take 1 mock every day. So after every mock you need to do analysis as well, okay, and you need to experiment with strategies. So probably 1 mock a week should be a very good pace. 2 mocks a week, I'm okay. More than that, right now, not needed. Wait for a month more and then you can increase the number of mocks that you take. And Gauri, let me tell you, these were low-hanging fruits. Everyone who got those figures of speech question wrong in the mocks, they were low-hanging. These were sitter questions. इतनी simple language में, इतनी simple, I think that means थोड़ी सी मेहनत कर लोगे background में, you'll get figure of speech right. So getting back to what should your unique strategy be? So pointer number 1 that we had already discussed, please figure out your strength type of questions and your weakness type of question. ये question हमेशा सही होते हैं, ये question हमेशा गलत होते हैं, उनका bifurcation करो according to that. ठीक है, ये पहली चीज जो आपको strategy making में help करेगी. दूसरी चीज जो, just a minute, कितनी देर में मुझे पेपर करना है? Before you start the paper, you have to keep something in your mind that I have to give this time and only this time to my section. So if you are strong and if you're attempting English, see, you should be able to do this section within 26 to 28 minutes. Okay? Now, there are 2 categories of people here. The first category, if you're strong, you can also do this entire section in lesser amount of time and probably save a couple of minutes for a section that takes you more time. For example, mathematics or legal, where you have to do more of processing than what English requires. Okay? Weak लोगों को इससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अटेम्प्ट करने में पेपर, लेकिन क्या आप अपने एक वीक सेक्शन को ज्यादा टाइम दे सकते हो? इवेंचुअली आप जितना ज्यादा टाइम दोगे आप उतने मार्क्स लूज कर सकते हो यहाँ. तो अगर आप कंप्लीटली वीक है, अगर आप 24 में से रफली 18 क्वेश्चंस भी मार्क कर देते हैं ना करेक्टली with a 70% accuracy in 24 minutes, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं. Does that make sense, everyone? Yeah. So, yes. याद नहीं रहते तो अनन्या प्रैक्टिस करिए बच्चे, जीके जैसे प्रैक्टिस करते हैं. इतना ह्यूमंगस जीके याद रख लेते हैं, 25 फिगर ऑफ स्पीच याद नहीं होंगे, ऐसे कैसे बात है बच्चे ये? ओके, सो
back to it. If you are very good in English, तो भी आप कम टाइम में कर लोगे. अगर आप बहुत वीक इंग्लिश में, तो आपको कम टाइम में करना ही चाहिए. But every calculation of how much time to give to a section which is unique to you comes with what are you losing. जैसे एक आपको hypothetical situation देती हूँ. I am very good in English. I am very good in CR, but I am pathetic in mathematics. शायद उस 10 में से, उस 12 questions में से I am going to be solving only 3 to 4 questions. So, how much time should I be giving to solving 3 to 4 questions? If I right now take a mock, I'll be solving these questions in the next 7 minutes or 8 minutes. The time that I saved here in mathematics, I'm going to give it to a section, क्योंकि इंग्लिश में क्विकली कर लूंगी, सीआर में क्विकली कर लूंगी, शायद लीगल रीजनिंग में क्योंकि वो मेरी नॉलेज के हिसाब से डिफरेंट है, आई एम गोइंग टू गिव द टाइम टू अनदर सेक्शन. सो आपकी यूनिक स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है कि आपका जो वीक सेक्शन है वो कितना बेकार है कि उसमें कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो या कुछ टाइम चाहिए. कई लोगों का मैथ्स वीक होता है लेकिन उनको टाइम चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए. मैथ्स वीक है लेकिन अगर 15 मिनट दे दोगे ना तो वो 10 नंबर ले आएंगे. तो अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो सेव करो अपनी स्ट्रेंथ सेक्शन से टाइम और दो उसको मैथ्स को. बाय द टाइम यू प्रैक्टिस एंड इंक्रीज योर स्कोर्स. सो does that make sense, everyone? Your second strategy is the time that you give to each section should be already decided before you take a mock, and you have to keep experimenting with every mock according to what works out for you. Sometimes if English is your strength, give it 30 minutes and see if you've been able to score better. Was your accuracy increasing there? Then experiment. Give it 25 minutes. See, were you able to score equally well as under 30 minutes? अगर equally well करते तो वो 5 मिनट सेव करते आप किसी और सेक्शन के लिए. Experiment. Okay? Alok, what's your question, my child? I can't see your question. Ma'am, I always exceed the time in doing English section. What to do? Namra, sit with a stopwatch and tell your mind. If I have 25 minutes, for example, and I have to attempt this entire section in 25, then I will probably leave some questions. So, the next agenda of this class is, जो अभी हम second half में discuss करेंगे, वो ये करेंगे कि कौन से question छोड़ देने चाहिए, कौन से question attempt करने चाहिए. So, Namra and everyone else, if you exceed the time, know that I have to stick to the time. I'll be leaving some questions. Weak वाले बच्चे ज़्यादा question leave करेंगे. कंपेरेटिवली कम एवरेज वाले और स्ट्रॉन्ग वाले शायद एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करेंगे इंग्लिश में. बट यू विल हैव टू हैंड पिक क्वेश्चंस एंड डिसाइड विच टू अटेम्प्ट, विच टू लीव. फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज वीक इन इंग्लिश, डोंट सॉल्व ऑल द 5 पैसेजेस. क्यों पढ़ना है तुमको 5 पैसेजेस? इस वाले पेपर में आपके पैसेजेस के टॉपिक देखिए एक बार. अगर मैं इंग्लिश में वीक होती, क्योंकि मेरा साइंस को लेके इंक्लिनेशन नहीं है, I would have entirely left this passage. Only I would have found some low-hanging fruit. Those are sitter questions. I would have attempted them, 1 or 2, and left the entire passage. I would have certainly read India-China relationship because ये last कितने decades से न्यूज में है. और अगर आप CLAT aspirant हो, this should not be something new to you. अच्छा, ये भूल जाओ, अपने आप को जगह पे रख के देखो कि अगर आप नू में होते या अगर आप मणिपुर में होते और अगर वायलेंस होता तो आप क्या सोचते उस टाइम पे? कीप योरसेल्फ देयर. कीप योरसेल्फ एज अ पर्सन हु ईट्स राइस इन इंडिया and then see if there are restrictions on the export of non-basmati rice, you'll be the happiest person. You have more rice available for you, but think how would the other countries would have reacted who consume rice but can't produce it as much. अपने आप को रख के देखो, ये कितने simple passages थे. And the easiest was professor. It was a simple narrative. Narrative passages were a cakewalk. So the next thing is, if you are exceeding the time limit, like Namra is, please figure out which passage to read first.
which passage to read in the end. Don't start with the very first passage. Mocks are about strategizing. Know what are your comfortable topics. I love reading narratives. I love reading fiction. This is something I would have scored 100% correct here. I am somebody who certainly knows about the violence that's happening in India. I read newspapers. I know about what happened in Nu, and I know about what has been happening in Manipur. I would have attempted this because I am comfortable with the content of the passage. Be aware of the kind of passages you are comfortable with. Pick them up before the others and then go ahead with it. So ultimately, Namra, when you're running out of time and if you leave a question, you're ultimately leaving a question from a topic that you were not very okay with. छूट गया, जाने दो, क्या होगा? Right? So, okay. Don't know my strong and weak part, but in this mock, English was 20.25, which is a very good score, magistrate. Okay, so let me see if I missed out anyone's message. Ma'am, the time English I take more. I just answered that. You can't exceed the time. अपने माइंड को समझाओ. Dude, मैं नहीं दे सकता. किसने कहा मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? वो लालच मुझे छोड़ना पड़ेगा. I can't be greedy because this paper is about your speed. So that will gradually increase. But in the next mock, what I'm going to do is I'll be sticking to 25 minutes that I have stipulated for my own section according to my own strength. And in this, I'm going to be handpicking passages that I'm comfortable with, that I know about. I'm going to be leaving some questions and marking some questions. Okay? Okay. So that was about the time limit that you set for yourself. So time limit, everyone, ये एक ideal time मैंने suggest किया है, but I have discussed the variables with you. Please work on variables. क्या क्या चीजें हैं. इस क्लास के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाओ अपनी कि मैं नेक्स्ट मॉक ऐसे देने वाला हूं. ठीक है. अब बात करते हैं मॉक के एनालिसिस की. तो मॉक का एनालिसिस कितने लोग करते हैं और कब करते हैं, मुझे ये बताइए. When do you analyze a mock? Okay, and do you do that as well? I would like to know that by the time I have a sip of water. Do you analyze the mock, and when do you do it? Yes, Garima. So you know your strength. You have to know, but just don't randomly start reading from the first passage. Yes, Shambhavi, see that. So that's the whole point, everyone. A lot of people either don't analyze the mock or they do it pretty late, like एक week बाद. Remember something, when you analyze the mock, you have to do it either on the same day or within a day. I'll tell you why. Because if you want to know the low-hanging fruits, as I say, KD sir के language में लड्डू questions, कि ये अरे यार क्या silly mistake करी मैंने, ये question तो मेरे सही होने चाहिए थे, मैंने तो बड़ी stupidity कर दी, next time मैं याद रखूंगा कि ऐसे question में जरूर attempt करके आऊंगा, but ध्यान से करके आऊंगा. You would know everything that happened with you during the mock will be there fresh in your memory. So keep that intact with you, and please analyze a mock within 24 hours of taking it, so that you remember what happened with you and so that you'll take a learning out of it. So analysis of a mock is very, very important. I'm going to also be talking about how in-depth your analysis should be and what you should be doing specifically to my section. Okay. Yes, you can. A basic watch, not a smart watch. Okay. Absolutely. Try to do it the same day within 24 hours. All right. So now let's start talking about क्या-क्या चीजें आपको mock analysis में करनी है. That's a very important thing. Most of you keep asking me these questions in the classes and I had to address that before the next mock happens. ठीक है. अब कोई भी जो mock लोगे ना next, within 24 hours, सबसे पहले देखना मेरे कौन-कौन से questions correct हुए. Correct हुए तो पहला, was it only a fluke or my reasoning was correct?
आइडेंटिफाई, अच्छा ये मेरा रीजनिंग करेक्ट था, मतलब ऐसे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट मॉक में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ये फिगर आउट करो क्वेश्चन टाइप से। कैन यू डू दैट एवरीवन? सी किस तरीके के क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, एक पैटर्न देखो उनमें। सबसे पहले आपको करेक्ट क्वेश्चंस का सीक्वेंस फिगर आउट करना है। ओके, सो फाइंड आउट क्वेश्चंस दैट यू गेटिंग करेक्ट, you know these are your strengths. In the next mock as well, you can redo them. Second, figure out questions that you got incorrect. अब वो incorrect में stupid mistake था, over enthusiastic हो गए कि भैया रिस्क लेंगे आज तो। इस कैटेगरी की बात मैं ना स्पेशली करूंगी। आपके इनकरेक्ट इतने, ये वो कैटेगरी के बच्चे जिनकी इनकरेक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि जो मार्क्स आते हैं ना वो भी नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि क्लैट और एआईएलईटी में नेगेटिव मार्किंग है? You can, I mean, okay, it's okay to take risk when you're able to eliminate two options. It's okay to take risk because you've worked on those type of questions. Like mathematics में आपने ratios किए हैं तो मैं रिस्क लूंगा, लेकिन रैंडम रिस्क क्योंकि मेरे स्कोर नहीं आ रहे तो मैं मार्क करूंगा ताकि कुछ तो सही होगा, इस कैटेगरी को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। आइडिया क्या है इसका? नेक्स्ट मॉक में मेरा स्कोर बढ़े, ठीक है। सो एवरीवन इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी फोटो अच्छी नहीं आती तो फिर से ले लेना एक स्क्रीनशॉट, ठीक है। देन व्हेन यू सिट फॉर मॉक एनालिसिस, फॉलो दिस टेक्निक दैट आई एम टीचिंग यू। कि मैंने वर्ड्स देखकर सर घूम जाता है। ओके बच्चे, तो बेसिक वर्ड वोकैबुलरी तो काम करना पड़ेगा, बट आज हम कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे। आज हमारा एजेंडा ये कि नेक्स्ट मॉक में स्कोर कैसे इंक्रीज होगा। ऑलराइट मैम, जो क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं वो भी वीडियो देखें। नहीं, अगर आपको डाउट है तब देखिए, करेक्ट तो हो गया बट शायद तुक्के से हुआ तो देख लो। ऑलराइट ऑलराइट, सो बैक टू इट, फाइंड आउट इनकरेक्ट क्वेश्चंस। सिली था तो लिख लो, I missed the word except, I missed the word not. Give a tight slap to yourself and remind yourself, I'm not going to repeat this again. It was a stupid mistake. I can't afford to lose even a single mark in my examination. I have to crank the best of the NLUs. So, लिख लो, silly mistake. 5 question में silly mistake कर दिया. I don't deserve to sit for this examination. Tell yourself, I can't make such silly mistakes because the pressure of time is there on me. I'll give it 10 more seconds, but I'll figure out the directions of the question. ये कैटेगरी कंट्रोल्ड अटेम्प्ट। मार्क करो बट थोड़ी मेहनत करो पहले क्वेश्चन टाइप में प्रैक्टिस करके और फिर मार्क करो। ये बहुत स्टूपिडिटी है अगर आप रैंडमली क्वेश्चंस मार्क करते हैं व्हेन यू हैव अ नेगेटिव मार्किंग। टेक रिस्क, बट टेक रिस्क व्हेन यू हैव ईदर वर्कड हार्ड ऑन दैट टाइप क्वेश्चन टाइप और यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस एंड यू आर वेरी क्लोज टू द करेक्ट आंसर बिकॉज 50% प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, कंसेप्ट नहीं क्लियर थे और इसीलिए इनकरेक्ट हुआ, तो आपको पता है आपको क्या करना अभी, है ना? यू नो द आंसर, राइट? इफ यू नो दीज क्वेश्चन टाइप्स वर रॉन्ग, you know what to do now. What should you do now? If you know that my concepts were not clear, I got this question wrong because strengthening the argument मुझे आता नहीं था या figure of speech मुझे आता नहीं था, तो आपको क्या करना है? आपको concept पे फिर से काम करना है. You have to redo the concept. So revisit the class that happened in your batch. Revisit the recorded video. If you're not an enrolled student, watch the sessions we have taken. But revisit all the concepts where you're getting things wrong. और revisit का टाइम नहीं मिला तो आपको पता है अगले मॉक में मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आऊंगा क्योंकि ये गलत हो रहे हैं मेरे. Right? Both the things work simultaneously. Ma'am, and I attempt all in all sections except in QT. What? All sections? I mean, I don't know. Maybe it works out for you. But everyone don't take any cues from magistrates' actions. Ma'am, मुझे अभी क्वांट्स नहीं आती तो मॉक में सब में सी क्या? आप गए हो तुम? सी अभी कौन मार्क करता है नेगेटिव मार्किंग के पेपर में?
I'm not answering this. Now, you know your correct answers, you know your incorrect answers. I hope you've done an analysis of it. Let's figure out unattempted questions. इसका वीडियो सोल्यूशन आपको जरूर देखना है. आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, बट आपने उसको छोड़ा बिकॉज आप कंफ्यूज्ड थे. You read it, you tried to solve it, but you did not attempt it. Please revisit it. Revisiting the video solution will help you strengthen your, clarify your doubts there. So the next time when you have such questions coming up, the chances are really high that you will get them correct. Because you have solved that question already. It works for every section, every single section. You read that question, you knew a bit about it, but you were not sure, you left it. So, please एक बार उसका video solution फिर से देख लेना. Okay? All righty. ठीक है. आगे चलते हैं. Analysis में और क्या करना है? Sectional time taken. You have to stick to the time you have decided for yourself before you take a mock. If you haven't decided any time for yourself before taking a mock, please do that. Experiment with every mock. See, giving 5 minutes extra to maths, is it helping me score better overall in the mock? Reducing time given to legal, is it helping me score better or score lesser? Figure out. That's what mocks are for. Mocks are for experimenting, but certainly not experimenting with this. है ना? Experiment करो, लेकिन restricted attempts के साथ. Random questions B और C नहीं mark करना. Okay? And अब डिटेल में बात करते हैं इस next 10 minutes. Easy questions. कौन से होते हैं? केडी सर की लैंग्वेज लड्डू क्वेश्चन, मेरी लैंग्वेज सिटर क्वेश्चंस. कौन से होते हैं? लेट्स फिगर आउट द सिटर क्वेश्चंस. इस मॉक में कौन कौन से थे जो आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए थे? वो लड्डू क्वेश्चंस फिगर आउट करते हैं एंड देन लेट्स सी डिड यू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. इफ यू डिड नॉट, यू मेड अ ह्यूज मिस्टेक. नो ब्रेनर क्वेश्चंस, जहां माथा लगाना ही नहीं है, नहीं आता इंग्लिश बिल्कुल, अगर आप पैथेटिक इंग्लिश में, यू आर रियली वीक इन इंग्लिश, yet I will point out 10 questions to you that you would have got correct even without processing the main theme, without knowing what is the agenda of the passage. You would have got those questions absolutely correct. Yeah, low hanging fruit as well. Okay? So you're going to be, we'll be discussing those questions. Supremely easy questions. कौन से टाइप हैं, क्या आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, इस मॉक में कौन से थे जो आपको करने चाहिए थे, अगर आपने छोड़े आपने बहुत बड़ी गलती करी. तो वो सारे बच्चे जो कहते हैं मैम मेरे 10 नंबर भी नहीं आते इंग्लिश में, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, वर्ड्स देखते मेरा दिमाग घूम जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. ठीक है? अच्छा, उसके पहले वी हैव अ 3-day free trial going on our app. So if you still haven't utilized this offer, go ahead and do that. CLAT isn't far off. Do that ASAP. Must do questions. पहला, पढ़ो क्वेश्चन एवरीवन. भूल जा पैसेज किसकी बात कर रहा था. Do you need to read the passage to answer this question? Just forget what the passage spoke about. Tell me, do you need to read the passage to answer this question? Absolutely no. Not needed. I'll tell you the trick. These are contextual vocabulary questions. If there is a word, if there is a phrase, and the meaning of that phrase is asked, or the word is asked, and the phrase is completely unknown to me, what do? Give up? No, I go back, I reread the line. Now the line is already highlighted here. Going by the new textbook, new norms. कितना easy question था ये, बिना पढ़े. Yeah, that was question number 2 from the actual paper. You should have attempted this, your first sitter question. Okay? All right. Next question that you should have attempted. Dekho. Read this question. According to the author, what will be the result of the recent incidents of violence and communalism? Do you think it's a factual question? Can I go back and see where the result of violence and communalism is mentioned? Can I find that out
that's what you've been doing in your entire schooling. When you get RCs, you go back to the passage and you find the answer. That's a direct factual question. So if you were really bad in English, question number 2 that you should have attempted was this. It's a factual question. The last line of the passage said, we will soon forget it. And I keep reiterating, first line पढ़ो, last line पढ़ो, main theme पे ध्यान दो, भूल जाओ. मेन थीम भी नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो भी 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सिटर होते हैं. 24 में से if you find 10 sitter questions that can be attempted even without reading a single line of a passage, that means it's easy for you, very easy for you to score at least a 15. 5 और थोड़ी मेहनत करके तो ले ही आओगे ना, 10 तो मैं ऐसे ही फ्री में दे रही हूं आपको. ओके मैम, जब मॉक करते हैं तब ये सब भूल जाते हैं, तो वही तो एनालिसिस होती है बच्चे. एनालिसिस करते हो खुशी? वही सिखा रही हूं कैसे करनी है एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गलत क्वेश्चन के आंसर देख लिए और कन्विंस हो गए खुद ही कि चलो एक ही जगह बी होना चाहिए था. नो, that's not how your scores increase. See, if you would have been able to identify that, your scores would have increased drastically. Learn to categorize questions into sitter and non-sitter and difficult categories. When you categorize them, you would know how to locate those low-hanging fruit and grab them and have a bite. So that's what analysis is about. Random solving, random mock taking doesn't help. Question number 3 देखते हैं, जो कि sitter question था. गौरी, गलत हुआ था? Everyone, did you get this correct? You know, 2 classes. I'm going to be taking 2 classes on figures of speech. If you still are confused in figures of speech, I'll be taking 2 classes on our YouTube channel. Okay? Make sure you attend that. और अभी तक हमने मेन थीम वगैरह की तो बात ही नहीं करी है. इन्फरेंस क्वेश्चंस बिल्कुल मैंने आउटराइटली रिजेक्ट कर रखे हैं. मतलब 2 दिन की मेहनत है और फिगर्स ऑफ स्पीच आ जाएगा तुमको. और कोई ऐसा फैंसी स्टेटमेंट भी नहीं है कि मैम मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सेंटेंस क्या बोल रहा, मैं फिगर ऑफ स्पीच कैसे निकालूंगा. तो ये लॉजिक भी आपका फेल हो गया. That ma'am, I completely don't understand. It's a very literary statement. It is not. It's a direct statement. And all the options are also cakewalk. I'm sure you've done all of that in your school. If you just try to close your eyes to questions of that sort, then it's a completely different story altogether. Okay? So, please work on figures of speech. Do them. They are very easy and doable and highly scoring. Would take barely a few seconds and you don't even have to read the passage for that. So for example, अगर चार्ल्स डार्विन वाला पैसेज था और उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन होता, मैं पूरा डार्विन का पैसेज नहीं पढ़ती, मैं ये क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ती, क्योंकि मुझे पता था डार्विन, I hate science, I don't like it, I'll be bored by reading it, I'll have to read it twice. इससे बढ़िया छोड़ दो, मैथ्स को दे दो टाइम, मैथ्स में स्कोर बढ़ जाएगा मेरा, मैं बराबर कर लूंगा. So that's what analysis is. Question number 4, that was a sitter question. See that. According to the passage, what is the objective of the restriction? There was one line that said, the objective of the restriction on the export of non-basmati rice is, like you answer questions in your school. Direct and factual question. Yeah? Acha. Okay, so this is my biggest mistake when do analysis. Good that you helped Garima now. Babita says, ma'am, how to choose the correct one from between 2 eliminated options? That always comes with practice. You need to know the type of question, you need to understand the concept, and you need to know how to approach that kind of question. For example, tone का approach different होता है, main theme का approach different होता है, inference का approach different होता है. देखो किस तरीके के question में आप 2 option में confused होते हो. उसके approach पे जाओ, जो हमने क्लास में डिस्कस किया है, उस अप्रोच को फॉलो करो, वो सही होगा. लेकिन ऑब्वियसली उस क्वेश्चन टाइप में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर तुम 2 में भी आ जाते हो ना, तो रिस्क लो, मार्क करके आओ, देखो तुम्हारा गट कितना स्ट्रांग है. अगर 60% एक्यूरेसी से भी मार्क कर पा रहे हो ना, अटेम्प्ट करके आओ वो वाले क्वेश्चंस. एग्जैक्टली. सो दैट्स अगेन
सभी मेटाफर इस मॉक में थे. अच्छा, okay. Okay, it's okay, got it. So, sit question number 4, I think, or 5, I don't remember. Next sit question. What makes India's decision to restrict exports so impactful? Again, a factual question. I'll not talk about that. Okay. Ripple effect. नहीं पता रिपल का मतलब क्या है. मेरी इंग्लिश बहुत खराब है. ठीक है. पैसेज में ना एक लाइन में हाईलाइटेड था रिपल इफेक्ट. आई विल शो यू दैट लाइन. ये रहा. पढ़ो एक बार लाइन, और लाइन पढ़ के ना भूल जाओ इस रिपल इफेक्ट का क्या मतलब होगा. रिपल का क्या मतलब है भूल जाओ. इंग्लिश बहुत खराब है. तो भी क्या ये लाइन पढ़ के रिपल इफेक्ट का मतलब निकाल सकते हो कि नहीं, बताना मुझे एक बार. कैन यू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ रिपल इफेक्ट? Because it's a contextual vocabulary question. The moment the author says it's ripple effect, that means when Vietnam imposed restrictions, what followed was India, Pakistan and Thailand also did it. So one action led to action number 2, led to action number 3, led to action number 4. Is that a ripple effect? Probably that's what the author is talking about. I'll go back to the options and I'll see. It says a series of consequence. Action number 1, action number 2, action number 3. That's ripple effect. मुझे नहीं पता ripple effect क्या है. I'll go back. I'll reread the line. I'll find the answer. Exactly, magistrate. Now you know that. But even if you don't know that, it's a sitter question, my child. Learn to identify those sitter questions. अगला sitter question देखते हैं. ये ना आपको नहीं पता है अभी, भूल जाओ ये कौन से पैसेज पे था क्वेश्चन. ओके. If I have read the passage, look at the options. I hope you've attended my Tone of the Author class either on YouTube or on the app. This is a neutral one. This is a neutral one. This is a neutral one, and this is a negative one. If I know the opinion of the author, or if at all there is an opinion or not, I can eliminate this option. इस पैसेज में कोई ओपिनियन नहीं था, तो ये एलिमिनेट हो गया. अब ये क्वेश्चन आया था उस प्रोफेसर के पैसेज में जहां प्रोफेसर अपनी कहानी सुना रहा है. आपको मैंने thousands of examples दिए. When there is storytelling, it's going to be a narrative or a descriptive passage. And you knew this question was a sitter then. Most of the passages that are fiction and literature based, yes, Gauri, and yes, Shambhavi, ये सोलंकी वाला पैसेज है. yes. तो you knew कि वो नरेटिव ही होगा. वो कहानी सुना रहा है कि वो गर्ल आई, उसने मुझे ये कहा, फिर मैंने उसको भगा दिया. It's story. So either it's going to be descriptive or narrative. Since there's no descriptive, I know my answer. Instruction नहीं दे रहा मुझे. उसका conversation जो woman के साथ था, there's no instruction. Eliminated. We have done this word so many times. Now, if you say, मैम मुझे इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, तो थोड़ी मेहनत तो करोगे ना बैकग्राउंड में. कितनी बार क्लासेस ले लिए. 4 क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, 2 आपके ऐप में अवेलेबल है. मल्टीपल टाइम्स हमको क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करते हैं. If you still are unable to memorize this word, then my child, the only problem is with your intention. The problem is not your language skills. The problem is your intention. Get your intention straight and work on the meaning of the words. Words like these that have been done multiple times over and over again, and you know ऐसे words आएंगे exam में. So if you still aren't doing it, then this is completely your own problem, my child. Next is a question. Which of the following explains the author's meaning in the following line? देखने में लगेगा inference based question है. एक बार ऑप्शन पढ़ना सारे और बताना 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे क्या यहाँ. Can you eliminate 2 options here? That's for people, again, who say, I'm unable to score even 10 in English. Your approach isn't correct, my child. You can. See, अगर क्वेश्चन कह रहे इस लाइन का क्या मतलब है, फ्यूचर को कसीनो से कंपेयर किया है, तो लिटरली कसीनो की बात तो नहीं कर रहा होगा. तो जब लिटरली कसीनो की बात, जैसे आपका फ्यूचर एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ, so literally I am not referring to APJ Abdul Kalam. I'm referring to an achievement he has had in his life. It's not a direct thing that I'm writing. It's an indirect one. Since it's an indirect one, I know it's not literal gambling जिसकी बात कर रहा है वो,
कि कसिनो लिख दिया तो गैम्बलिंग की बात ही कर रहा होगा. That's common sense. If there is an indirect comparison, it cannot be literal options. तो ये तो absolutely eliminate हो गए. अब 2 ऑप्शन बचे. People are taking risky decision in the future or the future of technology is uncertain. So ये आप कॉन्टेक्स्ट पे जाके मार्क कर सकते हो. तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना आपके लिए कितना इजी है. यहाँ मेटाफर है या I'm sorry, Garima. Okay. So, all right. Nonetheless, you know this was a sitter question as well. Inference था, फिर भी sitter था. Options कितने ही simple questions थे. ठीक है. अब again, figure of speech. Future is a casino. Basic words है. ये correct होना चाहिए था आपको. नहीं किया अभी भी figure of speech तो कर लेना. Renan Martin उठाओ. List दी हुई है. Renan Martin थोड़ी सी hardcore हो जाती है because it's more of a literary inclined book. If you want to do it simpler, do it in our classes. Another sitter question. तो अभी तक देखो हमने 10 से ऊपर sitter questions कर लिया. अब आपको realize हो रहा होगा कि मैम मैंने गलती करी. I should have marked these questions. Only and only analysis will help you with that. You should have solved these questions. ठीक है. अगला question. What is the main reason for continuing problems in Indo-China relation? It was a factual question. One line said, the main reason for continuing problem in Indo-China relations is a clear line said this answer. So, also Indo-China passage. आप जीके करने वाले बच्चे, आप क्लैट लिख रहे हो बच्चे, आपको no, Gauri, I mean, I'm not targeting. I hope you know that. I expect a lot out of you, my child. These are simple questions. It is a little difficult, yes. Okay. Okay. So, any more questions? ठीक है. इसमें देखो, you are somebody who is a CLAT aspirant. तुमको इंडो चाइना रिलेशन नहीं पता है ना, तो तुम पेपर तो सर्टेनली नहीं पढ़ रहे हो. और अगर तुमको इंडो चाइना रिलेशन पता है, तुम ये पैसेज जरूर पढ़ते. शायद सारे क्वेश्चन मार्क नहीं करते, बट क्वेश्चन जरूर, पैसेज जरूर पढ़ते. If you are a CLAT aspirant. और अगर जीके भी तुम्हारी बॉटम 2 में आती है और इंग्लिश भी बॉटम 2 में आती है, then probably you need to work a little harder because one of them should be in your top, at least top 3 में तो होना ही चाहिए because scoring है ये sections. एक time less लेता है, दूसरा बहुत ही direct है subject. Okay, so this was a direct question. अच्छा, 1-2 और questions थे. इसके options पढ़ो एक बार. देखना ये एक्सट्रीम इतनी हमने कहानी सुनाई आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस एलिमिनेट करने की. तो अभी तक डू यू रियलाइज वी हैवंट इवन स्पोकन अबाउट मेन थीम क्या है, इन्फर क्या करना है, भाग में जाए हमने. वी डोंट केयर अबाउट दैट. ये तो तब है जब तुमने बिल्कुल पैसेज नहीं पढ़ा है और तुम्हें पता ही नहीं पैसेज किस चीज की बात कर रहा है, तो भी तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके यू कैन कम क्लोज टू 2 ऑप्शंस एट लीस्ट. नाउ considering the fact that you are reading at least 2 to 3 passages carefully out of 5 in roughly 25 minutes. तो carefully पढ़ोगे तो अगर मेन थीम पे काम करते हो, इन्फरेंस पे काम करते हो, तो 3-4 नंबर तो वहां भी ले आओगे. अगर 3 पैसेज को carefully, 15 नंबर का पैसेज हुआ ये. If you're reading 3 passages carefully, that means you are going to be reading at least 15 questions carefully. Out of 15, will you be able to score a 5 with your own मेहनत? इतनी मेहनत तो कर लोगे ना बच्चे. और ये भी नहीं है, again, then the problem is with your own intention, my child. The problem is not language. So the entire purpose of this analysis was not to demean you that you cannot do it. The entire idea is for you to be able to identify that this section and the fear of this section is only and only in my mind. If I know what to attempt and what to leave, if I analyze the paper carefully like I have taught you in the class, and if I strategize a paper before attempting it, I can easily score 15 more marks maybe in one mock overall. यही टेक्निक आप हर सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो. आप 15 नंबर तक इंक्रीज कर सकते हो अपने नेक्स्ट मॉक में. So, apply these techniques that I've discussed with you in the class. Give me a second before I show you the next question.
सिटर 1 एक बार पढ़ना और बताना दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो क्या? कर सकते हो अटेम्प्ट? ओके, ऐप में तो कॉन्वर्सेशन अलग टेंजेंट पे चला गया है। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, मैं बताऊं कैसे? कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट, तो सिनोनिम से तो पता है ये दोनों ही आंसर नहीं होंगे ना, अपोर्टेंट और प्रिक्लूड से निकालना है आंसर। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए, बिल्कुल जीरो है इंग्लिश, तो भी दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सके क्योंकि कॉन्सिक्वेंस का मतलब ही इफेक्ट होता है, इतना तो पता होगा आपको, आई एम श्योर। सो टू ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है, हु केयर्स, स्कोर मैटर करता है ना। Yeah, pretend will be the answer. Literally, if you know the meaning of the word. Even if you don't, you should have left it. You should have attempted it. Okay? Next question. Monster कौन है? नू में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? आई एम श्योर तुम बच्चे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो। तो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो तो ये भी आपको पता होगा इन दोनों एरियाज में क्या हो रहा है। और अगर आपको पता है तो आपको पता है मॉन्स्टर्स किनको बोला गया है। पूरे पैसेज में अगर वायलेंस की बात हो रही है तो जो लोग सो नहीं सकते वो तो मॉन्स्टर होंगे नहीं, है ना? तो आंसर ए तो सर्टेनली नहीं होगा, ये आपको पता है। सोने वाले लोगों को तो मॉन्स्टर नहीं बोलेगा, लिटरली सोने वाले नहीं, फिगरेटिवली सोने वाले लोगों के लिए हो सकता है, बट यहां तो लिटरल मीनिंग है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है या वायलेंस, क्योंकि पूरा पैसेज ही वायलेंस के बारे में था, तो पता है तुम्हें आंसर क्या है? डी। Oh yeah, absolutely, Shambhavi, same here. Refrain from giving your opinion anywhere. Again, another option. So, अब मैं एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी. I hope you've understood. Let's just rush to the end. Let me give you my suggestions. I hope you've understood how to and I hear you. Okay, so I've ended my just a minute. Here it is. Please strategize your mock before you take the next one. Identify the kind of questions you're getting correct, questions you're getting incorrect, unattempted ones, and questions you should have left. Identify them, work on them in the next mock, and make sure that you come and tell me, have you been able to improve your scores in whatever session you attend? Okay? Work on common question types. ये तो basic concept है. ये gradually improve होता है. ये तो करना ही है. Uncalled for है. ठीक है? चूज करना सीखो, कौन सा आर्ट सीख करना है अटेम्प्ट, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये चूज करना सीख जाओ. इतना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप पैसेज करेंगे. ओके, ऑलराइट, ठीक है. सो that's going to be all from my end, guys. I'm going to be transferring the session to Nivedita ma'am. Just make sure that you know what you're doing in your mocks and you plan your next mock accordingly. So thanks, that's going to be all for today, everyone. Transferring the session to Nivedita. पे कुछ देर और रुक जाओ ताकि लीगल एनालिसिस को भी कंप्लीट कर लो. राइट, सो let's not just waste time. There are some things that I don't want to discuss because we have discussed them over and over again. बाकी सारे एनालिसिस जो हमने किए हैं बाकी मॉक्स के, उसमें हम इस चीज को बार बार डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, 2023 में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे हमें पता ही है. ये सारे क्वेश्चंस आए थे, ये सब थीम थी उनकी. क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, illegal aid, internet shutdown, cruelty by husband, family law, workmen's compensation act, national trust for welfare of persons with autism, which is ये तो हमारा मॉक 11 के सेक्शन है. सॉरी, तो नो, ये मॉक 11 का लीगल सेक्शन. दिस मिस्टेक. राइट, तो सीधा एनालिसिस में आते हैं. दिस यू नो द फैक्ट दैट आई एम सो लेट हैज थ्रोन मी आल्सो अ लिटिल बिट. अभी तुम सब ने किया होगा मॉक 11, तो उसमें से जो क्वेश्चन थे दे वर अ वैरायटी. They were not just application based, they were not yes and no. Yes and no के questions कम थे, application based questions थे, right? So you were supposed to infer the principle and apply it in the question. Then critical reasoning के questions भी इस बार mock 11 में थे. और उसके बाद जो one liner होते वो भी थे. तो this was the percentage. Application based questions were about 1963.3%. Then one liner deduction question were about 560.
50% थोड़े से ही आते हैं. Originally also when you face the real exam, one-liner questions aren't that many, right? And then we have critical reasoning questions, 6 marks, sample paper से. नमस्कार guys, thank you so much for being here. Majority left. पता नहीं क्या तुम लोग थक जाते हो एकदम एंड तक, कुछ भी नहीं देखना, राइट? तो द एंटायर एग्जाम इज इम्पोर्टेंट, एवरी सेक्शन इज इम्पोर्टेंट, राइट? सो तुम अगर 2-3 घंटे 4 घंटे बैठ के एनालिसिस नहीं देख सकते तो फिर पेपर कैसे दोगे? पेशेंस चाहिए. एनी हाउ, चलो, आई वोंट टेक इट पर्सनली, आई अंडरस्टैंड. 3 बजे से लगातार चल रहा है एनालिसिस. Critical reasoning, 6 questions, about 20% of the weightage. They were incorporated intentionally because हम देख रहे हैं सैम्पल पेपर्स में कि भाई काफी ज्यादा टिल्ट जा रहा है क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ, राइट? क्या होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस? डिडक्शन के क्वेश्चंस. Which of the following statement is true? What can you conclude? What can you not conclude? Which of the following statement is false? इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग होते हैं. एंड you know, these kinds of questions test your concentration. How focused were you while reading the passage? जब आप पैसेज पढ़ रहे थे तो आपने पैसेज की निटी-ग्रिटीज को ऑब्जर्व किया है? मेरे सेशन के लिए स्पेसिफिकली आया था. दैट इज सो स्वीट ऑफ यू, राइट? तो जब आप पैसेज पढ़ रहे थे तो क्या आपने पैसेज की निटी-ग्रिटीज को ऑब्जर्व किया है? उसमें जो ऑथर कहना चाह रहा था, क्या आपने उस चीज को समझा है? और फिर क्वेश्चन आपसे इमीडिएटली धड़ाक से पूछ लेता है कि भाई इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन सही है, क्या इन्फॉर्मेशन गलत. अब जनरली क्या होता है, दिस थ्रो स्टूडेंट्स ऑफ. क्यों? क्योंकि अब उन्हें ये कंक्लूड करने के लिए कि भाई ये पैसेज में है या नहीं है, ये उन्हें देखने के लिए वापस से पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा और वो काफी सारे सेकंड्स और मिनट्स खराब कर देता है, राइट? यहीं पे अगर आप समझदारी से पैसेज पढ़ते हुए चले, उसे अंडरलाइन करते हुए चले, जैसे कि मैं सिखाती आई हूँ कि हमेशा यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ पैसेज समझ आ जाता है ऑन द फेस ऑफ इट कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, राइट? तो इसी बेस पे अगर आप उसको अंडरलाइन करते चलेंगे तो आपको बस वो अंडरलाइन पोर्शन एक बार हल्का सा देखना होगा एंड यू वुड बी एबल टू अराइव एट योर आंसर, right, without having to read the entire passage all over again, and this would waste a lot of time. रोने वाला इमोजी, ओके. नहीं, वो नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं होता, कोई बात नहीं, पेन से लेकर पढ़ो, आने लगेगा, कंसंट्रेशन भी आने लगेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट आई अज्यूम कि अगर आप इस स्कोर पे हैं, मॉक्स का लगभग सेम ही लेवल होता है, right? Every mock is created keeping an average student in mind. So even mock 11 was not a difficult mock. It was not an easy mock either. I would place it somewhere between, easy and difficult, moderate. तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो बेसिकली कन्वेंशनल पे आ रहे हैं, कन्वेंशनल विथ करंट मिक्स्ड, राइट? तो ये जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस, मैरिज, फॉल्स प्रॉमिस, जिसकी बातें आजकल हो रही है, उस पे पैसेजेस बेस्ड है. तो करंट और कन्वेंशन का मिक्स है. अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं और भले ही वो पैसेज करंट अफेयर से आ गया है, न्यूज़पेपर से आ गया है, किसी ऑथर का एडिटोरियल आ गया है, कोई आर्टिकल आ गया है, तो भी आप उसे पढ़ने में गलती नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है. जो बच्चे क्लास में आर्टिकल 25 पढ़ चुके थे वो सैम्पल पेपर के पैसेज में कंफ्यूज नहीं हुए, उसमें उनकी एक्यूरेसी काफी अच्छी थी. So the entire idea lies around how well prepared are you. So that is the reason why I keep focusing, why I keep emphasizing, do not miss classes. Make sure that you are religiously attending classes. Wherever I am teaching, जो भी information आपको legal में दी जा रही है वो important है और वो कहीं से भी मिल रही है, उसे immediately grab कर लीजिए. अगर आप सेशन भी पूरा नहीं देख सकते तो कम से कम ये देखिए कि सेशन में पढ़ाया क्या गया है और उसे बाद में खुद से पढ़ लीजिए. अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाद में पढ़ सकता हूँ, सेशन देखना शायद मेरा टाइम वेस्ट कर दे या जो भी है, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंट इन एवरीथिंग, यू आर प्रोएक्टिव इन व्हाटएवर इज हैपनिंग. टाइम टेकन इज 35, फिर क्या ही फायदा? अगर टाइम लेकर तो आप सारे ही सही कर देंगे, right? If I give you 1 hour to solve 20 questions, you would be able to solve all 20 correct. But that is not what our goal is. You are not given unlimited time in the exam. So why are you testing yourself against a time limit which is not even available to you? ठीक है, तो जो टाइम आपके पास है ही नहीं उसको क्रॉस करके आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकते,
30 क्वेश्चंस है, मैंने 30 क्वेश्चंस 35 मिनट्स में किए। 2 घंटे का एग्जाम है, 35 मिनट में, 35 मिनट एक ही सेक्शन पे। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा एक अलग सेक्शन है, इंग्लिश का अलग सेक्शन है। क्वांट्स में ज्यादातर बच्चे डरते हैं, कैसे कवर कर पाओगे बाकी सब। 35-40 मिनट एक ही सेक्शन में दे दोगे, बाकी सेक्शंस में तो बहुत घबराहट हो जाएगी, पैनिक बिल्कुल चरम पे पहुंच जाएगा, जो रहा सहा जो आता था वो भी भूल जाओगे, राइट? तो नहीं करना है ये, ठीक? टाइम को मैनेज करना है, और टाइम को मैनेज करने का तरीका ही फोकस है। इफ यू आर फोकस्ड, इफ यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड while reading the passage, you will be able to read the passage quickly, because I have clarified all the concepts. You have been given ample amount of information. There is nothing that can catch you off guard. So utilize that knowledge, read the passages quickly. Okay? Yes. Slide गलत हो गई है। Yes, so this is what you require. ये तो आपको हमेशा से ही बताया गया है। रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल इज समथिंग दैट यू रिक्वायर इन लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग का जो पूरा का पूरा आइडिया है इज नॉट अबाउट हाउ वेल you are, how well do you understand law. Of course, that is the agenda. That is definitely something the consortium tests you upon. But that is not the only thing the consortium is testing you upon. The consortium is testing you upon your presence of mind. How well can you react in a panic-stricken situation? A concept as complicated and dynamic as law, which has multiple principles, multiple interpretations, various essentials, how can you keep all of that in mind within a limited time and solve the question, apply the same principle in the questions and do what is required? ये है actual test. उस limited time में उस complicated passage को, law वाले passage को, उसके principle को, उसके essentials को पढ़ के, ध्यान रख के, apply करके question को correctly solve करना, ये है legal reasoning. ठीक है? आर्टिकल 25 मुझे मुंह जबानी रटा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है अगर आता है, लेकिन ये उतना काम नहीं आएगा जितने की ये एंसिलरी स्किल्स काम आएंगी। रीडिंग स्पीड का अच्छा होना जरूरी है। अगर आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस ठीक करने में आप 50 मिनट लगा लेते हैं, तो फिर आप लीगल रीजनिंग में अच्छे नहीं हैं। इस वहम से बाहर आइए। लीगल रीजनिंग में अगर 30 क्वेश्चंस है तो वो 30 क्वेश्चंस 20 to 22 मिनट्स में हो जाने चाहिए। अगर ये आपका लेवल है तो आप लीगल रीजनिंग में अपने आप को स्ट्रॉन्ग डिक्लेयर कर सकते, ठीक है? वरना नहीं। के बारे में बताइए। लेट्स स्टार्ट विद so yeah, this is the passage on the famous इलाहाबाद जजमेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट जजमेंट में मांगलिक होने की वजह से लड़की से शादी तोड़ दी और लड़की ने बस फिर तमाशा कर दिया, राइट? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कुंडली दिखाओ सर, हम भी देखें तुम मांगलिक हो कि नहीं, एंड दैट इज वेयर द डिबेट स्टार्टेड, राइट? एंड the false promise to marriage is something that even the new BNS, Bharatiya Nyaya Sanhita, is has like it contains a new section, a new offense altogether. But I won't discuss it here. Supreme Court stayed an unusual order of Allahabad High Court asking, क्या है order? Allahabad High Court asked a woman, Lucknow University Astrology Department had to decide if a woman, an alleged rape victim, is Mangalik. That is the reason why the guy did not marry her. What a stupid guy. But the Supreme Court took notice of the issue and judgment from the Allahabad High Court that asked the director of the astrology department to determine whether or not a woman who is an alleged rape victim is Manglik. The woman alleged that the accused had raped her. False promise of marriage tha, theek hai? She was under a misconception that the guy would marry her. They got involved sexually and then he turned her down because she was a Manglik. This is the entire premise of the passage. ये है crux पूरे पैसेज की सार। हाँ, सेडिशन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल पूरी तरह से करता है। The head of the department astrology, Lucknow University, had been issued instructions by the High Court to confirm the Manglik claim during the man's bail hearing on 23rd May. Okay. So promise to marriage, what is the legal position? Promise to marriage basically is something that is not a separate offense, but it is a creation, an interpretation. Section 375 read with section 90 of IPC. So the idea of consent is interpreted along the lines of what
rape is under Indian Penal Code, and then they determine whether the consent was full-fledged, like, you know, a complete yes. And if it is not, then of course activity is without consent, which makes it criminal. When a woman expresses her willingness to engage in a sexual intercourse, go ahead, you know, this is the definition. Isko underline karna hai hame. When a woman expresses her willingness to engage in a sexual intercourse through words, gestures, or any other kind of verbal or non-verbal communication, it is referred to as consent. तो जब उसे repercussions पता है, अपने act के maturity है उसके पास, सब कुछ पता है उसे, और उसके बावजूद भी वो sexually involve हो जाती है, तब तो हम मान लेंगे कि हाँ वो अपनी मर्जी से. Definition को immediately underline करना है. The law further says that a woman who does not physically oppose the act of penetration cannot be seen as consenting to the sexual activity only on the basis of that fact. So surrender and consent are two different things. Just because a woman has surrendered doesn't mean that she has consented also. ये जो derivation है, ये मथुरा rape case के बाद आया था. मथुरा rape case is something that I've discussed in great detail in a Thursday thriller episode. If you guys want, you can watch it. हालांकि वो relevant नहीं है, तो अभी मत देखो. The following situations prevent a woman's permission from being regarded as legal consent. क्या है ये? When she is being threatened by, यहाँ पे following situation prevent, सारी चीजें consent को negate कर देती हैं. अब इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है बहुत. इसमें से questions बनेंगे. When she is being threatened by death or injury to enter into a sexual intercourse, तो अगर वो surrender कर देती है, हाँ कर देती है, it is not consent. When a woman consents to have sexual intercourse with her husband but discovers later that she was actually having sex with someone else, wow. When she is unable to comprehend the nature and repercussions of the act, when she is under the age of 18, when she is unable to express her willingness, she is, you know, inebriated or intoxicated, or she is mentally not right. So in that situation, in all these 5 situations, if a woman say yes, the yes will not be considered a yes. Somehow you managed to mark many questions correctly without reading passage. Well, that might be fatal also. ये बहुत risky task है. ठीक है. Promise to marry cases, consent under a misconception of fact. In case of sexual intercourse on the pretext of false promise of marriage, courts may categorize an otherwise consensual intercourse as rape. अगर ये prove हो जाता है, एक consensual sexual intercourse को भी rape declare किया जा सकता है अगर this following is proved. Let's see what it is. The woman's consent to sexual intercourse is solely based on a promise of marriage. The man had no actual intention of marrying, so there is a deceit word. The promise of marriage was only to induce consent for sexual intercourse. The consent stands nullified. Okay. Section 90 of the IPC provides that consent given under a misconception is no consent. In promise to marry cases, the false promise of marriage is misconception, even though the sexual intercourse was per se consensual, etc. चलो ये हमने समझ ही लिया, आगे बढ़ते हैं फटाफट. The test to see if the sexual intercourse can be deemed rape. Firstly, the promise must have been a false promise, given in bad faith with no intention of adhering to it. Secondly, promise itself must be of immediate relevance. मतलब अगर promise ना होता तो sexual act भी ना होता, or bear a direct nexus to the woman's decision to engage in the act. The first 2 conditions are satisfied, the consent is revoked, and the man is responsible for raping the sort of. Yeah. Let's not get there. I am anyway short of time. I don't want to engage. I mean, I really want to, but I cannot. Let's start with the question. ये application based question है, yes and no. Rahul and Riya were involved in a relationship. Riya engages in sexual intercourse with Rahul, who falsely promises to marry her. Riya's consent to sexual intercourse is solely based on a promise of marriage made by Rahul. Rahul is a jerk. Is the situation considered rape? Is it considered rape? पहले ही हाँ. Obviously, according to the passage, yes, a big yes. तो क्या किया हमने? खत्म no के options. C और D में से चुनिए. Yes, because Riya consented under a misconception of fact. No,
because the promise of marriage was not relevant. No. अच्छा, no की 3 ऑप्शन है, मैंने देखा ही नहीं. So is this situation rape? Yes, it is rape. Obviously. Yes का एक ही ऑप्शन है. इतने आसान क्वेश्चंस अगर आ गए लीगल रीजनिंग में तो क्या होगा, नहीं? मतलब क्या ही बात है, मजे ही आ जाएंगे. C is correct, we know it. Moving on. Rahul and Riya were involved in a relationship. Riya engages in sexual intercourse with Rahul, who falsely promises to marry her. Rahul is not a good guy. However, the promise of marriage was not relevant to Riya's decision to engage in the act. Is this situation considered rape? So direct nexus bear nahi kar raha hai. The second element is not fulfilled, right? The engagement in the act is not bearing any relationship with the promise that is made. So, is this rape? No, it is not rape. तो अब इसके हिसाब से हम B को eliminate कर देते हैं, D को eliminate कर देते हैं. अब A और C में से select कर लेते हैं. No, because the act was consensual and the promise of marriage was not relevant. No, because they are involved in a relationship. Obviously. मैरिज का प्रॉमिस रेलेवेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है. द प्रॉमिस ऑफ मैरिज वॉज नॉट रेलेवेंट, राइट? तो कई बार क्वेश्चन में ही आंसर होता है, क्वेश्चन से ही आंसर निकल आया. प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज नॉट रेलेवेंट इन द सिचुएशन ऑफ रिया एंड राहुल्स रिलेशनशिप बिकॉज it did not matter to her. It did not bear any consequence on her decision. So A is the correct option. Good. किसने आंसर दिया है? A not relevant. Very good. Question number 3. राजू. अब चलो राजू आ गया, शुक्र है. पूरा विलन राहुल ही बना हुआ था बेचारा. Aged 19, Emily 17, first year college students. Raju proposed Emily to be his girlfriend, to which she consented. Raju and Emily were engaged in sexual intercourse with Emily's consent. In the present case, which of the following statement is correct? Mind you, Emily is 18. She is not 18, she is 17. Rahul will be liable for the offense as Emily's consent is not a legal consent. Will he be liable? The question is, will he be liable? Yes, he'll be liable. Again, A, exactly. He will be liable because Emily का consent नहीं है, because she is a minor. इस तरह के रेप को क्या कहते हैं? As per the definition of rape, this is not rape. Right? As per section 379, this is not rape because there is definitely a consent. Consent है, surrender भी नहीं है, लेकिन consent है. But according to the definition of consent, it cannot be regarded as consent. Even though literally it might be consent, but it is not legal consent. And this kind of rape is called statutory rape. इस तरह के रेप को statutory rape कहते हैं. ठीक है, this rape is called statutory rape. Now, while statutory rape is not expressly provided in the Indian Penal Code, but we have an entirely different legislation for punishing this activity, which is POCSO. Very good. Yes, a minor cannot give consent. So, a rape according to law is called statutory rape. Okay. Yes, POCSO में है इसके provisions. Very good. सेक्शन 90 को भी उसके अंदर मतलब कंसेंट को यूज किया जाता है. सेक्शन 90 कंसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्रिमिनल लॉ में. बहुत सारे खेल बिगाड़ देता है ये, सच में. ए सही आंसर था, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही. ये है, देखिए क्या है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंक्लूडेड. ये है सीआर का क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये. ठीक है, और ये लगभग हर पैसेज में मैंने देखा है कि एक आध पैसेज में नहीं है, लेकिन ज्यादातर पैसेज में एक आध दो क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैम्पल पेपर में आ रहे हैं. सैम्पल पेपर 1 में भी थे, सैम्पल पेपर 2 में भी थे, सैम्पल पेपर 3 देखते हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि यस एंड नो और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डोमिनेंट होंगे इस बार पेपर में. तो इनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, राइट? पैसेज को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंक्लूडेड. क्या आंसर दे रहे हो तुम सब? बी. मैं भी बी पढ़ू जरा. Consent given under a misconception of fact is no consent. ये तो conclude किया जा सकता है, तो ये आंसर नहीं. A woman who does not physically oppose the act of penetration can be seen as consenting to the sexual activity only on the basis of that. Yes, this is good.
women. The consent isn't valid. Gauri, there is a difference between consent and surrender. ठीक है, हाँ बोलने में और हथियार डालने में डिफरेंस है. तो एक लड़की ने अगर हथियार डाल दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने हाँ बोल दी, राइट? क्योंकि वो अपोज नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से शामिल हो रही है. ठीक है, लाइक आई सेड, मथुरा रेप केस में इस चीज को, मथुरा रेप केस में नहीं, वो तो बहुत ही बेकार केस लॉ था, क्या ही सोच रहे थे सुप्रीम कोर्ट जजेस. लेकिन उसके बाद जो इंटरप्रिटेशंस निकले हैं, फिर अमेंडमेंट आया, आईपीसी को अमेंड किया गया, पार्लियामेंट ने अमेंड किया, और उसके बाद फिर डेफिनेशन को क्लियर किया कि भाई सरेंडर में और कंसेंट में बहुत अंतर है. हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये अंतर निकाला था, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड नॉट टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन. हॉरेबल केस लॉ. खैर चलो, अगर तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो. बी इज द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following situations prevent a woman's permission from being regarded as legal consent? These are one-liner deductions. Right, let's. Ankit is absolutely right. Not saying no doesn't mean yes. Exactly. So chalo, ye regarded which of the following situation prevent a woman's consent to be regarded as legal consent? When a woman is below the age of 21, this is. When a woman is unable to express her willingness, when a woman consents to have sexual intercourse with her husband, all of the above. ये भी नहीं है, ये भी नहीं. Very good. अच्छा, जल्दी सॉल्व कर लिया तुमने. गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. चलो सेकंड पैसेज पे आ जाते हैं. कंटेम्प्ट पे है ये पैसेज. Recently, Supreme Court of India issued notice to petitioner and the advocate on record in a special leave petition challenging the order of Karnataka High Court. Observed, क्या observed किया है? तुरंत ही मार्क कर लो भाई, क्या observe किया है? The petition contains remarks which are not only derogatory to the Karnataka High Court but also highly contemptuous in nature. In that light, the Supreme Court ordered the petitioner and the AOR to explain why the court should not initiate contempt proceedings against them. Contempt पे case. ओके चलो, किसी ने एओआर ने और किसी पेटिशनर ने कुछ बहुत ही गलत कह दिया कर्नाटका हाई कोर्ट के अगेंस्ट और उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस हो गया. बताओ कि हम तुम पर कंटेम्प्ट क्यों ना शुरू करें. अब कंटेम्प्ट है क्या? सबको पता है कंटेम्प्ट क्या होता है. अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर्स टू एन एक्शन दैट इंटेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट और अ जज और इंटरफेयर्स विद द कोर्स ऑफ जस्टिस और द लॉफुल प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ. कंटेम्प्ट ऑफ लॉ कोर्ट कैन बी सिविल एंड क्रिमिनल. ये हम समझते हैं. इट इज बेसिकली एन एक्शन जिससे कोर्ट की अथॉरिटी या फिर कोर्ट का जो डिग्निटी है वो या तो लो हो जाता है या फिर कोर्स ऑफ जस्टिस में किस तरह का इंटरफेरेंस है या लॉफुल प्रोसेस में किस तरह का. ये कंटेम्प्ट है जनरल. अब सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट आई थिंक इसमें डिफाइंड है. विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और एन एफिडेविट और अंडरटेकिंग submitted before a court is called as civil contempt. Basically कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया है या कोई जजमेंट आया है या फिर कोई डायरेक्शन आया है और उसे फॉलो नहीं किया गया है तो वो सिविल कंटेम्प्ट है. और कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट के लिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी लायबल ठहरा सकती है. ओके. ऑन द अदर हैंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट थोड़ा सा वेग है. क्रिमिनल कंटेम्प्ट कंस्टिट्यूट्स एनी एक्शन और अटेम्प्ट व्हिच स्कैंडलाइजेस. अब इसका क्या मतलब है पता नहीं, मतलब लिटरली तो इसका बहुत सारे मीनिंग्स हैं. Scandalizes or lowers the authority of a court or interferes with the proceedings of a court or tribunal or obstructs the administration of justice in another. तो बेसिकली कोर्ट को अगर आप अपना काम करने से रोकते हैं या फिर कोर्ट को स्कैंडलाइज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो अगर तुमने देखी होगी गोविंदा की मूवी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, तो उस मूवी में गोविंदा क्या है, ट्रायल में इन द मिडल ऑफ द ट्रायल he puts fire to his sleeves and he runs. And the man who is claiming himself to be of a very weak physique climbs the, the Katghara
and then he runs to save himself. और फिर वो वहाँ प्रूव कर देता है, देखिए माय लॉर्ड ये तो कह रहे थे दीवार नहीं फलांग सकते, तो फलांग गए और इन्होंने खुद को बचा लिया, और ये मैं तो कह ही रहा था, और ये और वो। तो ऐसी सी हरकतें। और या फिर आप दामिनी भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे सनी देओल जो है वो कोर्ट में जज की बेइज्जती कर रहा है, तारीख पे तारीख एंड दिस एंड दैट। तो यहाँ पे मतलब सोचने वाली बात है। लेट्स से कि मैं कुछ सोच रही हूँ, सुन रही हूँ, सडनली एक लॉयर आके माय लॉर्ड आप मेरी बात नहीं सुन रहे, चौंक गई मैं। This is not scandalizing. Basically, anything that, you know, a judge cannot really believe is happening, that might be something that scandalizes the court. कुछ भी हो सकता है. Scandalizing is not defined. It is left to the interpretation. Completely. आप decide करिए कि आपको क्या scandalize करता है. किसी चीज को भी scandalizing declare किया जा सकता है. इस पे काफी सारे सवाल भी उठे हैं कि भाई कोर्ट अपनी कन्वीनियंस में, अपनी ईगो में इसको मिसइंटरप्रेट कर सकता है, मिसयूज कर सकता है. तो बात वही आती है, तो अगर कर सकते हैं तो anyhow, so yeah, lowers the authority of the court, तो समझ आता ही है. Interferes with the proceedings of the court, right, or obstructs the administration of justice in any manner. बहुत सारे examples हो सकते हैं इसके, right, जैसे कि let's say that there is a, if you have seen बाटला, मेरे पास movies के example क्यों आ रहे हैं इतने सारे. बाटला हाउस अगर तुमने देखी हो, तो बाटला हाउस में there is this Muslim guy who's actually a terrorist. Right, the Delhi police has evidence against him, but in a media trial, he has been declared innocent. They're trying to portray that, you know, the police, the Delhi police and the administration intentionally targets youth, young Muslims in order to increase cases and to terrorize an entire community. Right, so let's say that there is a huge crowd outside the court who are not letting the criminal enter the court because that is the day of final judgment. और वो नहीं कि हम एंटर नहीं करने देंगे, वी आर विद दिस पर्सन एंड वी सपोर्ट हिम, एंड बस हमने तय कर दिया कि इनोसेंट. तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को रोका जा रहा है. ये सारे लोग क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए लायबल हैं. दिस माइट बी एन एग्जाम्पल. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस कैन ओनली बी एन एग्जाम्पल, बट ये आपको बस समझाने के लिए है. इन केस यू डिडंट अंडरस्टैंड, कंटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली बिल्कुल रिसेंटली अगस्त में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट की है कि आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ले डाउन करिए डिपार्टमेंट्स को या फिर ऑफिसर्स को या फिर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को कोर्ट में समन करने के लिए, स्पेशली वो जो कंटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाते हैं. तो इसीलिए कंटेम्प्ट इम्पॉर्टेंट है. मैंने कल ही पढ़ाया था यूट्यूब पे, तुम में से आधे लोगों ने नहीं पढ़ा है, देख लेना उसे, इम्पॉर्टेंट है. Is a lawyer responsible for any contemptuous remarks in the petition? Petitions present the grievances, justifications of a person of approaching the court. Petition मतलब जब petition जो केस फाइल हो रहा है, अगर उसमें कुछ ऐसा लिख दिया है तो क्या वो भी contemptuous हो सकता है? That is the question. The role of the advocate is to plead on behalf of such a person upon their instructions. So one may believe that any contemptuous clauses in a petition should not implicate an advocate. However, in 1955, the Supreme Court in the case of 𝗟𝗏 and another versus the Honorable Judges of the High Court of Nagpur and others held that a lawyer is guilty of contempt even if they sign a petition which contains any derogatory remarks. In fact, according to the Bar Council of India rules, showing disrespect towards a court is an important duty of an advocate. तो अगर वकालतनामे पे या किसी petition पे भी तुमने साइन कर दिया है जिसमें कोर्ट के अगेंस्ट कुछ भी लिखा हुआ है, liable हो, the advocate that is. Why is the Supreme Court considering initiating contempt proceedings? Current case involves an appeal against the decision of a High Court of Karnataka where the court dismissed a challenge to the selection of the Chief Information Commissioner and other information commissioners by the state of Karnataka. The High Court had also imposed costs on the petitioner. The petition before the Supreme Court implied that the Karnataka High Court showed favoritism towards the respondent and had ulterior purposes in imposing costs. These are some very serious allegations against the court of law. मतलब उसने साफ इस बेसिस पे चैलेंज कर दिया कि इसमें रिश्वत ली गई है, फेवरेटिज्म दिखाया है, राइट? तो ये बहुत सीरियस एलिगेशंस है विदाउट एनी adequate grounds or sufficient proof, and that amounts to criminal contempt. तो पूरी petition contemptuous है because it is, you know, it is not being challenged on the ground that, you know, the judgment is not accurate and we are not satisfied, we have a right to appeal and this and that. और इसको इसलिए चैलेंज कर दिया गया है क्योंकि ये तो
मिले हैं, ये मिले हुए हैं, ये सारे सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमारे अगेंस्ट जजमेंट जानबूझ के दिया गया है। ओके, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? A doctor was liable to contempt of court whose license was cancelled. Okay. चलो पढ़ ले question. Can you all see the question? Should I move to another side or something? Is it okay? सब जगह ओपनली ले लेते हैं, डरता कौन है? Aggrieved by the decision of the High Court. हमें ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, कंटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, अभी तुम लोगों के एग्जाम भी नहीं हुआ और कंटेम्प्ट में अंदर चले जाओगे। डू नॉट से स्कैंडलस मटेरियल हियर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैपेंस। एवरीबडी सेज डी। The petition was signed by Sumit, was presented before the Honorable Supreme Court in the present case. Which of this following statement is correct? You're saying D is correct. मैं भी पढ़ लूँ जरा। Without any material proof adequate, okay, Mukesh will be liable without any material. It is given in the passage. Doable. Yes, it's pretty doable. It's correct answer. Very good. सही बोला तुम लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर है डी। लीगल रीजनिंग में तेज तो हैं आप लोग। You guys are pretty sharp when it comes to legal reasoning. मुझे इतनी टेंशन नहीं है तुम लोगों को लेके। You know, I'm pretty confident about you guys. कि legal reasoning में तो you're definitely going to perform well. It's CR and maths that I'm concerned about. That is where you might, you know, make mistakes. Which of the following will not constitute a criminal contempt of court? Now, these are one-liner questions. Okay? Willful disobedience of an order of a court. Criminal contempt की बात हो रही है. Which of the following will not constitute a criminal contempt of court? ये तो civil है, right? पहले से ही civil है. मैं तो इसे मार्क कर दे रही हूँ बिना सारों को पढ़े हुए. Save on the time. Willful disobedience of an order of a court is civil contempt. So yeah, this is not criminal. This is civil. बाकी सब criminal ही होगा, I'm assuming. ये रिस्क कभी कभी लिया जा सकता है, राइट? समटाइम्स यू कैन टेक द रिस्क। पेरीफेरी पे आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। एक ऑप्शन एकदम से स्ट्राइक करता है कि ये ही सही है, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव कुछ दे नहीं रखा, तो ऑब्वियसली यही सही होगा। इमीडिएटली मार्क कर दो उसको, राइट? टाइम सेव हो जाएगा। Which of the following case law the Supreme Court held that a lawyer is guilty of contempt of court even if they sign a petition in which contains any derogatory mark? बहुत ही आसान है ये तो, बहुत ही ज्यादा आसान। हमने पढ़ा ही था अभी, राइट? ये है वन लाइनर। ये टेस्ट कर दे कि तुमने पैसेज को कितने ध्यान से पढ़ लिया भाई, क्योंकि पैसेज में केस का नाम लिखा हुआ है। ये क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, लेकिन ये अगर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फोकस को चेक करने के लिए आते हैं। अगर बच्चे ने अफरा तफरी में घास काट दी और पैसेज को ठीक से नहीं पढ़ा है तो उसे लगेगा अरे ये केस तो मुझे याद ही नहीं, और वो ये भूल जाएगा कि पैसेज में ही दे रखा है केस का नाम भाई, राइट? तो इसीलिए अंडरलाइन करते हुए पढ़ो, कुछ नहीं भूलोगे तुम, और क्वेश्चन भी सही होंगे। ओके, now we have question number 9. Aman filed a suit for compensation against Hitesh in court of contempt jurisdiction. Court passed a decree in favor of Aman and ordered Hitesh to pay a sum of 1 lakh to अरमान। है अरमान कहाँ से आ गया? अच्छा अरमान ही है ये। ओ, Hitesh willfully disobeys the order of the court. Will he be liable for the contempt? बताइए जी। Yes, it will amount to criminal contempt. Yes, it will amount to civil contempt. Yes, it will amount to civil and criminal. No, it will not amount to the contempt. What do you think? Civil contempt, very easy. Exactly. कुछ ज्यादा easy है। Moderate भी क्यों ही रख रही हूँ मैं इसे? तुम लोगों को समझ आते हैं पैसेज, जनरली बच्चे जो होते हैं वो नहीं समझ पाते, उनके लिए ये भी डिफिकल्ट। इजी कहना मतलब ये मेरे लिए इजी है, और कुछ बच्चे जो बहुत तेज हैं उनके लिए इजी है, बट सबके लिए इजी नहीं है। Which of the following statement can be concluded from the information given in the passage? क्या conclude किया जा सकता है? Contempt of court refers to an action that intends to lower the authority of a court or a judge or interferes with the course of justice or the lawful process of any court. This can be inferred. Contempt is of 3 kinds. This cannot be. तो बस एक ही सही है। 1 exactly. 1 is correct. Very good.
कितनी देर में कर लिया हमने 10 क्वेश्चंस? अगर पैसेज के, जो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ पैसेज, इसको मैं काउंट ना करूं तो क्वेश्चंस हमने जल्दी कर लिए। तो तुम अकेले में इतना टाइम क्यों ले लेते हो भाई? डोंट डू दैट. If you have an ability of solving these questions quickly, why are you not utilizing it? चलो, हाँ, Indian Contract Act, my favorite subject. The law relating to contract governed by Indian Contract Act. However, the contract does not purport to codify the entire law relating to contract, because there are some things which are given only to throw you off. There are some unnecessary details given in the passage. You don't have to, ponder on them too much. Just underline what is important and move on. Specifically preserves any usage, custom or trade, incident, contract, not consistent, etc. लेकिन तुम मेरी तरह भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है? मुझे लगभग कंसेप्ट्स आते हैं, तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकती हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा पैसेज. Law of contract confines itself to the enforcement of voluntarily created civil obligations, is not able to take care of the whole range of agreements. Many agreements remain outside the purview because they do not fill the requirement. A contract, अच्छा अब आ गया, अच्छा इतनी सारी लाइंस के बाद अब कुछ काम का शुरू हुआ. Contract is an agreement. Agreement is a promise. Promise is an accepted proposal. Every agreement is the result of a proposed form of one side and its acceptance by the other. Agreement is regarded as a contract when it is enforceable by law. Section 10 deals with the capability. Conditions of enforceability. According to this section, agreement is contract if it is made for some consideration between parties who are competent, consent for a lawful object. We have read it a million times. You don't like contract related questions? Really? Okay. Even if you don't like them, you still have to solve them. ठीक है? तो बस क्योंकि तुम्हें अच्छे नहीं लगते तो ये मत, ये तो मुझे पसंद नहीं है और छोड़ दिया, ये मत करना. ये मत करो पसंद, पर सॉल्व कर लेना, राइट? क्योंकि नंबर है उसमें, 5 नंबर आ सकते हैं. You got 2 questions wrong in this passage. That's okay. Let's see if you get them right this time. Because you were disinterested. You try solving them. मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम करोगे तो तुम सही कर लोगे. No overthinking. Passage में बिल्कुल overthink नहीं करना. Like I said, okay, go with the flow. Passage के साथ साथ चलते रहो बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं. Okay. The knowledge is only so that you can understand what is given in the passage. You cannot apply that knowledge in the questions. No. You would apply the knowledge given in the passage. And the passage and your knowledge will help you decipher the passage. ये है रोल आपकी knowledge का. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपनी नॉलेज या अपने दिमाग को नहीं इस्तेमाल करेंगे, पैसेज को इस्तेमाल करेंगे. चलो पढ़ लेते हैं. void agreement is an agreement that doesn't exist at all. पढ़ाइए हमने. Law cannot enforce any legal obligation to either party, especially the disappointed party, because they are not entitled to any protective laws such as so far as contracts are concerned. An agreement to carry out an illegal act is an example of a void agreement. As per section 2G, an agreement not enforceable by law is void. As per section 2J, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Frustration कहते हैं. A contract can also be void due to the impossibility of its performance. Like I said, एक ही बात है. Where both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to agreement, the agreement is void. Yeah, bilateral mistake essential in nature. Every agreement by which anyone is restrained from exercising a legal profession or trade is void according to section 27 of the Act. The one exception mentioned in the proviso is that relating to the sale of goodwill. Know that goodwill is an exception. Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void. It is a necessary requirement that an agreement, in order to be binding, must be sufficiently definite to enable the court to give it a practical meaning. Basically, it has to be clear. Yeah, we have discussed all of it in the classes. Good one. चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं.
Aashi and Ankit were married in 2020. 2021, Ankit discovered the fact that his wife. Grammar. His wife Aashi is involved in an affair with Vikrant Ho. Ankit contacted 𝗟𝗲𝗴𝗪 to kill Vikrant, and in the exchange he promised a sum of 10 lakh. Decide the validity. बताइए. Was this a question that you attempted incorrectly? It's very easy. जल्दी से बताओ इसका आंसर. Khushi is the first to answer. What about the rest? Shambhavi, I want your answer. B should be the answer. B is the answer. The agreement is void. Why? Can somebody tell me the reason? क्यों है agreement void? जल्दी से. You made a mistake in this. Seriously? ये क्वेश्चन गलत कर दिया तो ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का. यार क्या बात है, ऐसे नहीं करना है. डोंट डू दैट. नो, ओवरथिंक नहीं करो. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था. इट इज जस्ट एन एग्जाम. टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी. Illegal object. Very good. So your reasoning is correct. You knew the answer. Despite that, you attempted it wrong. I do not expect this from you. Don't do it. Illegal object की वजह से ये agreement void है. Very good. चलो, Abhishek and Virat entered into an agreement where Abhishek agreed to sell his black car to Virat for a sum of 10 lakh. Virat was under the impression that Abhishek is selling his black Audi A6. Abhishek intended to sell his Virat was under the impression that Abhishek is selling his black Audi A6. Abhishek intended to sell his black Honda City. Such a major difference. अरे क्या बात है. Determine the validity. बताइए जी. बहुत ही आसान है. It's a bilateral mistake, right? It is a bilateral mistake relating to the subject matter of the contract. So obviously subject matter to an agreement is essential to the agreement. तो सब subject matter को लेकर ही गलती है. So yes, it is void. To exactly. It is not due. It is not ambiguity. Might be it is due to mistake. Bilateral mistake की वजह से ये void है. Ambiguity भी कह सकते हैं. Ambiguity थोड़ा और अलग example होता है उसका. बट ये मिस्टेक है. दिस इज नॉट एम्बिग्यूटी. दिस इज नॉट अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी थोड़ी अलग चीज है. ये मिस्टेक है. अनसर्टेनिटी जैसे अगर तुम मुझे अपनी गाड़ी 10,000 में बेच दो, मैं तुम्हें 5,000 और एक्स्ट्रा दूंगा अगर तुम्हारी गाड़ी लकी निकली तो. अभी इस लकी वर्ड का क्या मतलब है, राइट? अभी व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन लकी? लकी मेरे लिए कुछ और हो सकता है, सामने वाले के लिए कुछ और हो सकता है. ये है एम्बिग्यूटी का एग्जाम्पल. ये मिस्टेक का एग्जाम्पल. Question number 13. Which of the following statement is correct? This is सभी CR के question है. Which of the following statement is correct in relation to the information given in the passage? Correct की बात कर रहा है. Correct. कुछ भी करना प्लीज ये क्वेश्चन गलत मत करना. एग्जाम में ये सबसे ज्यादा गलत हो जाते हैं और इनकी गलत होने की बहुत ही रीजनेबल सी परेशानी है. वेग नहीं हुआ ना बच्चे. ये वाला एग्जाम्पल वेग का नहीं है. अभी मैंने तुम्हें समझा दिया. नहीं समझे तो रिवाइंड कर लो, वापस से सुन लो. ये मिस्टेक है, राइट? अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तुमसे पूछ लिया वेग है या मिस्टेक है, तो वेग मत मार्क कर देना. मिस्टेक है ये, वेग नहीं है ये. हाँ, correct. Sorry. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Correct. Contract can be void due to the impossibility of its performance. ये भी सही है. Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession or trade or a business of any kind to that extent is void. ये भी सही है. सभी सही है. जैसे ही all of the above या none of the above होता है, आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है, सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ते हैं. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14. अरुणेश अग्रीज टू सेल ब्रिजेश 100 tons ऑफ ऑयल. ये है एम्बिग्यूटी. कौन सा ऑयल? 50,000 तरह के तेल आते हैं आजकल के. बादाम का तेल है, एवोकाडो का भी तेल आता है. बताइए, राइट? तो
ये ambiguity, this is ambiguity, ये mistake नहीं है यहाँ पे. अब oil defined नहीं है. What oil, what kind of oil, समझ रहे हो? Karunesh agrees to sell Bridges 100 tons of oil. There is nothing whatsoever to show what kind of oil was intended. The agreement is what? The agreement is void. ठीक है, अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा तेल मांग रहा है अरुणेश ब्रिजेश. आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following statement is not correct in relation to the information in the passage? कौन सी information correct नहीं है? The Indian Contract Act purports to codify the entire law relating to contract. ये तो गलत है, not correct. Indian Contract Act does not codify the entire law of contracts. Right. बाकी भी देख लेते हैं. Law of contract confines itself to the enforcement and of voluntarily created civil obligation. ये correct है, तो ये आंसर नहीं हो सकता. काटा. ये भी आंसर इस वजह से नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता. ए ही हुआ बस. राइट. मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया बट आप अपने पैसेजेस पढ़े. इस Sorry, is that a question? Is that a question? बता देना मुझे. चलो. Recently, Delhi High Court directed the medical superintendent of LNJP Hospital to not disclose identity of a 14-year-old who is seeking termination of her 11-week pregnancy. Court directed the concerned SHO to ensure that the identity of a minor or her family is not disclosed during the process of investigation. चलो अभी recent judgment आया है Supreme Court का, which has extended the benefits of MTP, Medical Termination of Pregnancy Act, to minors who engage in consensual sexual activity by exempting doctors from disclosing their identity to local police. The top court had included unmarried women for abortion under 24 weeks under the MTP. पहले तो saying limiting the provision to cover only married women will render it discriminatory, violative of Article 14. तो इसलिए अब unmarried ladies भी हैं और अब बच्चे भी. अभी आ गया MTP, तो होता ही जा रहा है डेवलप. MTP इम्पोर्टेंट है इस टाइम के लिए. चलो करके देख लेते हैं. मैंने सॉल्व नहीं किया ये पैसेज, अभी फ्रेश करूंगी मैं आपके साथ सॉल्व. It is also held that the meaning of the word sexual assault or rape under the rules of MTP includes a husband's acts of sexual assault or rape committed on his wife. मुझे याद है कि मैंने ये कर रखा है passage. I have done this passage with you on the passage practice thing. Article 21 से directly relate करता है. जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पहली बार मैरिटल रेप को भी कोडिफाई करने के लिए एक वो रखा है, गाइडलाइन रखा है कि मैरिटल रेप भी होना चाहिए. The Apex Court observed that to ensure the benefit of Rule 3B Clause B is extended to all women aged below 18 to engage in consensual sexual activity, it is necessary to harmoniously read both the POCSO and the MTP for the limited purpose of providing medical termination of pregnancy in terms of MTP. Clarified that RMP only on request of the minor and the guardian of the minor need not disclose the identity and other personal detail of the minor information provided under section 19(1) local police. Then said. Okay. Section 19 clause 1 provides mandatory reporting of child sexual offences special juvenile police unit, लेकिन identity disclose करना जरूरी. Provided a safeguard to the minors by exempting the RMPs from it disclosing the identity of the minor in legal proceedings emanating under the POCSO law. The bench said that such an interpretation of the MTP would prevent any conflict with the statutory obligation of the RMP to mandatorily report the offence and the POCSO and the rights of privacy and reproductive autonomy of a minor under Article 2. अच्छा judgment. The top court said that it could not possibly be the legislature's intent to deprive minors of safe abortions.
क्लास है 7 बजे, अब क्या कर सकते हैं? क्लास कर लो भाई, इसे बाद में देख लेना, मुझे तो पूरा करना ही है. Rule 3B includes minors within the category of women who may terminate their pregnancy up to 24 weeks. They have been included in the list of special categories of women because adolescents who engage in consensual sexual activity may be unaware that sexual intercourse often results in pregnancy or be unable to identify the signs of pregnancy. The bench added that the POCSO is gender neutral and criminalizes sexual activity by those below the age of 18. चलो ठीक है, पढ़ लिया इसको. Questions कर लेते हैं. We have 15 more questions to go, so I think this is the third last paragraph. Passage इसके बाद 2 और passages. Okay. Renuka, a 16-year-old girl who's pregnant, wants to terminate her pregnancy, approaches a doctor for the procedure. Renuka and her guardian requested the registered medical practitioner, यही है RMP, not to disclose her identity. Is the RMP bound to disclose her identity to the local police? अभी पढ़ा हमने. Just read it. The answer is C. Exactly. Very good. This is the answer. Question number 17. Which of the following statement can be concluded in relation to the information provided? Can be concluded. Rights of privacy and reproductive autonomy of a minor is a fundamental right. बिल्कुल सही. Can be concluded. Right of privacy is a moral right. Statutory right is a fundamental. These are easy questions. Very easy questions. A is correct. Very good. 18. What is the purpose of harmoniously reading the POCSO Act and the MTP Act can be concluded from the information in the passage? That can be concluded. Purpose क्या है भाई? इनको harmoniously read करने का, जो passage से समझ आ रहा है. To ensure that minors engaging in consensual activity can access safe abortions. To establish a statutory obligation of RMPs to report child sexual offence. Limit disclosure of identity and personal details of women seeking termination. To extend the benefit of the MTP Act to married women. बताइए भाई. You're saying A is the correct answer of this? A, you're saying A, seriously? Minors engaging in sexual activity can access safe abortions? You got this wrong. It is A. साफ passage में लिखा हुआ है. मैं तो confuse कर रही थी बस. This is given in the passage. तो कितना easy है ये? So clearly given in the passage. Line by line. शब्दशः. A सही है. कई बार passage में ही होता है सब कुछ. Passage में ही है सब कुछ. ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बस. ठीक है. Question number 19. Romila, a 17-year-old girl is 23 weeks pregnant as a result of child sexual abuse. She seeks to terminate her pregnancy, visited X city hospital for the same. Is the doctor bound to disclose her identity to the local police? Identity की बात हो रही है. She seeks to terminate her pregnancy. Guardian तो है ही नहीं. POCSO Act. Yes. POCSO requires a mandatory reporting of child sexual abuse. Actually ये question अगर देखा जाए तो गलत है. बात यहाँ identity की हो रही है. Identity. Disclosure of identity. It is not the disclosure of the offense. ये question ही गलत है. ये option ही गलत है. मतलब क्वेश्चन कुछ और है और ऑप्शंस कुछ और हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या डॉक्टर बाउंड है आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए? बिल्कुल बाउंड नहीं है. अगर माइनर मना कर देती है तो नहीं है. जो डॉक्टर बाउंड है क्रिमिनल ऑफेंस को रिपोर्ट करने के लिए कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, किसके साथ हुआ है, क्या नाम था उस लड़की का, कहाँ से आई है, ये सब नहीं बताना उसको. राइट. तो ये क्वेश्चन सही नहीं है. बट अगला अगर तुम लोगों ने डी मार्क किया है तो चलो नंबर तो मिल ही गए होंगे. Anyhow, I declare this question as wrong.
Question number 20. Which of the following statements cannot be concluded from the information? POCSO Act is a gender-neutral legislation. Can be concluded, not the answer. Meaning of the word sexual assault or rape under the rules of MTP does not include a husband's act of sexual assault or rape committed on his wife. Can this be? अरे पैसेज में है लेकिन क्वेश्चन कुछ और है ना भाई. चलो मैं समझा देती हूँ. क्वेश्चन पढ़ो. इज द डॉक्टर बाउंड टू डिस्क्लोज हर आइडेंटिटी टू द पुलिस? और ऑप्शन पढ़ो. क्या करेक्ट ऑप्शन और क्वेश्चन मैच कर रहे हैं? ध्यान से पढ़िए. मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन भी नहीं. पढ़ो और मुझे बताओ. क्वेश्चन गलत हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन गलत होने पर नंबर मिल जाएंगे, आपके गलत होने पर नंबर नहीं मिलेंगे. मोस्ट क्लोज जैसी कोई चीज नहीं होती. दिस इज रॉन्ग. ये क्वेश्चन नहीं है. इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है. मतलब जो ऑप्शन दे रखा है वो नहीं है. बेसिकली क्वेश्चन कंसोर्शियम ने नहीं दिया है. मैं बता रही हूँ, बनाने वाले से भी गलती हो जाती है. अगर तुम लोगों ने डी मार्क करके सही ऑप्शन अवेल कर लिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. ऐसी मिस्टेक्स कंसोर्शियम में बहुत कम होती, राइट? तो ध्यान से पढ़िए कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. क्योंकि क्वेश्चन का आंसर, जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू यू नहीं होगा. You have to answer what the question is asking. This is not what the question is asking, but nevertheless, okay, this is wrong because it was wrongly created. Concentration की कमी से बन गया है question. हो जाता है ऐसा, not a big deal. Now, POCSO, the meanings of word, okay, limiting the provision of MTP to cover only married women will render it discriminatory and violative of Article 14. इसको conclude किया जा सकता है, तो ये भी सही. Correct answer is everyone. B आंसर बताया था तुमने. क्या आंसर है? डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा है कि does include the husband's act also, right? So क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. B is the correct option as per the passage. Now the second last passage. Let's quickly read it. I know you guys are really tired. General rule to the contract having an intention towards fulfillment of their part in case of a breach. The party breaching is liable to compensate for the same, but an exception to this said rule is provided in section 56 of the Contract Act. क्या डील करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. सेक्शन 56 deals with the doctrine of frustration as being acts that cannot be performed. Under this doctrine, a promise is relieved of promisor, is relieved of any liability under a contract. The event of breach of contract and the contract will be deemed to the void is based on less non-cogit ad impossibilia. कुछ हुआ? Looks like a spell, doesn't it? जब भी मैं ये लैटिन के फ्रेजेस पढ़ती हूँ मुझे लगता है कुछ होगा, हैरी पॉटर की तरह. होता कुछ नहीं. He is actually very cool. Less non-cogit ad impossibilia is what the doctrine of frustration is based upon. The condition necessary for the application of section 56, there exists a valid and subsisting contract between the parties. Okay. Existence of a valid contract is the foremost application of section 56. मतलब contract बिल्कुल valid था. Is valid contract, you understand what a valid contract is, right? An agreement enforceable by law. Entered in between the competent parties, जिसमें consideration भी है, object भी legal है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो agreement को contract बनने से रोके. This is the first condition. The second one is there must be some part of the contract which is yet to be performed. Section 56 will only have an applicability अगर कुछ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस में रह गया, मतलब आधा ही परफॉर्म हुआ है या कुछ परसेंटेज ही परफॉर्म हुआ है, बाकी नहीं परफॉर्म हुआ. Some part of the contract is yet to be performed and without performing it, the ultimate purpose is
not fulfilled. Okay, this is the second condition. Third is the contract after it is entered into becomes impossible. The impossibility of performance. An important condition is that the contract after being entered into has become impossible to perform, cannot be performed. Therefore stands void. Moving on. Generally, frustration can be in the following cases. Death or incapacity of the parties, where a party to the contract has died after entering into contract. Robinson versus Davison. Frustration by virtue of legislation, कोई नया law आ गया और जो activity legal थी वो illegal हो गई. Law promulgated after the contract is made makes performance of the agreement impossible. तो agreement भी contract भी void हो जाता है. गलत लिखा हुआ है. रोजान मियान वर्सेस ताहिरा बेगम. जैसे पहले फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग पॉपी या अफीम उगाना लीगल था और प्राइवेटली किया जा सकता था, लेकिन बाद में फिर पूरी तरह से गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली ये एक्टिविटी. तो अभी अफीम बिना लाइसेंस के नहीं उगाई जा सकती. तो जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने नया लेजिस्लेशन क्रिएट कर दिया. फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. दिस पर्टिकुलर सिचुएशन केसेस वेयर देयर वाज नो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी परफॉर्म किया नहीं जा सकता. जैसे कि पैंडेमिक, राइट. तो पैंडेमिक में ऐसा नहीं है कि लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, कर तो सकते थे, लेकिन पैंडेमिक ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि वो चाह के भी नहीं कर सकते. राइट. ओपीएम, यस, अफीम, एग्जैक्टली. So these are the three conditions given where the doctrine of frustration can apply. Moving to the questions. What does the maxim less cogit ad impossibilia mean? The law will not compel a man to do what he cannot possibly do. Law must be based on principle of natural justice. No man is bigger than the law of the land. Nothing is impossible for law. सोचने वाली बात है. Doctrine of frustration की बात हो रही है और इस मैक्सिम पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बेस्ड है. हमें पता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है, तो उसके बेसिस पर उस मैक्सिम का क्या मीनिंग निकल सकता है? एक ही निकल सकता है. वेरी गुड. लॉ विल नॉट कंपेल अ मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट डू. जो हो ही नहीं सकता उसे कैसे कंपेल किया जा सकता है? राइट. वेरी गुड. ए इज करेक्ट. इस तरह से निकलते हैं मैक्सिम्स की मीनिंग. क्लैट में अगर मैक्सिम पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा और पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिम का मीनिंग निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आपको पैसेज का प्रेमाइस क्लियर है. ठीक है. Rose, a citizen of India, entered into a contract with Tulip, a citizen of Pakistan, for the export of 2,000 cosmetic products. After the delivery of 1,000 products, war is declared between the countries, thereby suspending all transactions with each other by the governments. Decide the validity of the contract. Contract फ्रस्ट्रेट हुआ या नहीं? पहले तो फ्रस्ट्रेट हो ही गया है, तो बी और सी नहीं हो सकता. डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया. देयर हैज बीन अ चेंज इन सर्कमस्टेंस, राइट. वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है. कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. वेरी गुड. कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज इट इज हार्ड टू बी परफॉर्म दो नॉट इम्पॉसिबल. इससे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं होता. If you understand the meaning of frustration, doctrine of frustration applies on the principle of impossibility, not inconvenience. तो अगर बारिश की वजह से सड़क पे पानी भर गया है और उस रास्ते की बजाय आपको डिटाउर करके आना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया. नहीं, आप लंबा रास्ता लेकर आइए. इनकन्वीनियंस से कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता. डी भी नहीं है. ए इज द करेक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू impossibility of its performance. A. Very good. Harry contracted Ginny for marriage. Before the time is fixed for marriage, Harry dies. Decides the validity. Contract is void ab initio. Contract is valid because Harry went mad after the contract. क्या यार कुछ. Contract is void because of the impossibility. Contract is voidable at the option of Ginny. क्या हो सकता है इसका? Good. Yes, the correct option. Question number 24. Rose, a theatre artist, contracts Cactus, manager of the theatre, to act at the theatre for 8 months in consideration of 20,000 per performance. After the 4th performance, she met with an accident and lost both her legs. Decide the validity. Again C. Very good, yes.
Let's see. It is impossible to perform. Very good. बहुत ही simple था, इसलिए मैंने बहुत ponder नहीं किया. Amaya and Manuel, both skilled musicians, enter into a contract where Manuel agrees to pay Amaya a certain amount to perform at his music concert. However, just before the concert, Amaya loses her voice due to an unexpected illness, rendering her unable to perform. At what stage the contract became void? Jaldi. It was not a contract. Of course not. Marriage का contract एक immoral contract हो गया. It is against the public policy. तो इस तरह के contract होते ही नहीं है. They are agreement which are void ab initio. अब question में दे रखा है तो फिर solve करो. ठीक है. Factual, hypothesis तो कुछ भी हो सकती है. Isn't it? In general, if you are talking about it, conceptually you are right. It is an agreement which is against public policy, so contract relating to marriages are not allowed. Yes, so the answer is C. Yes, very good. It became void when she lost her voice. Beginning से void नहीं है, जब उसकी आवाज चली गई तब void हुआ है. Right, now the last passage. ये last passage था. Oh, 25 equation. Okay. तुम लोगों ने 25 क्वेश्चंस किए थे, अपने मॉक में 30 क्वेश्चंस किए थे. Hypothetically, rank 1 is yours because you did all the questions right. हाँ, मेरे साथ किया ना तुमने. देखो पैसेजेस बहुत लंबे नहीं है, 450 वर्ड्स के ही हैं. कंसर्शियम भी 450 वर्ड्स के ही पैसेज देगा. क्लैट में बहुत एक्सेसिवली लेंथी पैसेज नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि क्लैट में इस बार लेंथी क्वेश्चंस आएंगे. ये तो क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे थे, बट दिस टाइम यू माइट फेस लेंथी क्वेश्चंस. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. पैसेजेस कहीं से भी आ सकते हैं, बट आई हैव अ फीलिंग कि पैसेजेस कुछ भी बहुत फार फेचेड नहीं होगा. करंट और कन्वेंशन का मिक्स ही होगा. राइट, तो जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं बस उन्हीं पर फोकस करना काफी है. उनको अगर अच्छे से समझ लोगे या ऊपर ऊपर से भी समझ लोगे तो पैसेज इतना मुश्किल नहीं होगा. बाकी प्रैक्टिस इज द की. जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी. क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेजेस करने हैं. स्टेटमेंट्स का एलिमिनेशन कैसे कैसे एलिमिनेट करके सही आंसर पे आओगे. यस एंड नो क्वेश्चंस को करना सबसे आसान होता है अगर कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं. तो यही 2-3 चीजें हैं जो आपको हर मॉक में ध्यान रखनी है, हर मॉक में एनालाइज करनी है. आपके मॉक में जो सवाल गलत हुए वो क्यों हुए और मैंने वो सही कैसे किए, दोनों को कंपेयर करके एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि तुम जब अकेले करते हो तो उन क्वेश्चंस को गलत क्यों कर देते हो और जब मेरे साथ बैठ के करते हो तो वो सही कैसे हो जाते हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अकेले करते हो तो रश करते हो, जल्दीबाजी करते हो, ठीक से नहीं पढ़ते, और मेरे साथ तुम थोड़े कंपोज होते हो, फैकल्टी है सामने तो वो एक काम होता है, एट ईज होते हो और इसलिए रिलैक्स्ड माइंड से सही क्वेश्चन करते हो. तो बात यही है कि भाई क्वेश्चंस रिलैक्स माइंड से ही करने हैं. ये पैसेज है, तुम्हें खा नहीं जाएगा. राइट, और ये एग्जाम है, अगेन कुछ बिगाड़ नहीं देगा ये तुम्हारा. लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती है अगर एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाता है. तो रश ना करें, आराम से करें. जस्ट वन रॉन्ग इन द होल सेक्शन, देयर यू गो, वेरी गुड. हालांकि हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया इसे सॉल्व करते करते. एक और पैसेज है, गुड, चलो कर ही लेते हैं इसको भी. मुझे लग रहा था कि 30 क्वेश्चंस थे. Educated younger boys and girls are choosing their life partners, which in turn is a departure from the earlier norms of the society where caste and community play a major role. Possibly, this is a way forward where caste and community tensions will be reduced by intermarriage, but in the meantime, these youngsters face threats from elders, courts, becoming these consent of family individuals. मैं जल्दी पढ़ रही हूँ, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं. 𝗟𝗲𝗴𝗏 versus the state of Karnataka. Choice of an individual is an inextricable part of dignity, cannot be thought of where there is an erosion of choice. Such a right or choice is not expected. Succumb. The concept of class honor or group thinking. शफीन जहान versus अशोकन KM and others. ये भाई हादिया केस है शायद. हाँ वही है. The court noticed that society was emerging through crucial transformation period. Intimacies of marriage lie within the court zone of privacy, which is inviolable, and even the matters of faith would have least effect on them. बताइए हमें. चलो आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन ही करते हैं. पैसेज तो समझ गई मैं, आप लोगों ने भी पढ़ ही रखा है.
A and B decided to marry each other after their 24th birthday. They belong to the same community, but B's family objected to the marriage. A and B married anyway. B's family contended the validity of the marriage. Decide the validity of the marriage. Arre? Obviously. Marriage valid है क्योंकि वो major हैं दोनों. Right? Actually और भी हो सकते हैं. Why just A? ये है. Marriage between A and B is valid because they both consented to it. ये भी सही है. The marriage between A and B is valid only if B's family accepts it later. गलत है. D is the correct option because both A and B are correct. No, अरे बाकी options भी तो पढ़ लो. D है सही option. लोगों ने A लगा दिया था क्या? बाकी options भी पढ़ने. मैंने क्या कहा कि भाई अगर चारों option में all of the above, right? Mind you, इस चीज को ध्यान रखना है या none of the above या फिर चॉइस दे रखी है both A and B, no? या neither A और B. तरह के ऑप्शंस अगर दे रखे हैं तो सारे ही ऑप्शन पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि ये भी सवाल हो सकते हैं. इन द आंसर की इट इज A. गलत है ये. इट इज D. जस्ट बिकॉज अगर एक मेजर की जबरदस्ती शादी करवा दूं मैं किसी से और दोनों में से एक की मर्जी ना हो तो शादी वैलिड नहीं है. भाई तो कह रहा है पैसेज. बनाने वाले ने भी ठीक से नहीं पढ़े. ये है इसका सही आंसर. अब अगर नंबर मिल भी गए तो मिल गए. तुम्हारा आंसर अगर तुमने D मार्क किया तो तुमने सही आंसर मार्क किया. D में ही मार्क्स मिलने चाहिए थे. इट इज D. राइट, इट इज D. और कोई बात नहीं अगर ये उसमें दे रखा है. बहरहाल the point is that you need to read all the options. If either of the option is or among these four, none of the above, all of the above, both B, A and B, both B and C, both C and D, choice अगर दे रखी है या फिर none of the, all of the कि कुछ ऐसा दे रखा है तो फिर सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी हैं क्योंकि ये ऑप्शन भी एक ऑप्शन हो सकता है. राइट, और इसके लिए जरूरी कि आप ऑप्शंस पढ़ें. राइट, D इसका सही आंसर है, A नहीं है. अब A से नंबर मिल गए जो भी है, लेकिन D सही आंसर है. अगर ये कंसोर्शियम का क्वेश्चन होता तो इसे चैलेंज कर दिया जाता. A decided to propose B to marriage on B's 24th birthday. They belong to the same community, but B's family objected. क्या B की फैमिली इतनी कंजर्वेटिव क्यों है? अनुपम खेर बन गए हैं सब. They persuaded B not to marry A. B indeed got persuaded. B informed A about her decision of not marrying him. Furious, A forced B to marry him. After their marriage, B's family contended the validity of the marriage. Decide the validity. अब देखो, इसीलिए D सही था. इसलिए D सही था क्योंकि कंसेंट मैटर करता है भाई. राइट, यहाँ पे देखे क्रिएटर ने क्या किया है, क्या आंसर चुना है उसने. B. देख लेते हैं. Marriage between A and B is not valid because B did not consent. See, consent is a relevant factor. इस क्वेश्चन में कर लिया और पुराने क्वेश्चन में नहीं किया. अब तुम्हें क्या लगता है मेरा सही था या समझे? Obviously, the marriage is not valid because one of the party did not consent. कबीर सिंह कौन है? उसने जबरदस्ती शादी कर ली किसी से. ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि एक पार्टी की मर्जी नहीं. समझ गए ना तुम मैं क्या कह रही थी? ध्यान रखना है इन सब चीजों का. Now, question number 28. In light of the information provided in the passage, decide which of the following is not a part of dignity. Not a part of dignity. Which is guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. Autonomy of an individual in relation to family and marriage. ये तो है dignity. Autonomy of an individual to marry a person of choice. ये भी dignity का part है. Autonomy of the family individual to make their children marry a person of family's choice. ये dignity का part नहीं है. It is not a part of dignity. Question number 29.
A and B decided to marry each other. They belong to the same community, but B's family objected to the marriage because A is still a minor. A and B married anyway. B's family contended that the validity of the marriage. Decide the validity. The marriage is valid because they both consented. The marriage is valid because they both. अरे तो सेम ही ऑप्शन है या मैं गलत पढ़ रही हूं? Am I reading these correct? ये दोनों सेम नहीं है? ये भी नहीं है. आंसर कुछ भी हो, अच्छा शुक्र है. नन ऑफ द अबव. आपके मार्क में अलग थे ऑप्शन? अच्छा, तो यहाँ सेम कैसे हैं फिर? बहरहाल डी आंसर है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. लास्ट क्वेश्चन. A and B decided to marry each other, belong to different communities. B's family, देख रहे हो तुम, B की फैमिली बिल्कुल अनुपम खेर, किसी की शादी नहीं होने दे रही है फैमिली. B's family objected to marriage because A belonged to a different community. A and B married anyway. B's family contended the validity. A and B claimed right to privacy, and B's family contended the faith exceeds the right to privacy. Decide the validity. अरे यार, come on. एक ही ऑप्शन हो सकता है. एक ही ऑप्शन हो सकता है. Exactly. Faith does not exceed right to privacy. Right to privacy is fundamental. और faith का उससे कोई लेना देना नहीं है. सी बिल्कुल सही है. और तुम लोग देख लो तुम्हारे क्या क्या मार्क्स थे और किस तरह से तुमने परफॉर्म किया है. ये सारी चीजों पे ध्यान देना है. राइट, मिसलेनियस, रीसेंट लीगल जजमेंट, लेजिस्लेशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, इन पे जो बेसिक क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं उन पे भी ध्यान देना है और करंट में जो चल रहा है इन लॉज में वो भी ध्यान देना है. बाकी 26 out of 30 is not a bad score. It's actually a very good score. But the fact is that you were able to achieve this score when you solve the entire section with me. There is a difference when you solve a passage on your own and when you solve it with me. You are more confident when I'm standing in front of you. तो वो कॉन्फिडेंस मेरे बिना भी होना चाहिए बच्चे. तुम लोग मुझसे ही पढ़े हुए हो, मैं ही तो पढ़ा रही हूँ तुम्हें. राइट, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे बिना भी होना ही चाहिए. डोंट वरी अबाउट द फैक्ट. एग्जाम में नहीं होंगी तो आदत डालो और अपने आप को कॉन्फिडेंट ही रखो. विद और विदाउट मी यू शुड बी एबल टू सॉल्व द पैसेज विद सेम ईज. राइट, 26 out of 30, final score is 25.5. 26 by 30 was in the mock. It is a very good score. अगर ये अपने आप स्कोर था तो ये बहुत अच्छा स्कोर है. वो 4 क्वेश्चन जो गलत हुए थे, अब तुम लोगों का काम ये है. मेरे साथ 29 है. ओके, मैंने तो कहा ही था. जो 4 क्वेश्चन गलत किए हैं आप लोगों ने मॉक में, वो क्यों गलत हो गए. अभी होमवर्क में यही देखना है कि वो क्वेश्चन मैंने क्यों गलत कर दिए थे. ये शांभवी तो मुझे लगता है कि पैसेज सॉल्व करते करते ही समझ गई कि क्या गलती कर रही थी. यही तुम्हें करना है, इसी को एनालिसिस कहते हैं. और ये चीज नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं होनी चाहिए. और जैसे ही तुम ये सीख जाओगे, यकीन मानो क्लैट डरा नहीं सकता तुम्हें. ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे उसे. So that's it guys, thank you so much. I shall see you very soon. तब तक सब अपना ख्याल रखें. Bye bye guys. Thanks for being so patient and I really admire your energy. चलो, good night everyone. Good night. Take care. Yes,
First of all, please confirm. Am I clearly audible, visible? Everyone, please confirm. Am I clearly audible, visible, all good, all fine? Am I not visible, audible? Hello? I have already started. Okay. First of all, please confirm. Sir, finally. Yes, finally I am here with you all. Right? So, how are you all doing? I hope you all must be tired. Right? Till now, I am coming in the last session. Just give me a second. Just a second. Let me start. Just a second, everyone. Yes. So how's the Josh right now? Yes, everybody. How's the Josh right now? कैसा है अभी? थक गए हो या अभी बिल्कुल तैयार हो क्वांट के लिए? What's going on? Yes. सर मैंने QT सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया. Should I watch this session? Definitely yes. Answer is definitely yes. ठीक है. ओके, परफेक्ट. ब्लैक कॉफी की जरूरत है यार, ब्लैक कॉफी पी लो यार, ब्लैक कॉफी की जरूरत है तो नो इश्यूज एट ऑल. ओके, हाई जोश, वेरी गुड जी. तो यार फटाफट से शेयर करो और सब लोगों को बता दो क्वांट शुरू हो गया है यार. आ जाएं क्वांट लवर्स, क्वांट हेटर्स. और क्वांट में जो जो दिक्कतें आई हैं, किसी ने अगर अटेम्प्ट नहीं भी करा है तो भी यार प्लीज कम एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्टिंग सेशन. देखेंगे हम यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, और क्या डिफिकल्ट आया था पेपर, क्या इजी आया था पेपर. ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज सेशन. ठीक है ना. आज ही की क्लास में सब कुछ देखेंगे, पता लगाएंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ऐप पे भी मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन आ चुका है. यस, युगवीर इज देयर, बहुत बढ़िया. क्लास ओवर नहीं है बेटा, आई एम स्टिल हियर एंड आई विल बी टेकिंग योर केयर ऑफ योर क्वांट सेक्शन राइट नाउ. ठीक है, लास्ट वाला नहीं किया, लास्ट वाला सेट वाज डिफिकल्ट. ठीक है ना, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. लास्ट वाला है तो लास्ट में ही डिस्कस करेंगे. पहले फटाफट से शुरू के दो डिस्कस कर लेंगे. 5 घंटे भी नहीं हुए हैं अभी तो बहुत बढ़िया. ठीक है जी, जबरदस्त. ठीक है, लास्ट वाला सेट भी डिस्कस करेंगे. क्या प्रॉब्लम थी उसमें, क्या नहीं थी, क्या डिफिकल्ट था, इजी था, वो सारी की सारी बातें फटाफट डिस्कस करेंगे. वॉल्यूम अप डाउन वाले क्वेश्चन फ्रीक मी आउट. शांभवी, आई विल हेल्प यू इन दैट, बट उसके लिए आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी. लाइक का बटन दबाना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा. ओनली 9 वॉचिंग राइट नाउ. इतने कम बच्चे वॉच कर रहे हैं यार. फटाफट से शेयर कर दो. जहां भी जो भी ग्रुप है, जो भी लोग हैं, उनको फटाफट से बता दो. ऐप पे भी युगवीर, जयन, दौरा, एवरीवन एंड ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. फटाफट से यार सभी लोगों को बताओ कि यस क्वांट शुरू हो गया है और मिल बांट करके हम लोग सवाल करने वाले हैं. तो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वांट एनालिसिस. क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, फटाफट से डायरेक्टली मैं मूव कर रहा हूं क्वांट एनालिसिस के ऊपर में. जो जो बातें थोड़ी फास्ट लेकर चले जाएंगे बिकॉज बहुत सारे लोगों को लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, उसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है. डेफिनेटली इन दिस सेशन वो भी करके ही रहेंगे. क्या बात है, कितने अच्छे बच्चे, 15 बच्चे कर दिए. अब 15 के 30 कर दो, वो भी आपकी जिम्मेदारी है सेशन शुरू होने से पहले, मेरा मतलब क्वेश्चन शुरू होने से पहले. जबरदस्त. चलिए जी, नंबर ऑफ सेट्स की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर से कंपैरिजन आप लोगों को पता है 3-3 सेट आ रहे थे. इस पेपर में भी हमने 3 ही सेट दिए, यानी 12 क्वेश्चंस थे. 12 क्वेश्चंस का मतलब 4 क्वेश्चंस पर सेट दिया था. आप सभी लोगों को पता होगा. ठीक है, केसलेट बेस्ड क्वेश्चन 4 थे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन 4 थे और केसलेट बेस्ड क्वेश्चन 8, यानी 2 सेट केसलेट थे और 1 सेट आपका ग्राफ बेस्ड था. ग्राफ बेस्ड सेट वाज वेरी इजी. क्यों दिया था? बिकॉज 2020 में जब पैटर्न चेंज हुआ था उस टाइम पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे. राइट, तो इस साल फिर से पैटर्न चेंज हुआ है तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं इस बार भी. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है,
एवरीथिंग इज सॉर्टेड टीम, नो नीड टू वरी, ठीक है, ओके परफेक्ट, राइट, so this is something which is there, that's why we have given this to you all, right? तो ये है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और फटाफट से हम लोग शुरू करने वाले हैं और देखेंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट, मैं इसलिए बोल रहा हूं पेपर की, ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी को मैं मॉडरेट बोल रहा हूं, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट ओनली द थिंग, यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं आपका ओवरऑल डिफिकल्टी की, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, लास्ट सेट आपका डिफिकल्ट है, लेंदी है, ठीक है, डिफिकल्ट से ज्यादा मुझे लेंदी लगा, ठीक है, क्या हो रहा था कि, और आई थिंक अगर आप लोगों ने सैंपल पेपर देखा होगा तो सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा ही आया है, ठीक है ना, व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके परफेक्ट, तो आई थिंक इतना क्लियर है, और एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, टीम कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लीव इट, एवरीथिंग इज फाइन, अनुज एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट लीव इट, ओके परफेक्ट, चलिए वेरी गुड है जी, ओके परफेक्ट है, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है जी, तो कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था यार, तो somebody from the team was having certain things, so I think now everything is sorted, we are good to begin. So moderate मैंने ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बोला है, लेकिन अगर मैं क्लैट 2020-23 से कंपेयर करूं क्लैट इस वाले मॉक को, तो आप देखोगे ओवरऑल थीम्स की अगर बात करेंगे तो 5-5 क्वेश्चन के 3 सेट थे, यहां पर 4-4 क्वेश्चन के 3 सेट है, तो ओवरऑल सेट रिमेन सेम, टीएसडी वाला सेट डिफिकल्ट है, मैं मान रहा हूं, डिफिकल्ट से ज्यादा मैं लेंथी मान रहा हूं, ठीक है जी, डिफिकल्ट से ज्यादा वो सेट हमारा क्या है, दैट सेट वाज लेंथी हियर, अर्थमेटिक वाला सेट इजी था, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, पाई चार्ट वाला तो एकदम ही हल हुआ था, वेरी इजी सेट, अगर आप यहां पर देखोगे 2020-23 में एक क्वेश्चन अर्थमेटिक बेस आया था, वो हमने भी दिया है, यहां पर यू कैन सी, ठीक है, एवरेज का एक क्वेश्चन आया था, उसकी जगह पर वी हैव गिवन टीएसडी, क्योंकि जरूरी नहीं है एवरेज ही आ जाए, तो परसेंटेज बेस एक और केस लेट आई थी, वी हैव गिवन पाई चार्ट, एंड द रीजन इज पैटर्न चेंज हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए, बार ग्राफ या कुछ भी इजी चीजें आ सकती हैं, सो मॉक में एक आधा ऐसी इजी चीजें भी होनी चाहिए, ठीक है जी, सो दैट इज द थिंग हियर, एज आई टोल्ड यू, टीएसडी वाले को मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकता हूं, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट प्लस लेंथी अगर आप बोलोगे मुझे तो मैं मान लूंगा कि हाँ लेंथी था, ठीक है, बट डिफिकल्ट जैसा तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ जो जो क्वेश्चन में जरूरत है वो सब गिवन था, इनफैक्ट बी प्लस आर बी माइनस आर भी नहीं लगाना था, ठीक है, आई ट्राइड, मैंने हिल भी बनाई, सोचा हो जाएगा बट टाइम वाज रनिंग आउट, गौरी अब हम मिलकर के आज हिल बनाएंगे, ठीक है, बस आपको सेशन में लास्ट तक जुड़े रहना है, अभी 18 बच्चे हैं, 18 का 36 हो जाने चाहिए सेशन के लास्ट तक, यानी जब तक हम हिल बना रहे हो तब तक हम भी हिल पे पहुंच जाने चाहिए, पीक पे, ठीक है जी, इस चीज का ध्यान रखो, हाँ सुनीता बेटा बिल्कुल देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन वॉच दिस सेशन, अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है तो आप बिल्कुल ये सेशन देख सकते हो, 2025 के हो तो भी आपकी हेल्प ही होगी, राइट, हाँ मेरे पास समय की कमी थी, हमारे पास समय की कमी नहीं है, हम बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बच्चा बहुत स्ट्रांग मानता है अपने आप को इस सेक्शन में 10 to 12 क्वेश्चन मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करने चाहिए थे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन चाहते, जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन थे अगर आप देखोगे तो लास्ट के 2 क्वेश्चन यू कुड हैव स्किप, उससे ज्यादा आप स्किप नहीं कर सकते थे, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे इफ यू आर स्ट्रांग इन दिस सेक्शन, पहले 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी हैं, बाकी 2 क्वेश्चन करने के लिए तो यार कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना, बस बेसिक सॉल्व करना था, मैं दिखाऊंगा कैसे है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर आप एवरेज हो एटलीस्ट यार 2 सेट तो करने ही थे पूरे, कौन सा, पाई चार्ट वाला सेट कंप्लीट करना था आपको, एंड परसेंटेज वाली जो केसलेट आई थी वो करना था, ठीक है, तो ये स्कोर आपको होना चाहिए, वी को तो एटलीस्ट मिनिमम आपको कौन सा सेट करना था, पाई चार्ट वाला तो करना ही था, और अगर वो केसलेट भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी आप कर सकते थे, बट यस इतना स्कोर तो आपको लेकर के आना ही चाहिए, सो दिस इज व्हाट आई फील लाइक कि स्ट्रांग है जिसका उसको ये करना चाहिए, जिसका वीक है उसको ये करना चाहिए, टाइम की अगर मैं बात करूं, जो समझता है कि मेरा ये सेक्शन स्ट्रांग है, जिसको लगता है उसको 12 to 15 मिनट्स के अंदर मेरे हिसाब से 10 to 11 क्वेश्चन कर लेने चाहिए थे मिनिमम, ठीक है, एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन छूट सकते थे अगर टाइम का पंगा है तो, ठीक है, जिन लोगों का टाइम का बहुत पंगा होता है, शांभवी जैसा बोल रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं, शांभवी के साथ ऐसा नहीं है, कुछ और लोगों के साथ है, जिसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है ना टाइम वाली, क्वांट को ना आप क्या करो, एक बार 2 मॉक में बीच में करके देखो, 2 मॉक में स्टार्टिंग में करके देखो, 2 मॉक में लास्ट में करके देखो, अकॉर्डिंगली फाइनलाइज योर स्ट्रैटेजी, वो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है, 23 बच्चे हो गए, जबरदस्त, 36 पहुंचा दो, ठीक है, वेरी गुड, बस सेट स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद जो बच्चा अपने आप को वीक मानता है उसने 8 से 10 मिनट लगाने चाहिए थे इसमें,
और एटलीस्ट टीएसडी वाला सेट छोड़ देना चाहिए था, पाई चार्ट और परसेंटेज का सेट कर सकता था। ठीक है, ये तो सबको ही करना, इन दोनों बच्चों को करना चाहिए। अगर वीक है तो एटलीस्ट पाई चार्ट वाला करना ही करना है, और अगर वो केसलेट कर लिया तो वो इजी था। टीएसडी वाला सेट छोड़ सकते थे जिनको जो लगता है कि मेरा ये सेक्शन वीक है। दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस। अभी और डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, और लास्ट में की टेकअवेज देखेंगे इस मॉक से क्या है। अब हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेट इज ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से देख लो। हाँ जी, जल्दी से देखिए। ऑल गुड है? क्या है? दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पाई चार्ट। अब ये पाई चार्ट किस बारे में बात कर रहा है? द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेजेस ऑफ द लैपटॉप सोल्ड ऑफ 6 डिफरेंट ब्रांड्स इन 2020-21। ठीक है, ओके ओके। पर लास्ट सेट गॉट माय मोटिवेशन टुडे व्हाइल अटेम्प्टिंग क्यूटी एक्शन आफ्टर लीगल लॉजिकल के लिए नहीं बचा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो बेटा, एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐप में क्या कह रहे हैं सब लोग? ओके ठीक है, ऐप में कुछ खास नहीं कह रहे ज्यादा लोग, कह रहे हैं सब बढ़िया है, ऑल गुड है, पढ़ाते रहो। ठीक है जी, चलिए। सो बेसिकली 2020-21 में लैपटॉप्स के बारे में बात हो रही है, 6 डिफरेंट कंपनीज के बारे में बात हो रही है, ब्रांड्स के बारे में बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, 2020-21 में टोटल कितने लैपटॉप सोल्ड किए जा रहे हैं? क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? 2020-21 में टोटल कितने लैपटॉप सोल्ड किए जा रहे हैं बाय दीज 6 कंपनीज? दिस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। लेट अस सपोज मान लो X लैपटॉप बेचे जा रहे हैं, तो उस X लैपटॉप में से HP के कितने बेचे जा रहे हैं? 34% ऑफ X। गेटिंग द लॉजिक? एसर के कितने बेचे जा रहे हैं? हाँ जी, दैट इज 11% ऑफ X। सिमिलरली लेनोवो के कितने लें? जल्दी से बता दो, दैट इज 32% ऑफ X। आई होप इट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। सो ऐसे करके हमको सबके बारे में पता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। यानी कि हमें टोटल लैपटॉप कितने बेचे जा रहे हैं हमें नहीं पता, बस ये पता है जितने भी टोटल बेचे जाएंगे उसका 34% HP होगा, उसका 11% एसर होगा, 32% लिनोवो, 16% एसएस, 5% एप्पल एंड 2% डेल। आई अज्यूम 100, नहीं करना अज्यूम, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे शांभवी। चलते हैं यार, क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक द सेट इज क्लियर टू ऑल। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस। ठीक है, आई नॉट वेस्ट टाइम बहुत ज्यादा कि आप लोगों को टाइम दूं। जिसको भी लगता है उसको आता है वो साथ साथ ट्राई कर सकता है, बाकी मैं चलता रहूंगा। चलते चलो और लास्ट तक पहुंचेंगे जल्दी से, क्योंकि आप लोग भी थक चुके हो। सो आई बी लिटिल बिट फास्ट, इजी चीजों में। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट आएगा आप बता देना जो भी चीज समझ में ना आए। फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय HP एंड डेल लैपटॉप्स। पूरा सेंट्रल एंगल कितना होता है सबको पता है, 360 डिग्री होता है, राइट। और अब हमसे पूछा क्या है, सेंट्रल एंगल किसका? हमें पता है 100% टोटल होता है पाई चार्ट का, 100% टोटल है, इन सारे परसेंट को ऐड करोगे, और टोटल एंगल कितना है सेंट्रल? दैट इज 36 डिग्री। सो 100% जो है वो 36 डिग्री के बराबर है। 100% इज इक्विवेलेंट टू, सॉरी 360 डिग्री, 36 क्यों बोल रहा हूं भाई, 360 डिग्री के बराबर है, राइट। 100% इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया HP और डेल, HP का 34% है एंड डेल का इज 2%, तो 34 प्लस 2% इज गोइंग टू बी हाउ मच? दैट बिकम 36%। तो 36% का सेंट्रल एंगल क्या होगा? सिंपल यूनिटरी मेथड लगा लो, आंसर आ जाएगा। भाई जब 100% का इतना है तो 1% का कितना होगा? 360 अपॉन 100 डिग्री। तो 36% का कितना होगा? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 36, दैट इज 360 अपॉन 100 इंटू 36 डिग्रीज, राइट। सो 0 0 कैंसल, 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो 1296 डिवाइड बाय 10, 129.6 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। इजी है ये, पूरा 360 होगा। वेरी गुड जी, परफेक्ट है। अच्छा, इसी को करने का एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। क्या सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से किया जा सकता है? हमसे पूछा गया है HP और डेल के बारे में, यानी 36% निकालना है किसका? 36% ऑफ टोटल एंगल निकालना है ना, और टोटल तो 360 डिग्री होता है, तो डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। तो 36% ऑफ 360 डिग्री निकालना था भाई, सीधे आंसर 129.6 आएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, समझ में आ रहा है सबको? भाई टोटल सेंट्रल एंगल हमें पता है कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है, और उसमें से हमें निकालना है 34 प्लस 2, 36% निकालना है इसका। तो 36% ऑफ 360 डिग्री निकाल लू ना, वही तो आंसर होगा। सो 36% ऑफ 360 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर, विच इज 129.6। दैट इज योर सी ऑप्शन।
2 स्टेप का क्वेश्चन था, इजी पीजी क्वेश्चन है। आई होप ये सबने कर भी लिया होगा मॉक में, वॉजंट डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऐसे ही किया था, वेरी गुड है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर प्लीज, लाइक शेयर का ध्यान रखते रहिए, और जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया था वो आंसर भी बताते रहिए मुझे क्या होगा। देखते हैं बाकी लोग मेरे साथ, देखो क्या करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड अदर देन HP एंड लेनोवो, भाई HP को छोड़ दो और लेनोवो को छोड़ दो, इसके अलावा जो टोटल लैपटॉप बेचे गए हैं दैट इज 334900, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एसर, कहां गया ये रहा, एसर एंड द एसएस लैपटॉप सोल्ड। ठीक है भाई, तो अब आप देखो, अगर मैं आप बोलूं कि लेनोवो और HP को छोड़ के कितने लैपटॉप बेचे गए, कितना परसेंट बचा टोटल का, टोटल का कितना परसेंट बचा, 34 प्लस 32, टोटल का कितना परसेंट चला गया, 66% चला गया, तो 34% बचा टोटल का। जो टोटल का 34% बचा है दैट इज इक्वल टू 334900। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है भाई, लिनोवो को और इसको छोड़ करके जो भी एंगल बचा हुआ है, तो जो भी एंगल बचा हुआ है तो या तो गिन लो, इनको ऐड कर लो, 16 प्लस 11 हो गया 27, 27 प्लस 7 हो गया 34, यानी 34% बचा हुआ पार्ट है, और वो किसके बराबर है, 334900 लैपटॉप है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एसर और एसएस वाले कितने हैं, तो एसएस के 16% है, और सॉरी एसएस के 16 है और एसर के 11 है, तो 16 प्लस 11 दैट मींस आई एम आस्किंग टू कैलकुलेट हाउ मच परसेंटेज, दैट इज 27% कितना होगा ये बताना है हमको। भाई जब 34% इतना है तो 27% कितना होगा, तो 1% कितना होगा, 334900 होगा सर, डिवाइड बाय 34, दोनों तरफ 34 से डिवाइड कर दिया। अब हमें निकालना है 27%, दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 27% विल बिकम 334900 डिवाइड बाय 34 इनटू 27। यू कैन कैलकुलेट एंड गेट द आंसर। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। अरे आगे क्यों बढ़ गया, कैलकुलेट करोगे यू विल गेट सी एज एन ऑप्शन विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर टू ऑल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला भाई, लेनोवो और HP को छोड़ के, यानी ये चारों बचे हमारे पास में, इनका टोटल आ रहा है 34%। 34% ऑफ टोटल किसके बराबर है, 334900 के बराबर है, तो 1% ऑफ टोटल किसके बराबर होगा, डिवाइड बोथ द साइड बाय 34, तो 34 से 34 कट गया, 1% हो गया 334900 डिवाइड बाय 34। हमें निकालना है कि एसर और एसएस वाले टोटल कितने हैं, तो दोनों को ऐड करा, यानी 27% है टोटल का, तो 27% कितने होगा, दोनों तरफ 27 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट सी बिकम्स योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, जैसा खुशी बोल रही है वैसा ही सब लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार ऐप पे भी देख लेते हैं, हाँ ऐप पे भी सबको समझ में आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट है जी, नो इश्यूज एट ऑल। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ नजर मारिए सब लोग, एंड लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। अब हमको डिफिकल्ट तो नहीं है ये सेट, दिस सेट वाज आई थिंक द इजीएस्ट वन, सबको करना चाहिए था। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, कुछ मेहनत भी नहीं करनी सेट में, क्वेश्चन में भी बहुत मेहनत नहीं करनी, दिस वाज द इजीएस्ट सेट। लेट्स सी, इफ द टोटल सेल्स ऑफ लेनोवो लैपटॉप्स इन 2020-22, ये डेटा किसका है, दिस पाई चार्ट इज ऑफ 2021, 2022 का नहीं है ये, किसका है, 2021 का पाई चार्ट है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द टोटल सेल्स ऑफ लिनोवो लैपटॉप्स इन 2020-22, यानी नेक्स्ट ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं, इज डबल्ड, यानी लिनोवो की सेल्स को हमने डबल कर दिया है। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने लिनोवो की सेल्स को डबल कर दिया, राइट, अगर आपने लिनोवो की सेल्स को डबल कर दिया, आगे क्या बोल रहे हैं, अदर लैपटॉप्स रिमेन्स द सेम, बाकी की जो सेल हो रही है वही होगी, then what would be the percentage of the sales of Lenovo laptops to the total sales of laptops in 2022। अच्छा, अब जो एक बार शांभवी बोल रही थी कि सर मैंने 100 लेके कर लिया, अब इस क्वेश्चन में आपको 100 लेके कर लेना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज कि भाई 2020-21 में जो टोटल सेल्स हो रही थी, टोटल सेल्स को मान लेते हैं वो 100 हो रही थी, कितनी हो रही थी, 100 लैपटॉप्स की सेल हो रही थी। तो उसमें से लिनोवो कितने थे, जल्दी बताओ, लिनोवो लैपटॉप्स कितने थे 2021 में, 32% ऑफ 100, और 100 का 32% कितना होगा, दैट बिकम्स 32 लैपटॉप्स लिनोवो के थे। और रिमेनिंग लैपटॉप्स कितने थे 2020-21 में, बाकी 100 माइनस 32 कर लेते सर, 68 लैपटॉप्स रिमेनिंग ब्रांड्स के थे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, मैंने क्या अज्यूम करा, लेट अस सपोज 2021 में 100 लैपटॉप्स वर सोल्ड, सो आउट ऑफ दोज 100 लैपटॉप्स हाउ मेनी आर ऑफ लिनोवो ब्रांड, दैट इज 32% ऑफ 100, यानी 32 लैपटॉप्स लिनोवो ब्रांड के थे। What are the number of other brands? That is 100 minus 32, 68 लैपटॉप्स अदर ब्रांड के थे।
ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेनोवो लैपटॉप्स अगले साल बढ़ करके डबल हो गए, तो लेनोवो 2020 में कितने हो जाएंगे, डबल ऑफ व्हाट इट वाज इन 2021, यानी 32 का डबल 64 लैपटॉप्स हो गए। रिमेनिंग जो लैपटॉप्स हैं 2022 में भी सेम ही रहे, यानी वो अभी भी 68 ही है, यानी टोटल लैपटॉप जो 2022 में है दैट इज 64 प्लस 68। आर यू ऑल गेटिंग इट, विच बिकम्स 132 लैपटॉप्स हैं 2022 में। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिनोवो लैपटॉप्स, तो जो लिनोवो लैपटॉप्स हैं आपके दैट इज 64, ये टोटल का कितना परसेंट है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है जी, आर यू ऑल गेटिंग इट। 64 जो है वो 132 का कितना परसेंट है, 132 का हाफ कितना होता है भाई, 50% कितना होगा, हाफ ऑफ दिस, तो 2 6 एंड 2 6, तो 50% से जरा सा कम आंसर आएगा, बी ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, नो इश्यूज एट ऑल। भाई 2020-21 में मैंने टोटल मान लिया 100 लैपटॉप बिक रहे हैं, उसमें से लेनोवो ब्रांड के कितने बिक रहे हैं, 32%, और 32% 100 का कितना होगा, 32 लैपटॉप्स लेनोवो ब्रांड के थे, रिमेनिंग कितने बचे, 68, तो 68 लैपटॉप्स रिमेनिंग बच गए। अब अगले साल लेनोवो डबल हुआ है, बाकी सब 68 ही है अभी भी, यानी लेनोवो डबल होके हो गया 64, करेक्ट। टोटल कितना हो गया, 64 प्लस 68 132। तो क्वेश्चन पूछा है लेनोवो जो 64 है वो अब टोटल का कितना परसेंट है, यानी 132 का कितना परसेंट है। क्रिस्टल क्लियर टू ऑल, खुशी इज सेइंग यस, व्हाट अबाउट अदर्स, समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन 3 इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। लास्ट क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस डेटा सेट, इसके बाद जो लोग लेट आए हैं दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, इसके बाद हम नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, जल्दी देखते हैं। द टोटल सेल्स ऑफ एप्पल लैपटॉप्स की जो टोटल सेल्स है इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल सेल्स ऑफ एसर लैपटॉप्स इन 2021। तो आप देखो, अगर मान लेते हैं लेट अस सपोज, फिर से टोटल सेल्स को हम मान लेते हैं 100, टोटल को मान लिया 100, तो भाई एप्पल की कितनी सेल हो रही है, दैट इज 5% ऑफ 100, यानी 5 लैपटॉप एप्पल के हैं, राइट। और एसर के कितने लैपटॉप है, दैट इज 11% ऑफ 100, दैट मींस 11 लैपटॉप इसके हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो परसेंटेज चेंज में इन दोनों का डिफरेंस आएगा न्यूमरेटर में, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आएगा डिनोमिनेटर में। वी आर कंपेयरिंग विद एसर लैपटॉप्स, यानी 11 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो यानी 6/11 इंटू 100 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, विच इज 54.54%, डी ऑप्शन करेक्ट। सब लोग सही बता रहे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ये सेट सभी ने कर लिया होगा, इजी सेट था, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सेट ऑफ द मॉक मेरे हिसाब से, जिसमें सिर्फ पाई चार्ट देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते जाने। 4 क्वेश्चन कनेक्टेड थे, चारों में थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी थी। आई थिंक 4-5 मिनट्स वॉज सफिशिएंट टू आंसर दैट क्वेश्चन कंप्लीट सेट करने में। तो अगर कोई बच्चा वीक भी है, वो अगर 5 मिनट में 4 नंबर ला रहा है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बच्चा अगर स्ट्रांग है तो इसी को 4 मिनट में कर सकता था, आगे टाइम बचा सकता था, राइट। दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड। अब चलते हैं सेट नंबर 2 की तरफ और देखते हैं भाई ये सेट क्या बोल रहा है। तो रीड द सेट केयरफुली, ये क्योंकि अब हमारा केसलेट है तो पहले पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी इजी था, शांभवी सौम्या इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सर ये भी डिफिकल्ट तो नहीं था, बिल्कुल सत्य वचन है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। देख लेते हैं एक बार, 4 on 4 होनी चाहिए फर्स्ट सेट में, ये भी इजी सेट है। इसके बाद वाला लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है, देखेंगे आगे चल के। रीड द सेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या है क्वेश्चन, अ सॉफ्टवेयर कंपनी हैज 6000 एम्प्लॉइज, कितने लोग हैं, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल दिया हुआ है, ऑल द एम्प्लॉइज बिलोंग टू 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट, HR, sales, technical, 16% of the males and 28% of the females are in technical, ये वो सब कुछ दिया हुआ है डेटा। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर में हमें किसके बारे में बात करनी है, मेल, फीमेल, टोटल के बारे में बात करनी है, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट दी डिफरेंट डिपार्टमेंट, HR में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, फाइनेंस में कितने हैं, टेक्निकल में कितने हैं, ये सारा डेटा यहाँ आ जाएगा। तो टेबल एक बार बनाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है सो दैट मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा। टेबल इस तरह की बनेगी हमारी, HR, सेल्स, टेक्निकल, फाइनेंस, मीडिया, टोटल यहाँ पे आ जाएगा, मेल फीमेल। तो एक एक करके डेटा इस टेबल में मैं डालता रहूंगा, सॉल्व करते रहेंगे जब तक मैं लास्ट लाइन पे पहुंचूंगा। हमारे सामने टेबल होगी, वी कैन आंसर एवरी क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस डेटा सेट। शुरू कर दूं सॉल्व करना, जिसको आता है वो साथ साथ सॉल्व कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जैक्टली खुशी, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है, खुशी ने बिल्कुल सत्य वचन बोले। चलिए जी देखो,
A software company में total employees are how many? 6,000 total employees are there. Right? Very good, शांभवी. जो लोग बताते जा रहे हैं बहुत बढ़िया. जिसमें कि the ratio of male to female is given to us as 3:2. So how many males are there? That is corresponding to male 3 ratio point. Divide by total is 5. So 3/5 of 6,000. Correct? Or 60% of 3,000 is 360. So this become 3,600. So how many females must be there? Total में से subtract कर लो. So that becomes 2,400 females are there. So total 6,000. Let's put it in the table. जो भी data आता जाएगा, I will put it in the table. So 3,600 are male and 2,400 are female. So this is the data in front of us. अब देखते हैं अगला डेटा की तरफ में आगे मूव करते हैं. ये हमारा हो चुका है. All the employees belong to 5 different departments, HR and so on so forth. 16% of the males and 20% of the females are in tech department. So how many males are there which are in tech department? So can I say that is 16% of the total males? Right? So how to calculate 16% of this number? 10% is 360. 5% is 180 और डायरेक्टली भी 16% निकाल सकते हो. इट्स योर चॉइस. ठीक है, तो आपकी मर्जी है. मैं ऐसे करता हूं, दिमाग में करता हूं मैं ये सब कुछ कि भाई 10% प्लस 5% प्लस 1% कर लेता हूं. दिस इज हाउ आई कैलकुलेट फास्ट. तो इसका 10% कितना होगा? 360 और फिर 5% क्या होगा उसका? हाफ 180 और 1% इसका कितना होगा? 36. तो 360 प्लस 180 कर लेते हैं. 360 प्लस 200 अगर मैं कर लूं पहले तो 560 हो जाएगा. 576 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्लीज कंफर्म करते रहना कि हाँ सर आप सही कर रहे हो. ठीक है, जिन लोगों ने भी करा है. फीमेल्स कितनी होंगी टेक्निकल में? जल्दी से बताओ, फीमेल्स कितनी होंगी टेक्निकल में? फीमेल्स इज गोइंग टू बी हाउ मच? 28% ऑफ द टोटल. तो 28% ऑफ 2800 इज गोइंग टू बी द फीमेल. अब मैं 28% कैसे फास्ट कैलकुलेट करूंगा? 30% माइनस 2% कर लूंगा. मुझे पता है इसका 10% कितना है? 240. तो 30% कितना होगा? 24 इंटू 3 72. तो 720 माइनस. ठीक है, अब इसका 2% कितना होगा? 24 का डबल, दैट इज 48. तो 720 में से अगर 40 चला जाता तो 680 बचता. तो दिस बिकम 672. प्लीज कंफर्म, एम आई क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रहा है जो भी कुछ मैं यहां पर कर रहा हूं? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज बता देना बेटा. ठीक है, लेट्स पुट इट ओवर देयर कि टेक्निकल में मेल्स आर 576, फीमेल्स आर 672. टेक्निकल में मेल आर 576 एंड फीमेल्स आर 672. करेक्ट है जी. ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ चुकी है. आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर में. और क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है, सर ये तो इजी था बट टेक्स टाइम टू सॉल्व, तभी मैं बता रहा हूं कि मेरा तरीका क्या है, कैसे मैं ओरली कर रहा हूं. भाई मुझे 28% निकालना है तो 30% माइनस 2% कर रहा हूं. 16% निकालना है तो 10% प्लस 15% वाला कॉन्सेप्ट कर रहा हूं. बिकॉज यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी जो मैं समझा रहा हूं कैसे करनी है आपको. राइट, अब देखो आगे. 1/5 ऑफ द मेल्स आर इन मीडिया डिपार्टमेंट. ये तो इजी कैलकुलेशन है. मीडिया डिपार्टमेंट में हाउ मेनी मेल्स आर देयर? दैट इज 1/5 ऑफ द टोटल मेल. 1/5 मींस 20%. 20% ऑफ दिस इज 720. इजी कैलकुलेशन. राइट. The ratio of females and males in tech department is 2:3. Just a second. Sorry, my mistake. जो हमने ये 28% of females निकाला है ना, that are in HR. 672 is in HR. Just give me a second. 672 is HR female. 672 is HR female. That was a wrong thing. 672 are HR female. Yes, exactly. Correct. ठीक है. And one more information is given to us. What is given? That is about the tech department. In tech department, male to female ratio is given here as, sorry, female to male ratio is given. So let's reverse it up. In the tech department, female to male ratio is given as 2:3. Correct? Now, and we know if 2k females are there, 3k male must be there, and male are equal to 576 over there. So k becomes 3 1s are 3, 3 9s are 2s are. So if k is 192, this becomes 2 into 192, right? 2 2s are 4, 9 2s are 18 and 384. So 384 females are there. ठीक है, I hope it is clear. 384 females, बिल्कुल करेक्ट है बेटा शांभवी. 384 females are coming here and 720 were coming in the media department. I think that was male. Let me check it once again.
before filling here. Media department male was 720. So this is the information we have already solved. Let's remove it from here so that I can solve it further. ठीक है भाई, यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बस क्वेश्चन में once the table is made, then no need to do anything else. Once the table is done, everything will be sorted out. Okay, 25% of the total number of employees are in the sales department. तो sales department में how many total employees are there? तो sales department में 25% of 6,000. That means 1/4 of 6,000, which is 1,500. Sales department में total people are 1,500. So in the sales department, I can say total is 1,500. I can put it over here. Okay, total is 1,500 in the sales department. And one more information is given here. Let's see what is given. Number of females in the media department is 60% of number of males in the media department. So females in the media department is equal to 60% of the males. Can you all please confirm for a second whether I am clearly audible and visible? Yes, please confirm. Someone from the team also please confirm to me. हाँ बिल्कुल करेक्ट है सोनू नेहा on the app also. Someone from the team also please confirm. Am I clearly audible, visible, all good, all fine? Yes, Shambhavi, Gauri, everyone please confirm. Am I clearly audible, visible? Babita, you also please confirm. Babita keh rahi hai, yes sir, you are audible. Everything is fine na? No issues at all? Perfect. Neha is also saying yes sir. YouTube पे भी यार जल्दी बता दो visible and audible. ठीक है, perfect, perfect. Thank you so much. There was some doubt of the student. ठीक है, perfect है जी. Just look at it here. Question is saying females are 60% of the males in which department? Number of females in the media. This is about the media. Is 60% of the males in the media department. Media department में how many males are there? 720. So can I say females become 60% of 720, right? Which is 60% of 720 means 72 into 6. So 6 2s are 12, right? 6 7s are 42, 432 if I am not wrong. Please confirm everyone. 432 females are there in the media department. Oh shit, I have removed everything. Oh no. Oh my god. Can we do undo भी कभी ऑप्शन होता है क्या यहाँ पे? I think is it there undo? Just a second. I think no such option is there, but we have a table. Table से cheating कर ले क्या? वैसे it was 720 as far as I remember. Sales में total was 1,500. What else was given? हाँ भाई हेल्प करो जल्दी से. पीछे से देख लूँ क्या मैं? टेबल में से देख रहा हूँ भाई मैं. ये हमने निकाल लिया था 672. सर 720 men in media. ठीक है, 720 men in media था. और क्या क्या निकाल चुके हैं? टेक्निकल हम निकाल चुके थे ना. मैं टेबल में से देख लेता हूँ एक बार. 576 and 384. 576 and 384. 576 and 384. ठीक है, और क्या क्या निकाला था? दिस वॉज 3600, दिस वॉज 2400. ठीक है, और क्या क्या निकाल चुके हैं हम? आई थिंक ये 672 भी कैलकुलेट कर चुके थे. इतना ही कैलकुलेट किया था ना? जल्दी बताओ, और तो कुछ कैलकुलेट नहीं किया अभी तक? यस, फटाफट से बता दो. इतना ही कैलकुलेट किया था ना? फाइनेंस पे अभी गए नहीं है, सेल्स के बारे में अभी पता नहीं है, एचआर मेल आई थिंक अभी तक हमें नहीं पता है. ठीक है, इतना हम यहां तक कैलकुलेट कर चुके हैं. तो एक बार मैं यहां तक का ये डेटा रिमूव कर रहा हूं सो दैट हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए और सॉल्व करने के लिए. सेल्स को अभी भी मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि सेल्स अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है भाई, चलिए फटाफट से देखते हैं. अब 22% ऑफ द नंबर ऑफ, यस 432 इन मीडिया. ओके जी, 22% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स आर इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट. ओके, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हाउ मेनी फीमेल? सेल्स टोटल वी नो. यस, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर? दैट इज 22% ऑफ द टोटल फीमेल्स. तो 22% कैसे निकालेंगे? 20% प्लस 2%. यस, वेरी गुड बेटा, थैंक यू. दैट बिकम 480 प्लस 48. आई थिंक इट इज
528, प्लीज कंफर्म। ठीक है भाई, 20% प्लस 2% आई हैव टू डू, तो 528 करेक्ट है। दैट इज द फीमेल इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट इज द फीमेल्स इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज वेरी गुड। 528 आई थिंक 384 यहां पर था, ठीक है, टेक डिपार्टमेंट में था। राशि शायद आप वो बता रहे होंगे। तो क्या हम फीमेल सेल्स की निकाल सकते हैं क्या, कि सेल्स में कितनी फीमेल्स हैं? क्या हम सेल्स की फीमेल निकाल सकते हैं? 2400 टोटल फीमेल्स हैं, उसमें से इफ आई सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग फीमेल दैट इज 432, 528, 384 एंड 672, so I will be getting the number of females in the sales department, right? अगर ऑब्वियसली मुझे बाकी सारी फीमेल्स तो पता ही है, तो 432, 528, 384, 672 ऐड कर लूं और टोटल फीमेल्स 2400 में सब्ट्रैक्ट करूं तो सेल्स की फीमेल आ जाएंगी। जल्दी से बताओ ये कैलकुलेट करके कितना आएगा? 2400 में जब ये माइनस करोगे तो ये कितना आएगा? जब तक मैं रिमेनिंग डेटा सॉल्व करता हूं। रिमेनिंग क्या रह गया है भाई, अब जल्दी से देख लेते हैं एक बार फटाफट से। लास्ट थिंग रह गई है हमारे पास में, दैट इज द लास्ट लाइन इज लेफ्ट आउट फॉर दिस सेट विच इज सेइंग 18% of males are in HR. Okay, HR में how many males are there? That is 18% of the total males. Total males is 3600. Okay, 18% निकालना है तो 20% minus 2% you can do. 20% of this is 720 minus 2% is 72. तो 720 में से subtract कर दो 72. Right, that is 10 minus 2 is 8 and 11 minus 7 is going to be 4. 648 if I am not wrong, please confirm. HR में 648 मेल्स आर देयर, इतने सारे मेल HR में चले गए, 648 मेल्स आर देयर इन HR। अच्छा, शांभवी एंड देवर्ती सेइंग सर ये 384 आएगा। ठीक है जी, आप कह रहे हो तो आपकी बात मान लेते हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया, सत्यवचन, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आपने कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब ये भी बता दो मेल्स कितने होंगे यहाँ पर? कैन आई से 1500 माइनस 384 मेल्स होंगे। ठीक है, टोटल्स एक्सेप्ट सेल्स वुमेन 2016। हाँ ठीक है बेटा, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल भी बता दो सेल्स में कितने होंगे। आई थिंक 1116 आ रहा होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मेल्स यहां पर कितने होंगे टोटल में से माइनस कर दो, तो टोटल 3600 मेल्स हैं, उसमें से 648 1116 प्लस 576 प्लस 720 सब्ट्रैक्ट कर दो, you will get the number of males in the finance and this table will be completed for you. I think this is clear and this turns out to be this much. कुछ ऐसी टेबल दिखेगी और ये सारा डेटा आपके लिए अवेलेबल होगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पे मूव करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्योंकि ऑलरेडी हम इतनी सारी कैलकुलेशन कर चुके हैं तो क्वेश्चन हमसे कैलकुलेशन करवा ही नहीं रहे। टेबल देखेंगे, आंसर बतानी है, टेबल देखनी है, आंसर बतानी है। जल्दी से बता दो क्या आंसर है। ऑलरेडी वी हैव डन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन स्टफ, तो क्वेश्चन ने कहा भाई अब मत करो, बहुत कर लिया आपने कैलकुलेशन। ठीक है, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ फीमेल इन द सेल्स डिपार्टमेंट इज 384। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नो इश्यूज विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। परफेक्ट है जी, ऐप में भी देखते रहते हैं, यस सर, नो सर, ऑल इज गुड बबीता। ठीक है बेटा, ऐप पे भी बाकी सारे लोग बिल्कुल रिप्लाई कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी, ऐप वाले बच्चों से मेरा एक गुजारिश है कि अगर ऐप में कुछ इशू आ जाए, वैसे तो नहीं आना चाहिए पर शायद 5 आवर्स के बाद कुछ आ जाए, अगर कुछ भी इशू आता है ऐप में, यू कैन कम टू यूट्यूब फॉर द रिमेनिंग सेशन। ठीक है बेटा, बबीता, नेहा, स्निग्धा, एवरीवन हु आर वाचिंग अस फ्रॉम द ऐप, ठीक है, प्लीज कम टू द यूट्यूब सेशन, क्योंकि ऐप में कुछ इशू आ सकता है, तो यूट्यूब पे आ जाओ फटाफट से, है ना। तो क्योंकि 5 घंटे बाद कभी बार इशू आता है, 5 आवर्स हो चुके हैं। ठीक है, यस नम्रा बेटा, लाइव है क्लास, बिल्कुल लाइव है। गुड मॉर्निंग, क्लास चल रही है काफी देर से, 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं एंड इट्स लाइव फ्रॉम मोर देन 5 आवर्स। ठीक है, आई होप यार कोई रिस्पॉन्ड कर दो, बबीता, नेहा में से सब लोग, जितने भी लोग हैं ऐप पे, ठीक है ना, तो एक बार आप लोग वहां आ जाना अगर कुछ भी इशू होता है तो। चलिए जी, अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग बता चुके होंगे आई थिंक। विच डिपार्टमेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स? मैक्सिमम मेल्स आर इन द सेल्स डिपार्टमेंट आई थिंक। हाँ भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स आर इन द सेल्स डिपार्टमेंट, नो इश्यूज। द नंबर, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करना है, सब लोग देख लो एक बार, सब लोग देख लो। यस बेटा नम्रा, वी आर लाइव, वी आर लाइव। मेरी भी तो सुन लो, मैं भी तो कह रहा हूं, गौरी और शांभवी नहीं भी बता रहे तो मैं बता रहा हूं लाइव है।
ठीक है, चलो देखो, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द मीडिया डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द मीडिया डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो जो फीमेल्स है मीडिया डिपार्टमेंट की, वो टोटल एम्प्लॉइज सेल्स के कितना परसेंट है। तो सेल्स का टोटल तो 1500 है और मीडिया में मेल्स कितनी है, दैट इज 432। सो 432 इसका कितना परसेंट है, दैट इज योर क्वेश्चन। तो कैलकुलेट कर लोगे, 1520 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आंसर है, सभी ने कर भी लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन कनेक्टेड विद दिस डेटा सेट। इसके बाद आप लोगों को जो चीज समझ में नहीं आई थी उसी सेट पे मूव करने वाले हैं, तो सबको बता दो कि भाई टीएसजी वाला सेट आने वाला है। देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज इन द कंपनी कंसिस्ट ऑफ मेल फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट। वंस अगेन इजी क्वेश्चन, मेल्स फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज 540 और ये टोटल एम्प्लॉइज का कितना परसेंट है कंपनी में। तो कंपनी में टोटल 6000 एम्प्लॉइज है, तो ये इसका कितना परसेंट है, वेरी इजी कैलकुलेशन, 6 9 54, आंसर इज 9%। आई होप इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो 20 लोग आ गए हैं क्योंकि उनको पता है कि अब शुरू होने वाला है डिफिकल्ट टास्क, दैट इज सेट नंबर 3। एंड काफी सारे लोगों को इस सेट में परेशानी भी हुई थी, तो एक बार रीड कर लेंगे। जो लोग नए हैं, जिन्होंने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है या जिन्होंने मॉक में क्वांट अटेम्प्ट नहीं किया है, वो सारे एटलीस्ट इस क्वेश्चन को रीड कर लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफिकल्ट ऑल्सो एंड अ मोर ऑन द लेंथियर साइड, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट एज इन कि कुछ कुछ चीजें थी जो आपको ट्रिक्स थी जो समझ में आनी चाहिए थी, है ना। और डिफिकल्ट बहुत ज्यादा से मैं बोलूंगा मॉडरेट लेवल का डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन लेंथी बहुत ज्यादा था, मतलब चीजें बहुत करनी थी, प्लस क्वेश्चन में जाके भी काम करना था। और ऐसा आपने एग्जाम में भी देखा है। सैंपल पेपर 2 का एनालिसिस किया था हम लोगों ने अभी कल परसों, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हो। उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि ऐसा ही पेपर आया था और ऐसा ही कुछ आया था उसके अंदर कि हर क्वेश्चन में भी मेहनत करनी थी, पहले भी मेहनत करनी थी, इतनी सारी मेहनत करवाती थी, ठीक है, एक ही सेट के अंदर में। तो यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा है, पर उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। शुरू करते हैं कहानी। हिल, पहाड़ से नफरत हो गई? नहीं यार, पहाड़ पे तो जाना चाहिए, मजा आता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। रीड द सेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है जी। मिस्टर शाह वेंट टू कसौल, क्या बात है, जबरदस्त जगह गए हैं भाई साहब, कसौल, ठीक है, फ्रॉम चंडीगढ़, चलो चंडीगढ़ से तो पास ही है, ठीक है। बाय हिज ओन कार, देखो पहले ना क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे सो दैट हमें बाद में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अपनी खुद की कार ड्राइव करके वो चंडीगढ़ से निकले, तो चंडीगढ़ से निकले, एक सेकेंड मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा डायग्राम। चंडीगढ़ मान लो यहां पर है और चंडीगढ़ से निकले अपनी कार से, और कसौल मान लेते हैं कि यहां पर है, ठीक है, यहां पर कसौल है, ठीक है, ये रहा कसौल, ठीक है, दिस इज कसौल, कसौल का पहाड़ है ये, राइट। हिल्स को झारखंड, चलो फटाफट इधर देखो सब लोग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाइल गोइंग अपहिल, जब ये चले तो पहले कुछ डिस्टेंस उन्होंने प्लेन पे ट्रेवल किया, ठीक है, इसके बाद में इनको जाना पड़ा अपहिल, अपहिल मतलब चढ़ाई चढ़नी पड़ी, ठीक है। व्हाइल गोइंग, अब ये चढ़ाई ना इन्होंने डायरेक्ट नहीं चढ़ी, पहाड़ों की चढ़ाई आपने देखी है, चढ़ते हैं फिर उतर जाते हैं फिर चढ़ते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब जब वो ऊपर चढ़ेंगे फिर वो नीचे आएंगे, फिर वो और ऊपर चढ़ेंगे फिर वो नीचे आएंगे, तो जब जब हम अपहिल ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट, अपहिल का मतलब क्या हुआ, जब जब हम पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे होंगे, उस टाइम पे ही नोटिस दैट पेट्रोल कंजम्पशन इंक्रीज बाय 25% ऑफ द नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल मतलब जब वो प्लेन पे ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम को हम नॉर्मल बोल रहे हैं, जब वो पहाड़ों पे चढ़ाई कर रहे हैं उसे हम अपहिल बोल रहे हैं, और जब वो नीचे उतराई कर रहे हैं जब भी, उसे हम डाउनहिल बोल रहे हैं, जब जब वो उतरेंगे उसे डाउनहिल बोला जाएगा, राइट। तो पेट्रोल कंजम्पशन यहां पे 25% ज्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, प्लेन्स के कंपैरिजन में। और जब हम उतर रहे हैं व्हाइल गोइंग डाउनहिल, पेट्रोल कंजम्पशन डिक्रीज बाय 50%। तो जब हम डाउनहिल आ रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में पेट्रोल कंजम्पशन 50% कम हो जाता है। समझ में आ रही है सबको बात? 50% पेट्रोल कंजम्पशन कम हो जाता है जब हम डाउनहिल, यानी उतरेंगे तो पेट्रोल कम लगेगा और चढ़ेंगे तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि लेट से यहां पर 40 लीटर पर किलोमीटर पेट्रोल लग रहा है, ऐसे मान लो, वो तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, पर ऐसे मान लो, तो यहां इससे 25% ज्यादा लगेगा और 1 किलोमीटर चलने में यहां इससे कम लगेगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ एंड कसौल, चंडीगढ़ से कसौल का डिस्टेंस दिया हुआ है 525
while going to Kasol the total distance traveled uphill is 2.5 times the distance traveled downhill. Also the distance traveled on the plain road is given while returning from Kasol to Chandigarh. He saves 15 liter of the petrol from Chandigarh to Kasol and so on so forth. अब मेरी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना इस क्वेश्चन के लेकर के, ठीक है। लेट अस सपोज कि जब आप जा रहे हो, मान लो आपका ये चंडीगढ़ है और आप चंडीगढ़ से निकले, आपने उसने बोल रहा है टोटल डिस्टेंस आपको चलना है 525। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स में यहां पर मार्क कर ले रहा हूं। प्लेन्स पे जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 140 किलोमीटर ट्रैवल किया, चंडीगढ़ से कसौल जाते हैं, मान लो ये 140 किलोमीटर है। उसके अलावा आपने कुछ चढ़ाई करी है और कुछ उतराई करी है। लेट से कि आपने एक साथ चढ़ाई करी, पहले आप चढ़ करके यहां पहुंच गए, अपहिल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, दैट इज 2.5 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल डाउनहिल। तो मान लो आपने डाउनहिल ट्रैवल करा d किलोमीटर, तो अपहिल आपने कितना ट्रैवल किया होगा, अपहिल आपने किया होगा जाते वक्त 2.5 टाइम्स इसका। तो मान लो कि ये आपने 2.5d किलोमीटर ट्रैवल किया अपहिल, ठीक है जी। और आपने d किलोमीटर उतरे भी हो, मान लो ये d किलोमीटर उतरे और ये आपका कसौल आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। आप यहां से चंडीगढ़ से निकले अपना मस्त गाड़ी में बैठ करके 140 किलोमीटर प्लेन्स पे चले, फिर मान लो ये कसौल यहां पहुंचना, ये आपकी डेस्टिनेशन थी। लेकिन कसौल पहुंचने के लिए मान लो पहले पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, फिर थोड़ा उतरना पड़ता है, थोड़ा ऐसे चढ़ा के और उस तरफ है पहाड़ के, मान लो ऐसे समझ लो। तो 2.5d डिस्टेंस आपने अपहिल चला और ये डाउनहिल चला। लेकिन अब मेरी बात इंपॉर्टेंट समझना, आपने 2.5 किलोमीटर चला है अपहिल और d चला है डाउनहिल। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू कसौल, जब आप वापस घर आ रहे होंगे तो यही डिस्टेंस आपके लिए अपहिल हो जाएगा ना। तो यानी कि वापस आते टाइम d किलोमीटर आप अपहिल ट्रैवल करोगे और ये उल्टा वाला आपका डाउनहिल हो जाएगा। फिर तो आप डाउन आ रहे हो ना इसको, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 2.5d जो डिस्टेंस होगा ये आपके लिए डाउनहिल वाला डिस्टेंस हो जाएगा। और यही 2.5d जाते वक्त क्या था, आपका अपहिल डिस्टेंस था। आर यू ऑल गेटिंग इट। और ये जो d डाउनहिल था जाते वक्त, वो आते वक्त आपके लिए चढ़ाई हो जाएगी, जो उतराई थी आते में चढ़ाई हो जाएगी। नॉर्मल सब लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैवल किया होगा भाई, जो चढ़ते हैं आते में तो फिर उतरना पड़ेगा, वही चीज आई होप। और प्लेन रिमेन्स द सेम, 140 किलोमीटर में प्लेन्स रहेगा। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है। यानी कि जब मैं चंडीगढ़ से कसौल जा रहा हूं उस टाइम पे मैं 140 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं प्लेन्स पे, प्लस मैं डाउनहिल कितना ट्रैवल कर रहा हूं, दैट इज d किलोमीटर। अपहिल में कितना ट्रैवल कर रहा हूं, दैट इज 2.5d। लेकिन जब मैं कसौल से वापस आ रहा हूं चंडीगढ़, तो मैं प्लेन्स पे तो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, लेकिन मेरा डाउनहिल क्या बन जाएगा, मेरा अपहिल बन जाएगा d किलोमीटर, और मेरा अपहिल क्या बन जाएगा, डाउनहिल बन जाएगा 2.5d किलोमीटर। गेटिंग द लॉजिक एवरीवन। ये लॉजिक क्लियर है तो मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकता हूं, सॉल्व करने की तरफ। ये लॉजिक थोड़ा सा था जो ट्रिकी था, जो ऑब्वियसली पता तो है आपको लॉजिकली, ठीक है, बट क्वेश्चन में स्ट्राइक करना चाहिए था, ठीक है। एक बार जरा ऐप पे भी पूछ लेते हैं बच्चों से। क्लियर है भाई ऐप पे भी सबको, नेहा, स्निग्धा, बबीता, एवरीवन एट द ऐप ऑल्सो। ये वाली बात सबको समझ आ रही है बेटा? आई एम अज्यूमिंग कि आ ही रही होगी, ठीक है। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत सारे आ चुके हैं। नो सर, ऑल इज गुड, यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है भाई। चलो, आई एम अज्यूमिंग कि यहां तक का डेटा सबको क्लियर है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं। सब लोग देखो, अब लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब हमारी दो बातें हैं क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो, एक तो पेट्रोल कंजम्पशन की बात हो रही है और एक डिस्टेंस की बात हो रही है। तो मैंने बना लिया यहां पर टेबल, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूं चंडीगढ़ से कसौल जाने की। कसौल से चंडीगढ़ की बात ही नहीं कर रहा इस टेबल में, क्या बात कर रहा हूं, अपने घर से निकला चंडीगढ़ से और कसौल जा रहा हूं। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, मान लो नॉर्मल डिस्टेंस तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 140 ट्रैवल कर रहा हूं, ठीक है। डाउनहिल डिस्टेंस मान लेते हैं मैं d किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं, तो अपहिल उसका 2.5d टाइम्स हो जाएगा, 2.5d, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया। देखो क्वेश्चन कह रहा है जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपहिल इज 2.5 टाइम्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड डाउनहिल। तो जितना भी डाउनहिल ट्रैवल कर रहे हो उसका 2.5 टाइम्स अपहिल ट्रैवल करोगे। और प्लेन्स पे कितना ट्रैवल कर रहे हो, 140 किलोमीटर, और टोटल कितना ट्रैवल कर रहे हो, 525 किलोमीटर। ये ऑलरेडी सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। और ये सारा डिस्टेंस मिला के कितना है, 525 किलोमीटर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं d प्लस 2.5d प्लस 140 किसके इक्वल है, 525 के। आई कैन अंडरस्टैंड यार, आप लोग बहुत देर से बैठे हो और जो है बस थोड़ी सी देर और, बस
जस्ट अ लिटिल बिट मोर टाइम, थोड़ा सा और टाइम दे दो। डेफिनेटली मैं फटाफट से खत्म करना चाहता हूं, मैं भी नहीं आप लोगों के लिए एक्सटेंड करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा और टाइम लूंगा। अब बस आप देखो कितना इजी है, एक बार आपको लॉजिक समझ आ गया ना, थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर यू। 5 7 35, 5 7 7 11, डी की वैल्यू आ गई 110। इसका मतलब जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो डाउन हिल दैट इज 110, और अपहिल वाला 2.5 इंटू 110 दैट बिकम्स हाउ मच, 2.5 ना, इज इट 2.5 2.75, सॉरी 2.5 ही है ना, ओके। तो 2.5 इंटू 110 कर लो, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 275। ओके परफेक्ट है, यहां तक कोई समस्या? हाँ एग्जैक्टली ये यहां तक क्लियर है। 110 275 140, टोटल डिस्टेंस इज 525। क्लियर? मैं एक बार रब कर रहा हूं इसको एंड आई एम राइटिंग इट डाउन। 110 राइट, 275 and 140. This was D, this was 2.5 D and total distance was 525। एक काम हमारा खत्म हो चुका है, अब हमें बात करनी है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल की। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल की बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल गोइंग अपहिल ही नोटिस दैट द पेट्रोल कंजम्पशन इंक्रीज बाय 25%। कोई भी चीज अगर 25% बढ़ रही है मतलब 1/4 बढ़ रही है। एंड नॉर्मल कंजम्पशन ऑफ द पेट्रोल गोइंग डाउनहिल, पेट्रोल कंजम्पशन डिक्रीज बाय 50%, मतलब 1/2 कम हो रही है डाउनहिल में। 4 और 2 का एलसीएम होता है 4। तो लेट अस अज्यूम कि जो नॉर्मल पेट्रोल कंजम्पशन है पर लीटर, पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर मान लेते हैं 4x लीटर से, ठीक है। पर लीटर जो पेट्रोल कंजम्पशन हो रही है दैट इज 4x हो रही है, ठीक है। तो अपहिल में कितना कंजम्पशन होगा, अपहिल में कितना होगा, इससे 1/4 ज्यादा। तो कोई भी चीज अगर 1/4 ज्यादा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + 1/4, यानी 5/4 टाइम्स हो जाएगा इसका, कहना इसे 5x हो जाएगा, राइट। और डाउनहिल में क्या होगा, जल्दी से बताओ, डाउनहिल में क्या होगा, 1/2 कम हो जाएगा, यानी 1 - 1/2 टाइम्स हो जाएगा 4x का, यानी 2x हो जाएगा। तो क्या मैं ये पुट कर सकता हूं वहां पे कि मैंने नॉर्मल पेट्रोल कंजम्पशन पर लीटर मान लिया है 4x है, सॉरी normal consumption I have assumed it to be 4x, which is I am writing here. Downhill में it is 2x and uphill में it is 5x liters. Uphill में ज्यादा तेल लगेगा, downhill में कम लगेगा, normal में normal लगेगा. So this is the data which is with us right now. अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जब इतना सब कुछ हमें पता लग चुका है तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है पेट्रोल कंजम्पशन ओके द डिस्टेंस बिटवीन चंडीगढ़ कसौल इज गिवन, ओके परफॉर्मेंस ओके। नाउ द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन एंड लास्ट थिंग, उसके बाद क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, चंडीगढ़ से जब हम कसौल जा रहे थे या कहीं भी हम जाते हैं तो डाउनहिल में नॉर्मल में जो आपका पेट्रोल कंजम्पशन है दैट इज 4x, ठीक है। डाउनहिल में जो है दैट इज 2x और अपहिल में जो कंजम्पशन है दैट इज 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल ये रहा, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम कसौल टू चंडीगढ़ he saves 15 liter of the petrol then going from Chandigarh to Kasol, ठीक है। इसका मतलब अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब मैं चंडीगढ़ से कसौल जा रहा हूं तो टोटल कितना पेट्रोल मेरा लगना चाहिए, टोटल कितना पेट्रोल मेरा लगना चाहिए। यहां पर कर लेते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि सारा डेटा आपको यहां पर गिवन है। अगर मैं चंडीगढ़ से कसौल जा रहा हूं तो मेरा टोटल पेट्रोल कंजम्पशन कितना होगा, तो टोटल जो मेरा पेट्रोल का कंजम्पशन होगा जो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू कसौल, 140 किलोमीटर में नॉर्मली ट्रैवल कर रहा हूं और 4x लीटर पर लीटर कंजम्पशन हो रहा है, तो 140 इंटू 4x हो गया, प्लस डाउनहिल में आई एम ट्रैवलिंग 110 और 2x का जाते वक्त नहीं आते वक्त की बात कर रहा हूं अभी तो मैं, मतलब जब मैं घर से चंडीगढ़ से कसौल जा रहा हूं, ठीक है, प्लस 275 में अपहिल ट्रैवल कर रहा हूं इंटू 5x। कैन आई से दिस, ऐसा बोल सकते हैं ना सर, वाई वी आर अज्यूमिंग 4x, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बेटा। अगर मैं इसको x मान लेता ना, एक बार चलो वापस मैं आपको समझा देता हूं क्यों मैं 4x क्यों मान रहा हूं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में जो आया है, क्योंकि अगर आप इसे x मान लेते ना, मान लो नॉर्मल कंजम्पशन को मैं x मान लेता तो अपहिल में क्या होती x + x/4, तो आपका देखो यहां पर ना पॉइंट्स आ जाते, 5/4x फ्रैक्शन आ जाती। डाउनहिल में क्या होती x - x/2 यानी x/2 आ जाती।
तो फिर कैलकुलेशन आपकी डिफिकल्ट हो जाती। अभी मैंने इसको 4x मानने की वजह से ये 5x हो गया और ये आपका 2x हो गया, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई बस, और कोई मेरा इसके पीछे मोटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर है बेटा? दैट इज द रीजन आई हैव अज्यूम्ड इट टू बी 4, जिससे 4 से 4 कट जाए, 2 से भी 4 कट जाए, 4 से भी मतलब 2 से भी 4 कट जाएगा उधर, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए। दैट इज अवर प्राइम टारगेट। तो एक बार जरा इसे ऐड कर लेते हैं। 140 इंटू 4x इज गोइंग टू बी हाउ मच? 560x प्लस 220x प्लस, बेटा बता देना एक बार देवरती, आपको समझ में आया है ना? ये 275 इंटू 5 करना है। 200 इंटू 5 इज 1000, 75 इंटू 5 इज 375, 1375x. If you add all of them, तो 1300 plus 700, 2155. If I am not wrong, please confirm. 2155x आएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? ये टोटल पेट्रोल कंजम्पशन कहां से कहां तक है? चंडीगढ़ से कसौल, राइट? ठीक है भाई। अच्छा, टोटल पेट्रोल कंजम्पशन कसौल से चंडीगढ़ कितनी होगी? टोटल पेट्रोल कंजम्पशन चंडीगढ़ से कसौल से चंडीगढ़ कितनी होगी? प्लेन्स पे तो सेम ही होगा, 140 किलोमीटर ही चल रहा हूं और पेट्रोल का कंजम्पशन है 4x। लेकिन अब जो ये हमारा 110 यहां पर था डाउनहिल, आते वक्त ये क्या बन जाएगा? अपहिल डिस्टेंस। तो अपहिल डिस्टेंस जब बन जाएगा तो अपहिल वाला पेट्रोल कंजम्पशन लेना पड़ेगा, यानी 5x लेना पड़ेगा यहां पे। आर यू गेटिंग इट? प्लस 270, यही ट्रिक है, बस क्वेश्चन में यही है। ठीक है, बाकी सब कुछ तो इजी था, यही है, यही समझना है। और अपहिल का जो 275 था दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाउनहिल, क्योंकि जाते वक्त चढ़ा था आते वक्त उतरूंगा। तो 275 डाउनहिल जब हो जाएगा तो डाउनहिल में पेट्रोल कंजम्पशन 5x नहीं है, 2x है। दैट इज द ओनली चेंज हियर। तो 140 इंटू 4x रिमेन्स द सेम, विच इज 560x, प्लस 110 इंटू दिस बिकम 550x, प्लस 275 इंटू 250 इंटू 2 500, 550x। ठीक है, तो एक बार ऐड कर दो सबको, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 500, 500, 1500, 1600, आई थिंक 1660, प्लीज कंफर्म। 1660x ये पेट्रोल कंजम्पशन हुई आते वक्त। विजुअलाइज करना होगा कर राइट को, एग्जैक्टली बेटा। ठीक है, 1660x, गौरी 1660x, x भी ले रखा है हमने, है ना? हमें पता नहीं है, तो 1660x। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कह रहा है 15 लीटर है। ठीक है, वो कह रहा है 15 लीटर है। देखो ये रहा, 15 लीटर पेट्रोल बचा रहा है वो आते में। ठीक है, आते वक्त में वो 15 लीटर पेट्रोल बचा रहा है, यानी जो जाने का पेट्रोल और आने का पेट्रोल का जो डिफरेंस है, दैट मींस 2155x में से अगर आप 1660x माइनस करोगे तो ये 15 लीटर आएगा जो पेट्रोल कंजम्पशन बच रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 495x इज इक्वल टू 15, सो x टर्न्स आउट टू बी 15 अपॉन 495, दिस इज 1/33। तो x की वैल्यू आ गई आपकी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। बिल्कुल क्लियर है जी, परफेक्ट है। तो इसका मतलब ये आपका हो गया 2/33, ये आपका हो गया 5/33 और ये आपका हो गया 4/33। और टोटल पेट्रोल कंजम्पशन चंडीगढ़ टू कसौल की अगर मुझे निकालनी है तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इससे, तो 110 इंटू 2/33, ठीक है, 275 इंटू 5/33 और ये हो जाएगा 140 इंटू 4/33। और कसौल टू चंडीगढ़ निकालूंगा तो उल्टा हो, ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, ये सेम ही रहेगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये टेबल आपको मिलेगी हर बार। ये कसौल टू चंडीगढ़ का है, ठीक है। चंडीगढ़ टू कसौल अगर देखना होगा तो क्या होगा, ये वाले दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 110 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5x से, वो ध्यान रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। और 275 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, और ये तो सेम ही रहेगा जो यहाँ पे आया। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। क्वेश्चन समझ में आया, डेटा समझ में आया एवरीवन? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा लेंथी है सर। मैथ्स के परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब पढ़ा के आपकी वीडियो से यूट्यूब दोनों से पर नहीं बेटा। प्रैक्टिस ट्राई, प्रैक्टिस इज द की। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन कितने सेट करें, अभी कम से कम 15, 20, 50 सेट करने पड़ेंगे, तब अपने आप बनना शुरू होगा। रिलेशन नहीं बना पाए बस मॉक में, हाँ कोई बात नहीं, अभी समझ आ गया सबको, एब्सोल्यूट क्लैरिटी है। अब देखो फटाफट, फाइंड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स ऑन प्लेन रोड्स while going from चंडीगढ़ टू कसौल। चंडीगढ़ टू कसौल का डेटा ऑलरेडी आपके सामने है। तो चंडीगढ़ टू कसौल अगर प्लेन रोड्स पे जा रहे हो तो टोटल खर्चा, टोटल कितना आ रहा है, 16.96 लीटर। वेरी गुड जी,
परफेक्ट है, समझ में आना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 वाज इजी। एक बार अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, ये टेबल सी बना लिया थोड़ी सी, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अच्छा, फाइंड द माइलेज ऑफ मिस्टर शाह's कार व्हाइल गोइंग डाउनहिल फ्रॉम चंडीगढ़ टू कसौल। ठीक है, तो चंडीगढ़ टू कसौल का ही डेटा है आपके सामने। तो माइलेज ऑफ द कार व्हाइल ट्रेवलिंग डाउनहिल, तो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2/33 है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल पर लीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल जो कंजम्पशन हो रहा है पेट्रोल का 1 लीटर में वो है। और माइलेज क्या हो जाएगा, इसका उल्टा है ना, कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 33/2, 16.5 हो जाएगा, दैट इज 16.5। 1 लीटर में कितना चल रही है। ठीक है, माइलेज का मतलब क्या होता है, गाड़ी 1 लीटर में कितना चलेगी। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना चलेगी, इसका उल्टा, गाड़ी 1 लीटर में कितना चलेगी, गाड़ी 1 किलोमीटर कितने पेट्रोल में चलेगी। ये हमको दिया हुआ है कि गाड़ी 1 किलोमीटर कितने पेट्रोल में चलेगी, कितने पेट्रोल में चलेगी, लेकिन हमसे पूछा है कि 1 लीटर में कितना चलेगी, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो 33/2 का उल्टा है 16.5, दैट इज द माइलेज। आई होप दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी। एक बार टेबल बन गई है, दोनों क्वेश्चन आसान थे, लेकिन थर्ड क्वेश्चन इसके बाद भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हाँ या ना, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, दोबारा से सेम प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, देखो एक बार जरा सब लोग कर लोगे। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स कंज्यूम फॉर द एंटायर जर्नी फ्रॉम चंडीगढ़ टू कसौल एंड टू बैक। मैं लिख के दे दे रहा हूं, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लेना। चंडीगढ़ टू कसौल में टोटल कंजम्पशन ऑलरेडी आपके सामने है, 6.66, 41.66, 16.96, तो 6.66 लीटर प्लस 41.66 लीटर प्लस 16.96 लीटर, ये पूरा चंडीगढ़ टू कसौल का कंजम्पशन है। कसौल टू चंडीगढ़ में क्या होगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। आप देखो नॉर्मल तो सेम ही रहेगा, नॉर्मल में कोई परेशानी नहीं है, 16.96 रहेगा अभी भी, लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, डाउनहिल विल गेट कन्वर्टेड इनटू अपहिल, अपहिल विल गेट कन्वर्टेड, बस ये दोनों नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे। यहां पर ये 275 आ जाएगा, राइट, और यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये 110 हो जाएगा। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो ये हो जाएगा प्लस 110 इंटू 5/33, और ये सारा जब आप ऐड कर दोगे यू विल गेट द टोटल कंजम्पशन, राइट। क्लियर हो रहा है, लेंथी है, मुश्किल नहीं है, यही मैंने आपको शुरुआत से बोल रहा हूं, टोटल ऐड करोगे तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सारा ऐड करना है, लेंथी है, आई एम सेइंग इट इज हेल्थी, अपहिल डाउन स्टिल इंटरचेंजिंग वैल्यूज, एग्जैक्टली। नाउ यू गॉट द लॉजिक ना, कि लॉजिकल क्वेश्चन था, लेंथी था, wasn't द डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये थर्ड वाले में और थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा इस वजह से और लेंथी हो जाता है कि भाई पूरा निकालना पड़ेगा। फोर्थ पार्ट देखो इसका, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, पूरी मैराथन आप करके आए हो, पहले तो अपने लिए तालियां बजा लो, शाबाश। ठीक है, पिछले 5-6 घंटे से आप पढ़ाई कर रहे हो, दैट्स रियली गुड, एंड आई होप कि यार आप लोगों का डेफिनेटली भगवान सिलेक्शन करवाए, जो आप चाहते हो वहां पहुंचो, है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एफर्ट जरूरी होते हैं जिंदगी में, वो आप लोग कर रहे हो, 5-6 घंटे से बैठे हो, दैट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, जो लोग लगातार बैठे हैं, थोड़ा बहुत ब्रेक भी लिया ही होगा, इट्स ओके, बट आप हो लास्ट तक ना, लास्ट तक बने रहना इंपॉर्टेंट है, यही आपको बने रहना है एग्जाम के दिन तक। ठीक है, एग्जाम का जो दिन होगा ना, वहां तक बस बने रहोगे इसी कंसिस्टेंसी के साथ, सिलेक्शन हो ना हो, क्या ना हो, बस खुद के साथ ईमानदार रहो। ठीक है, चलिए देखो, had the road been plain while going and returning, then what was net change in the consumption of the petrol in liters। तो भाई अभी अभी हमने टोटल कंजम्पशन तो निकाल ही लिया पिछले क्वेश्चन में ही, पिछले क्वेश्चन में टोटल कंजम्पशन निकाल चुके हैं 115.6। ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, तो इसमें तो दोबारा कैलकुलेशन करनी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। 115.6 तो नॉर्मली अगर हम सॉल्व करें पूरे को तो 115.6 नेट कंजम्पशन आ रही है पेट्रोल की। अब ये कह रहा है कि अगर मान लो सारा रास्ता प्लेन ही होता, ठीक है, सारा रास्ता मतलब 525 का 525 जाना और आना दोनों प्लेन होता, ठीक है, तो यानी कि मैं 525 इंटू 2 टोटल इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता और मेरा टोटल पेट्रोल का कंजम्पशन कितना होता, 4x होता, यानी इंटू 4/33 में कर लेता। आर यू गेटिंग इट? और इसको सॉल्व करके एक बार देख लेना कितना आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस बता देना। दैट इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्या बोल रहा हूं मैं, 115.6 पहले टोटल था और अब टोटल कितना आएगा, 525 इंटू 4 2 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 33। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। क्रिस्टल क्लियर टू ऑल? एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, विच इज योर 11.66। तो ऑलरेडी जब हम थर्ड क्वेश्चन में काम कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन में ये 115.6 निकाल चुके हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सारा ही रास्ता अगर प्लेन हो जाता,
मतलब चंडीगढ़ से कसौल भी प्लेन और कसौल से चंडीगढ़ भी प्लेन, तो टोटल रास्ता में कितना ट्रेवल करता, 525 जाता, 525 वापस आता, तो इंटू 2 कर लेते हैं। और हर बार मेरा जो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल होता वो 4x होता, ठीक है, तो 4/33 होता। तो ये मेरा ओवरऑल कंजम्पशन होता। पुराने वाले में से इसको माइनस करो, दोनों का डिफरेंस बता दो। बिल्कुल सत्य वचन है जी। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। डिफिकल्ट तो नहीं था, लेंथी था, आई विल डेफिनेटली से। नाउ व्हाट डज द क्वांट सेक्शन डिमांड फ्रॉम यू? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत डिमांड करता है ये कि भैया जी डेली डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी एक बच्चा ने आप पे एक क्वेश्चन पूछा था कि यार मैंने सर वीडियो भी देख ली, मैं तो इतना बढ़िया स्टूडेंट हूं, मैंने सब कर लिया, ठीक है, और आप लोग फिर भी मेरे से जो है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मॉक में। अभी मेरे आज ही की बात है, एक बच्ची थी, उससे मेरी फोन पे बात हो रही थी, शी वाज आल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम। मैंने कहा बेटा कितने मॉक दे दिए? तो उन्होंने कहा 3। मैंने कहा कितने हो चुके हैं, कौन सा चल रहा है, कि 12th? तो मैंने कहा 3 मॉक से थोड़ी ना पता लगेगा, थोड़ी ना आप कह सकते हो कि मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। थोड़ा सैंपल साइज बढ़ाओ, ठीक है, आप लोग मॉक्स दो। आपने एक मॉक दिया, ठीक है, उसके बाद में उसको एनालाइज करो, उसमें देखो यार क्वांट में या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में मैंने जो पढ़ा था, मैंने पढ़े थे बेसिक्स। क्वांट में सबके हम बेसिक पढ़ते हैं, रेशियो के, एवरेज के, परसेंटेज के। क्वेश्चन यहां पे आता है, डेटा वहां पे गिवन होता है, उस बेसिक का यूज होता है सॉल्विंग में, लेकिन डेटा तो आप ही को वहां से निकाल करके सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे अभी हम कर रहे थे सेम तरीके से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम नहीं तो मिनिमम जब 50 सेट सॉल्व कर लोगे अच्छे लेवल के, जो क्लैट लेवल के हैं अप्रोक्सीमेटली, तब यू विल बी इन अ पोजीशन कि जब आप नया सेट आएगा तो कर पाओगे। अदरवाइज तब तक क्या होगा, शुरू के 10, 12, 15 मॉक में कि आप सॉल्यूशन देख करके समझ रहे होंगे, अच्छा इस बार ये गलती करी, अगली बार सेम गलती नहीं करनी है। कमिटिंग अ मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, रिपीटिंग अ मिस्टेक इज अ क्राइम। और वो 50 सेट कहां से मिलेंगे? लास्ट 4 इयर्स के पेपर ले लो, ठीक है, हर साल 3 सेट आए हैं, तो 4 3 15 सेट्स तो आपको यही मिल गए, अच्छे जेन्युइन सेट्स, ठीक है। सैंपल पेपर्स ले लो, एटलीस्ट आपको जो है 10 सेट वहां से मिल जाएंगे, 25 सेट हो गए जो कंसोर्शियम आपको दे रहा है। उसके अलावा यू कैन टेक अवर टेस्ट सीरीज, है ना, हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर में यू विल गेट एटलीस्ट 20-25 मॉक्स। हर मॉक में आपको 2 से 3 सेट मिल ही रहे, ऑन एन एवरेज 50-60 वहां से मिल गए। अगर आप 70-80 सेट्स जब कर लोगे एक्चुअली में जो एग्जाम में आ रही है जिस टाइप की चीजें, यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप कुछ भी आ जाए मैं कर लूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ड्रिवन चीजें हैं, बस बेसिक सीखना है क्वांट का, देन अप्लाई करना है पैसेज में और हर जगह जैसा हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। की टेक अवेज यही है कि यार थोड़ा सा अपने आप को लास्ट तक बने रहना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। की टेक अवेज फॉर द ओवरऑल थिंग, जैसे अभी आज आप लास्ट तक बने रहे हो, ऐसे ही आपको प्रिपरेशन में लास्ट तक बने रहना है, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्टेड। प्रिपरेशन कभी किसी की खत्म नहीं होती, सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, टॉप कॉलेज में पहुंच जाता है, प्रिपरेशन खत्म नहीं होती, ठीक है। इट इज अ एंडलेस प्रोसेस। तो ये मत सोचो कि यार अभी तो ये रह गया है, वो रह गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रेदर देन सॉल्विंग 5 बुक्स, सॉल्व 1 बुक 5 टाइम्स। अगेन एंड अगेन जब हम रिपीट करेंगे, मॉक्स को एनालिसिस करेंगे बहुत ज्यादा, तब जाकर के हमको चीजें आएंगी। हम सोचे कि यार इसका सॉल्यूशन देख लिया, अब अगले मॉक में मुझसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। उसे दोबारा सॉल्व करो, सोचो उसके लिए क्या एक और टेक्निक हो सकती है, कुछ और हो सकता है क्या, क्या नहीं हो सकता क्या, वो सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ऑल इंडिया मॉक 2 फिर से हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं, आप लोग प्लीज इस मॉक के लिए रजिस्टर कर लो 27 सितंबर से 1 अक्टूबर, क्योंकि अभी काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया मॉक 1 नहीं दिया, लेकिन वो एनालिसिस में बैठे, उनको समझ में आ रहा है कि यार एनालिसिस अच्छा हो रहा है यहाँ पे, सर बता रहे हैं, पर अब जब मॉक देके आओगे खुद वो प्रेशर फील करोगे, खुद वो क्वेश्चन का गुस्सा फील करोगे, फिर आप देखोगे कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो 22 से 1 के बीच में प्लीज गिव दिस मॉक, सो दैट अगले एनालिसिस में आप और अच्छे से आए और अच्छे से हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर पाए। सब्सक्राइब कर लो प्लीज, बेल आइकन दबा दो, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन और कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप लोग लेट ना हो, एटलीस्ट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। अच्छी लगे तो अटेंड करो, वरना मत करो, नोटिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। फॉलो अस ऑन इंस्टा ऑल्सो, लाइक आवर फेसबुक पेज, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड डू डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। वहां पर 3 डेज फ्री ट्रायल भी है, उसको भी आप लोग जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, मजा आया होगा, एंड थक भी गए हो तो पैट ऑन योर बैट कि लास्ट तक हो। Congratulations, thank you so much, all the very best, and see you in the next session. Thank you so much everyone.